बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। एक निखरे हुए दिन, सर्दियों की आमद की सुबह, रावलपिंडी इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम और उसमें बढ़कर सिंध वर्सेस सेंट्रल पंजाब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी छठा मरहला जिसमें ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबले। आज दूसरा दिन है इस मैच का जहां पर सिंध और सेंट्रल पंजाब आमने सामने हैं। सेंट्रल पंजाब अब तक ये खुलासा है 48 रन एक विकेट के एवज, जो कि अब्दुल्ला शफीक ऑल आउट होने वाले प्लेयर थे। 17 ओवर फेंके गए इस इनिंग में और मीर हमजा विकेट टेकिंग बॉलर 22 रन के एवज, कैप्टन। उसके अलावा कोई भी बॉलर अब तक विकेट नहीं ले पाया। मैच बड़े इंटरेस्टिंग मराहिल में दाखिल हो चुका है। सिंध की टीम ने 188 रन बनाए, जिसमें साद खान और साइम अयूब के 29 और 26 पे तरतीब। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर आमिर यामीन, और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया आमिर यामीन ने। 5 विकेट हासिल किए और जवाब में अब 48 के नुकसान पे है। आबिद अली और अजहर अली दोनों टेस्ट क्रिकेटर हैं, अच्छे रिकॉर्ड्स के हामिल। 140 रन की लीड है। और आमिर यामीन ने कल जब बॉलिंग करवाई, उनकी बॉलिंग में इतनी ज़बरदस्त काट और इतनी ज़बरदस्त स्विंग था कि बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कंडीशंस का प्रॉपर यूज़ किया। देखिए, ये पहला वो मरहला था अर्लियर ऑन जब उन्होंने प्रेशर डाला और फवाद आलम और उसके बाद सरफराज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई। और जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि अब बैटर सेट हो रहे हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया, विप अप किया, प्रेशर डाला और विकेट्स हासिल करते चले गए। और ये उनकी बॉलिंग थी जिसकी बदौलत उन्होंने सिंध जैसी एक तगड़ी साइड को उतार दिया। और जो इस वक्त 140 रन सेंट्रल पंजाब ट्रेल कर रहा है। और किस तरह से आज का जो ये दिन है चलेगा और किस तरीके से कितना वक्त ये लेंगे 140 को ट्रेल ख़त्म करते हुए। जो सिंध की टीम है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाई कंडीशंस को। गुलाम अली उनके कोच हैं, उनकी तरफ चलते हैं और सुनते हैं उन्होंने शाह फैसल के साथ क्या बात की। गुलाम अली, आप इस सीजन सिंध की फर्स्ट 11 की कोचिंग कर रहे हैं। T20 से आपका बहुत अच्छा आगाज़ हुआ और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। कैसे आप इस रोल को एंजॉय कर रहे हैं? यकीनन एक ऐसा रोल है जहाँ पे ना सिर्फ डेवलपमेंट का काम है, बल्कि आपकी टीम को जो एक अच्छी पोजीशन पे भी लेके जाना है। और लास्ट 2 ईयर से मैं सिंध सेकंड 11 के लिए एज ए हेड कोच काम कर रहा था और इस साल मुझे मौका मिला यहाँ पे फर्स्ट 11 के हेड कोच कैसे से काम करने का। बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और एक अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन है टीम का, जहाँ पे सीनियर और जूनियर का मिक्सचर है। और ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए लर्निंग है बल्कि मेरे लिए भी काफ़ी लर्निंग है और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस पोस्ट को। और आप खुद भी एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, एक टॉप क्लास प्लेयर से एक टॉप क्लास कोच, जो ट्रांजिशन होती है उसमें आपको कितने चैलेंजेस आए, कुछ उस बारे में बताइए। देखिए, आप जब प्लेयर होते हैं तो आप अपने बारे में सिर्फ फैसला करना होता है कि आपने कैसे अपने जो है स्किल्स को यूटिलाइज़ करना है, अपनी परफॉर्मेंस कैसे करनी है। लेकिन बीइंग अ कोच आपको तमाम अपने ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि सपोर्टिंग स्टाफ के साथ भी आपने मैनेज करना होता है। तो एक बड़ी अच्छी लर्निंग है। और चूँकि मैं पास में काफ़ी ये काम कर चुका हूँ तो मुझे ज़्यादा इतनी मुश्किल नहीं आ रही। प्लेयर हैंडलिंग है, जिसे मैन मैनेजमेंट है, इसी तरह और बहुत सारे इशूज़ आते हैं जिनको आपने मैनेज करना होता है अपार्ट फ्रॉम गेम। ड्रेसिंग रूम इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट का। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कोच को लेके चलनी पड़ती हैं। एक टीम का जो जिसे कहते हैं कि जेल होना, टीम का एक डायरेक्शन में जाना, तमाम बच्चों का पॉजिटिव होना, टीम के बारे में पहले सोचना और अपने बारे में बाद में सोचना। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एक अच्छी टीम को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो मैं समझता हूँ ये अब तक जो हमारा सफ़र रहा है सो फार बहुत गुड है, बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। और कल के मैच के और आगे जो इस मैच की सिचुएशन देख रहे हैं, पहले इनिंग में आपके इतने ज़्यादा रन हुए नहीं, एक इंटरेस्टिंग आपने चॉइस ली, 2 स्पिनर्स के साथ इस मैच में गए। इस मैच के बारे में कैसे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं, वो बताइए। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हमारे आसिफ महमूद जो कि अच्छी बॉलिंग फॉर्म में थे, उनकी सिस्टर का इंतकाल हुआ है जिसकी वजह से वो चले गए। मीर हमजा पिछले 2 मैचेस में थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने एक बॉलर बढ़ाया कि अगर बॉलिंग पे लोड पड़ता है तो उसको हम कवर अप कर सकें। तो हमें एक बैट्समैन में कम करना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह जो हमने 180 रन बनाया इसको हम अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा डिफेंडेबल फर्स्ट इनिंग का टोटल है। और बॉलर जिस तरह गेंद कर रहे हैं, एक भी स्पेल किसी का अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह हम सेंट्रल पंजाब को काबू कर लेंगे। और आपकी टीम में जो यंग चार्जेस हैं, काफ़ी उनके बारे में बात हो रही है, कुछ ऐसे प्लेयर जो आपको नज़र आए जो
आपकी नज़र में आगे चल के पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं? यकीनन जैसे आपने खुद साइम अयूब का नाम लिया, जो कि अभी नो डाउट कि एक लर्निंग फेस में पहला साल है उनका फर्स्ट क्लास का। इसके अलावा उमैर बिन यूसुफ जो कि बहुत तेज़ी से अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर मोहम्मद आसिफ हैं, जो कि आप देख रहे हैं, मोहम्मद उमर हैं फास्ट बॉलर। इसी तरह अबरार जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन बॉलिंग मैं समझता हूँ कि बहुत ही हाई स्किल्ड बॉलर है अबरार, और बहुत ही अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारे सेकंड लेवल में काफ़ी बच्चे हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पूल बन गया है सिंध क्रिकेट में, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं। हमारे लिए मुश्किल हो गई चॉइसेस करना, क्योंकि जब आपके पूल बढ़ जाता है तो आपके लिए मुश्किल आती है। लेकिन ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और सिंध क्रिकेट के लिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया गुलाम अली। गो वेल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गुलाम अली बात कर रहे थे कि उनकी टीम डिफेंड करने की अहलियत रखती है और किस तरह से वो डिफेंड करेंगे एक अच्छे स्पेल के साथ। शाह फैसल हमारे साथ मौजूद है पिच रिपोर्ट के साथ। 11 wickets fell here on day one. The conditions did suit the bowlers, but you have to give credit to the bowlers because they utilized the conditions well, and there is evidence for that. If I just come here to the good length area, you may see there's quite a lot of marks that were created by the balls that were pitched in that area, and there's quite a lot of it. It meant that the bowlers were asking questions continuously, and the batters had no answers because there was help from the conditions. Looking at day two, it's pretty dry still. There is a little bit of grass, but again, we've seen traditionally it gets better on day two for batting. New ball is generally the key on day two, but I think we'll see an even contest between bat and ball throughout the day. वेल फैसल बात कर रहे थे कि दूसरे दिन का खेल बेहतर हो सकता है, लेकिन इस वक्त अंपायर सेंटर में इमरान जावेद, अच्छे सीनियर अंपायर, इनके डिसीजंस भी अप टू मार्क हैं इन पोजीशन। और इस वक्त टीम्स भी तैयार हैं। यकीनी तौर पर सिंध की टीम, जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त सरफराज बातचीत कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ कि हम कोच की तरफ से भी जो एडवाइसेस हैं कि हम कम बैक कर सकते हैं अच्छे स्पेल्स के साथ, तो किस तरीके से जो बॉलिंग है वो किस अंदाज से करनी होगी, क्योंकि अर्लियर ऑन का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल भी हमने देखा कि अर्लियर ऑन बॉल काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहा था बॉलर को। आसिफ याकूब एक और अच्छे सीनियर अंपायर, इंटरनेशनल डोमेस्टिक तमाम तर तजर्बा इनके पास है। और उसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि ये मैच दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है, और जैसे कि कुछ देर पहले हमने सरफेस देखा कि किस अंदाज से जो है वो आज परफॉर्म करेगा। जो सिंध की टीम है इनकी भी कोशिश होगी कि हम अर्लियर ऑन जो बॉल है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें, जैसा कि कल भी हमने देखा। और यकीनी तौर पर तमाम तर तजर्बा इस वक्त आप देख सकते हैं मॉनिटर पे। मेरे साथ कॉम बॉक्स में इस वक्त के आसिफ, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर ख़वातीन व हज़रात। ये दोनों बैटर्स आबिद अली और अज़हर अली दोनों ही टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, और जिस तरह आप बात कर रहे थे, आज एक ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और रावलपिंडी में जब भी बात की जाए क्रिकेट की और ख़ास तौर पर लंबे तर्ज की क्रिकेट की, तो यहाँ पर हमेशा से इसको एंजॉय किया है। अच्छी फॉर्म में अज़हर अली, डबल सेंचुरी उनके क्रेडिट में है और अब तक अच्छी बारी की उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। कल भी हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड के टूर से पहले उनका इस तरह से फॉर्म में आना बेहतर है। 14 रन पे खेल रहे हैं क्योंकि एक चौका है। 108 रन की इनिंग खेली उन्होंने सदर्न पंजाब के खिलाफ अपने इससे पहले वाले मैच में। उनके साथ हैं आबिद अली, टेस्ट क्रिकेटर, वो भी अपनी फॉर्म के मुतलाशी हैं। अच्छे टॉप ऑर्डर बैट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 29 रन पे खेल रहे हैं, 3 चौके इन्होंने भी लगा रखे। तो वक्त अपना स्पेंड किया, अब सिर्फ कैपिटलाइज करना है। सदर्न पंजाब के खिलाफ पहली इनिंग में 8, दूसरी में 2 रन किए, तो थोड़े से लैक कर रहे हैं परफॉर्मेंस में। लेकिन मोहम्मद उमर की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है। 14 रन अब तक दिए गो, लेकिन जो इनकी सबसे अच्छी बात है चैनल बॉलिंग, लाइन लेंथ, और हर बॉल में इनकी जान होती है और बैटर के लिए उसको जवाब देना लाजमी होता है, जिसकी वजह से इन्होंने अब तक ओवरऑल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। 2 स्लिप है, एक गली है,
पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट और डी फाइन लेग। तो सब कुछ ऑल सेट, पहला बॉल होने को है। इमरान जावेद ने सिग्नल दिया प्ले, और आज के दिन का पहला बॉल। अजहर अली सामना करेंगे। एक्सपीरियंस और यंग साइम अयूब को भी आप देख सकते हैं इसी एक फ्रेम में। गुड स्टार्ट। वेल आसिफ, अगर हम देखें अजहर अली और आबिद अली को, तो उनकी जो शुरुआत है वो हमने पहले भी देखा कि कल जो सरफेस था वो थोड़ा सा हेल्पफुल था, और अभी क्या लगता है जो बॉलिंग है पेसर्स के साथ आगाज करें तो जल्द अज जल्द विकेट हासिल करना होंगी। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह गुलाम अली जो कोच हैं, हेड कोच सिंध के, वो ये बात कर रहे थे कि कोई एक अच्छा स्पेल जो है वो टीम को वापस इस मैच में ले आएगा। और दूसरी गेंद पर अपील हुई है, लेकिन ऐसा लगता था कि ये डाउन द लेग साइड है। जहां सरप्राइजिंग फैक्टर मोहम्मद उमर ऑन टारगेट, थोड़ा सा माइट बी हाइट फैक्टर, और लेग साइड पे ये बॉल जा रहा था। अर्लियर ऑन है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट क्विकली उमर को जो अपने मार्क पे आना होगा। इससे पहले जो बलूचिस्तान के खिलाफ यहाँ मैच खेला गया उसमें पहली इनिंग में 2 और दूसरी में 1 विकेट हासिल कर रखी है, और अच्छी फॉर्म में है आसिफ। इस ट्रॉफी के मैच में हर मैच में इन्होंने लगभग विकेट निकाले हैं। बिल्कुल, इनकी सबसे अच्छी चीज़ एजाज ये है कि लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल रखते हैं और कंसिस्टेंट हैं अपनी, और कभी कभी ज़रूर जो है वो विकेट की मुतलाशी रहते हैं। और अच्छी चीज़ एक्साइटिंग है, कभी भी क्रिकेट में को एंजॉय करते हैं जैसे भी सिचुएशन हो। सो एक इस लंबे तर्ज की क्रिकेट में एक क्रिकेटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर के लिए, कि वो इस क्रिकेट को एंजॉय करें। ये जिस तरह से अब देखा आपने, बड़ा अच्छा बाउंस देखने में मिला। अब एक गेंद अंदर आई, पहली गेंद जो है वो राइट ऑन द मनी थी, तो बहुत अच्छा आगाज। जी हाँ, पिच जैसे कि फैसल भी अर्लियर ऑन कह रहे थे कि दूसरे दिन काफ़ी हद तक सहल हो सकती है बैटर्स के लिए, क्योंकि जो सबसे जो नोटिसेबल चीज़ यहाँ पे है, मार्क्स हैं बॉलों के, और ऑलमोस्ट गुड लेंथ एरिया पे है, और बैटर्स के लिए यहाँ से बॉल छोड़ना मुश्किल है, जिससे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होता है कि अच्छे एरियाज में जो है वो बॉलिंग होती रही। और आज जैसा कि दूसरा दिन है, पिच आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है, और जब अजहर अली जैसा बैटर हो क्रीज पे जो ऑलरेडी सेंचुरी और डबल सेंचुरी स्कोर कर चुका हो, तो आपको यकीनी तौर पर ज़्यादा जो बेहतर है अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना होगा। और अबरार अहमद जो कि लीडिंग विकेट टेकर हैं इस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी के, उन पर भी बड़ा इन्हिसार है आज दूसरे दिन के खेल का। सिंध की टीम यकीनी तौर पर इनकी तरफ देख रही होगी कि जल्द अज जल्द बॉल जो है वो थोड़ा सा मज़ीद पुराना, और अर्लियर ऑन भी जो तकरीबन अगर 4-4 ओवर पेसर से करवा कर इनको इंजेक्ट किया जाए तो बेहतर होगा। इसके साथ पहला ओवर आज के दिन का इख्तिताम पजीर हुआ। 48 सेंट्रल पंजाब 1 के नुकसान पे। क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 का सीजन इस वक्त जारी है। बलूचिस्तान वर्सेस केपी, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। 262 पे 5 है बलूचिस्तान, असद शफीक 88, 59 पे है अब्दुल वाहिद बंगलजई। एक एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में एटीएफ सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न आमने सामने। 249 रन बना रखे हैं 2 विकेट पे सदर्न पंजाब ने, जिसमें 2 सेंचुरीज उमर सिद्दीक और उस्मान सलाहुद्दीन ने बना रखी हैं। और सेंट्रल पंजाब भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सिंध को कल उतारा, मीर हमजा की बॉलिंग की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने भी अर्लियर ऑन अच्छा जो है आगाज किया था इस ट्रॉफी के मैचेस में, और इनके पास भी ये एबिलिटी है कि वो बॉल को हिला सकें, और गुड लेंथ एरिया इनका जो है टॉल बॉलर होने के साथ बेहतरीन ऑप्शन होगा। 2 स्लिप एक गली है, बैकफुट पॉइंट, डीप पे फाइन लेग पे फील्डर है ऑन साइड पे।
आसानी के साथ आबिद अली ने भी शुरुआत की। बल इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट बॉल में नज़र नहीं आया आसिफ। मीर हमजा ने फॉर एंड से बॉलिंग कर रहे हैं और राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ सरफराज जो हैं वो जिस तरह से सरफराज ने कल आउट हुए थे, यकीनी तौर पर उनके लिए अफसरदा था। और अज़हर अली और आबिद अगर जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं, ये सिंध के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और ब्रेक थ्रू अर्ली ऑन चाहिए। मीर हमजा अच्छा टेस्टिंग टाइम, और अब तक 13 विकेट ले रखे हैं मीर हमजा ने इस क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी के सीज़न में। इससे पिछला मैच जो कि केपी के खिलाफ था पिंडी में, जिसमें पहली में 2 फिर 1, और इवन अगर हम इससे पिछले मैचेस में भी जाएं जो कि सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब में था, उसमें भी इन्होंने दोनों इनिंग्स में 3-3 2-2 विकेट हासिल कर रखी हैं। और उसके साथ कल की जो एक विकेट अब तक है वो भी मीर हमजा के क्रेडिट में है, अब्दुल्ला शफीक जो कि टॉप रन गेटर है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी और अब्दुल्ला शफीक इसको ड्राइव करने चले गए आउटसाइड एज और स्लिप में एक शानदार कैच लिया साद ने। सो आई थिंक हमजा मीर का ये खासा है कि अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू लेकर देते हैं। फुलर फुलर मिल सकता है, मतलाशी हैं कि बॉल आगे रखकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट हासिल करें, लेकिन दूसरी जानिब भी अजहर अली जैसा मुस्तनद बल्लेबाज बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ उन्होंने अच्छा कनेक्ट किया। जी हाँ बिल्कुल, अजहर अली जो है वो काउंटी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, काउंटी क्रिकेट खेली, फिर अब तक जो डोमेस्टिक सीज़न है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक डबल सेंचुरी स्कोर की है, बहुत अच्छे फॉर्म में है और इनकी ये फॉर्म इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी कारगर साबित होगी। जी हाँ, वॉर्कशायर की नुमाइंदगी की और पिंडी में जो मैच खेला गया उसमें भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और इवन जो आप काउंटी की बात कर रहे हैं वहाँ पर गो के इतने बड़े रन नहीं बना पाए, एक सेंचुरी उनकी है 130 जो कि नॉर्थन्स शायद जो काउंटी है उसके खिलाफ उन्होंने बनाई, लेकिन अच्छी फॉर्म कैरी कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर जैसे हम पहले भी बात कर चुके कि यूके की जो टीम है उसका अराइवल होना, तो उससे पहले इस तरह के रन्स लगाना, 500 ऑलमोस्ट 500 प्लस रन बना चुके। इसके साथ 19 ओवर का इख्तिताम हुआ 49 के नुकसान पर। कंटिन्यूसली वैसे उमर को हमने देखा कि जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन बॉल रखते हैं और हर बॉल में उनके जान होती है, लेकिन अभी जो आगाज़ है उनका तकरीबन फुलर पे वो टेस्ट करें और ये बेहतर है कि अर्लियर ऑन आप बॉल को थोड़ा आगे रख के थोड़ा सा मूवमेंट के मुतलाशी हों, तलाश करें, माट भी कहीं ना कहीं कोई बॉल हिले और पैड या फिर डिफेंस तोड़ता हुआ गुजरे। जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि बहुत ही अच्छी गेंद और उसको बड़े अच्छे तरीके से लेफ्ट किया आबिद अली ने। अब एग्रेशन है इनकी बॉलिंग में, आबिद अली कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे। आई थिंक साइड स्क्रीन के सामने कोई प्रॉब्लम है या कोई यहाँ तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। इजाज आसिफ जो
साइड स्क्रीन है, उस पर शायद कोई गुजर है। और मेरे ख्याल से कुछ देर पहले भी अजहर अली ने कहा था कि जो दरवाज़ा है शीशे का उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुलता बंद होता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से भी बैटर डिस्टर्ब होता है। आबिद, इससे पहले अजहर और अब आबिद अली ने रिक्वेस्ट की। वेल ऑफ कोर्स आई थिंक इनकी वजह से आबिद अली डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जब तक बैटर जो है वो मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हासिल ना कर ले कि मुझे किसी तरफ से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, मेरी कंसंट्रेशन लूज नहीं होगी, बैटर बैटिंग नहीं करता। और ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसमें हमने फवाद आलम को भी देखा था। फवाद आलम भी जो है वो साइड स्क्रीन और फिर अगर इवन सामने बैल्कनी में भी कोई खड़ा है तो वो कंफर्टेबल नहीं होते। और इस वक्त फ़हीम जो है वो भी शायद कोई ना कोई टिप्स ले रहे हैं। और अली यूनस, थैंक यू वेरी मच। आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटे। और अली यूनुस और हमने अक्सर देखा है शाह फैसल यहाँ पर बैठकर गपशप करते हैं, चाय पीते हैं। तो लेकिन अब उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। बहुत क्लोज था आउटसाइड एज के। वेल, जिस तरीके से जो बैटर है, हमने ये बॉल देखा, बड़ी देर के बाद इस तरह का बॉल देखने को मिला उमर से कि जो बिल्कुल बल्ले के करीब था। एजाज, ये बहुत ही अच्छा आउट स्विंग डिलीवरी थी। और इस चीज़ के ऊपर जितना भी एम्फसाइज किया जाए, इस बात का तज़किरा किया जाए कि उमर की जो लाइन और लेंथ है वो आप डिस्टर्ब होते हुए नहीं देखेंगे। लंबा स्पेल करेंगे लेकिन लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल है। एग्जैक्टली और हल्का सा बॉल में मूवमेंट भी देखने को मिला बाहर की तरफ उमर के बॉल में। लेकिन बाज़ औक़ात जो सबसे अच्छी चीज़, जैसे आपने बात की लाइन और लेंथ की, अर्लियर ऑन इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब बॉलर इंजॉय कर रहा होता है अपने तमाम तर तजुर्बात के साथ, ये देखिए सीम जो है बिल्कुल हिट हुआ और अपराइट है, उसके बाद पढ़कर बाहर को निकला। और आबिद अली जैसे बैटर के पास कोई जवाब नहीं था इस तर्ज की बॉल का। इस दफा भी टेस्ट जरूर किया था लेकिन अच्छा कनेक्ट किया आबिद ने। और यही बेहतर होता है किसी भी टॉप ऑर्डर बैटर के लिए कि वो हालात को जल्दी जल्दी जज करे। यहाँ आबिद अली का भी टेस्ट है जब से लेकिन यहाँ पर ये देखिए फवाद आलम जो है, ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान इनको बॉल लगा है, अभी तक फील्ड में भी नहीं आए, फिजियो के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह मैं तज़किरा कर रहा था कि आबिद अली भी अगर टीम में दोबारा पोजीशन बनाना चाहते हैं। और यहां पर ये कैच ड्रॉप कर दिया, अच्छी कोशिश थी लेकिन ये कैच लेना चाहिए था। वेल, काफी देर से इस अटेम्प्ट में थे उमर के बॉल पढ़कर बाहर को निकले और इस दफा आबिद अली ने ड्राइव किया, कंफर्ट जोन में नहीं थे। आगे पड़ा हुआ बॉल जिस्म से दूर हवा में साइम अयूब के पास से बॉल होता हुआ गुजर गया, बाय बाय कहता हुआ। एयरबॉर्न हुए लेकिन लेट रिएक्ट कर गए। और ये तकरीबन दूसरा मौका है इस वक्त साइम की तरफ ये बॉल आया और वो प्रॉपर्ली इसको ग्रैब ना कर पाए। 20 ओवर गए, सेंट्रल पंजाब 53 पे 1। वेल, इस तरह के चांसेस इस तर्ज के लेवल पे 100% लेने चाहिए। और साइम अयूब अच्छे स्लिप के फील्डर है और शायद ये दूसरा मौका है आबिद अली की तरफ से, ये ड्रॉप किया, शायद रिएक्ट करने में देर की उन्होंने, क्योंकि बॉल जिस वक्त उनके करीब आ रहा था तब उनका सर जो है वो बॉल की तरफ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और साइम अयूब जो कि एक बेहतरीन फील्डर भी हैं, इनकी तरफ से मायूसी है क्योंकि
और इस दफ़ा इसको कट किया है अजहर अली ने। यहाँ पर रन्स मिलेंगे, 4 रन्स। तो आज के दिन की पहली बाउंड्री। बहुत दूर, वेस्ट डिलीवरी। और आप अजहर अली जैसे बैटर को जब इस तरह का बॉल देंगे जिसमें विथ ऑफर हो, आस्किंग पनिशमेंट, ये देखिए, और इतना ज़्यादा कुछ बॉल में था भी नहीं। अजहर अली ने खड़े खड़े लेट खेला, इसको कट किया और चौका हासिल करने में कामयाब हुए। क्योंकि हमने देखा कि जो ऑफ स्टंप के पास के बॉल है वो मुश्किल है, लेकिन अगर बाहर इस तरह के बॉल मिले, गिफ्टेड डिलीवरीज किसी भी बैटर को अर्लियर ऑन सेटल होने में, ये तोहफा होगा। साइम अयूब ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में अब तक 3 कैचेस लिए हैं। फील्डर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो कैच ड्रॉप किया है ये बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। साइम अयूब कल बैटिंग में भी थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए, आज ये कैच ड्रॉप किया है, तो सिंध के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और कल ये जो अजहर अली का कैच ड्रॉप किया और आज आबिद अली का, सो दोनों ही बैटर्स को अब चांस मिल चुका है। या दोनों बैटर्स इस वक्त अपनी एक्स्ट्रा लाइफ जी रहे हैं। और पहले भी जिस वक्त हमने बात की कि अजहर अली और आबिद अली जैसे बैटर को अगर आप इस तरह के चांसेस देंगे तो फिर माफ़ी नहीं है, लंबी बारी करते हैं। स्लिप में कैचेस लेना हमेशा ही एक्साइटिंग होता है। और मुझे याद पड़ता है कि आप अगर रिकी पोंटिंग आपको याद हो कि फ्लाइंग कैचेस लेते थे, इंजमाम बड़े ज़बरदस्त कैचेस लेते थे स्लिप में। और डाउन द लेग साइड यहाँ पर रन्स मिलेंगे, एक और बाउंड्री। वह लाइन चूकी, बाई के रन मिले। अजहर अली हल्का सा शायद शफल जरूर किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने बॉल को अर्ली देख लिया था कि अंदर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से उनका फ्रंट फुट आगे आया। फाइन लेग पे 4 रन। वेल, अच्छी बॉलिंग करवाते हुए, इस तरह की ऑफलाइन डिलीवरीज करते हुए आप बैटर को सेटल डाउन होने का मौका देते हैं। इस दफा भी बाहर था, लेकिन हल्का फुल्का मूवमेंट मिला बॉल में। तो इस डॉट बॉल के साथ 21वें ओवर का इख्तिताम हुआ। सेंट्रल पंजाब 61 पे 1। बैटिंग बहुत बड़ी है सेंट्रल पंजाब की, और जब कैचेस ड्रॉप होंगे तो अजहर अली और आबिद अली ये सलाहियत रखते हैं कि लंबे इनिंग्स खेलें। फिर मोहम्मद साद, कासिम अकरम एक एक्साइटिंग यंगस्टर, तैयब ताहिर बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, विकेट कीपर अली शान, और फिर आमिर यामीन, फ़हीम अशरफ तक एक बहुत लंबी लाइनअप है ये सिंध के पास, सेंट्रल पंजाब के पास, आई बेग यू पार्डन। अभी भी कंटिन्यूसली बॉल को आगे रख रहे हैं। उमर अपने हर ओवर में एक या दो बॉलें ऐसी करवाते हैं जो थोड़ी सी आगे हों, टेस्ट करते हैं कि माइट बी। आबिद अली जो है ऑन द बैक फुट अच्छे हैं, देखिए बॉल आगे को गिरा, लेकिन आबिद का जो डिफेंस है वो भी बेहतरीन है, सीधा बाजू। और दूसरी तरफ अजहर अली की अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड कि वो क्रीज में रहे, बॉल आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कता हुआ नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ गया। तो अब नॉर्मली अब देख रहे हैं कि पहला या दूसरा बॉल फुलर होता है, तीसरे चौथे में थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल को खींचते हैं। बहुत अच्छी गेंद इजाज, एक दफ़ा फिर आबिद अली इस बॉल को लेफ्ट करना चाहते थे, लेकिन आखिरी मोमेंट में अपना फैसला तब्दील किया। और ये जो डबल माइंडेड है, प्रेशर कहीं ना कहीं आबिद अली के ऊपर नज़र आ रहा है। ये देखिए आखिरी वक्त में बल्ला ज़रूर हटाने की कोशिश की थी, या इससे पहले भी आबिद अली ने इसी तर्ज के अंदाज से लीव कर किए हैं बॉल्स, लेकिन इस दफ़ा बॉल की रफ्तार तेज़ थी उनकी सोच से, बल्ले पे कनेक्ट हुआ, लेकिन लकी रहे यहाँ पर, क्योंकि बॉल किसी वक्त भी एज होकर स्लिप कॉर्डन की तरफ जा सकता था। उसके लिए साइम एंड कंपनी को तैयार रहना होगा हर वक्त।
बेहतर कनेक्शन। वेल किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है, हमने देखा कि दोनों बैटर्स आहिस्ता आहिस्ता बारी कर रहे हैं और यही वो तजर्बा है कि आपने वक्त गुजारना क्रीज पे। अर्लियर ऑन जो सेशन है 1-2 घंटे का उसको गुजारें, और आज फ्राइडे है, थोड़े एक्सटेंडेड सेशन भी होंगे। फिलहाल 2 स्लिप्स हैं और ये बेहतर मूव होगा क्योंकि बॉल बिल्कुल सीधा रह रहा है। 1-2% ऐसे मौके आए कि जहां पर बॉल थोड़ा सा हिला, लेकिन उमर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कुछ फुलर और कुछ थोड़ा सा बैकअप लेंथ, दोनों चीजें इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं बैटर्स पे। जी हाँ, उमर ने अपनी लाइन और लेंथ से बहुत मुतासर किया है, और मुझे कहीं ना कहीं इनमें जोफ्रा आर्चर की झलक नज़र आती है। वैसे कहाँ किस जगह पे आप इनको उनके साथ मुआवजा करेंगे? रनअप भी लुक्स लाइक, और फिर इनकी जो आप हेयर स्टाइल देखें, और ज़ाहिर है कि और इनके साथ साथ जो इनकी बॉलिंग के बाद एग्रेशन है, लाइन और लेंथ है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि बहुत मुतासर हैं जोफ्रा आर्चर से। ये अच्छा एसेट है सिंध के लिए, और थोड़ा सा फाइन लेग को जो है थोड़ा सा वाइडिश कर रहे हैं। अच्छी टैक्टिक्स होती हैं कि आप बैटर को थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे, शायद लेग स्टंप पे बॉल हो या बैकअप लेंथ, और अगला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। यही करने जा रहे थे, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। इसी एग्रेशन की मैं बात कर रहा था राइट बिफोर दिस डिलीवरी। आप देखिए, बहुत ही शानदार डिलीवरी, पढ़ने के बाद हल्का सा बाहर निकली, आबिद अली बिल्कुल लकीर है, सीम पोजीशन देखिए जबरदस्त, और मेरे ख्याल से अब तक की आज सुबह की सबसे बेहतरीन गेंद, 61 पर 1। इस दफा बॉल को पटका, कोशिश थी उनकी कि थोड़ा सा बैकअप लेंथ एंगल से बाहर निकालें, लेकिन जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आबिद अली और अजहर अली दोनों किसी तरह से भी किसी जल्दी में नहीं। वेल गुलाम मुदस्सिर की बॉल जो है वो भी अर्लियर ऑन अच्छी पेस और स्विंग होती है, उसके साथ साथ माइट भी कहीं ना कहीं जो अबरार का फैक्टर है उसका भी इंतज़ार है यहाँ पर मीर हमजा को, कि जिस तरीके से बॉल इस वक्त पेसर्स की जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान होती जा रही है बैटर्स के लिए। इक्का दुक्का बॉलें ज़रूर निकल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर दोनों बैटर्स वॉचफुल हैं पेसर्स के अगेंस्ट। लाइन और लेंथ की बात की जाए तो उमर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। मीर हमज़ा ने थोड़ा स्ट्रगल किया है, कि मीर हमज़ा पिछले ओवर में हमने देखा था 1-2 गेंदें जो थी वो वेवर्ड थी, डाउन द लेग साइड थी, इसीलिए अब फैसला ये किया कि वो अब राउंड द स्टंप की बजाय ओवर द स्टंप्स आए हैं मीर हमज़ा। और राउंड द स्टंप में ये उनका एक ऑप्शन हो सकता था कि वो हल्का सा गेंद अंदर लाएं और कहीं ना कहीं बैटर को जो है वो डिसीव करने की कोशिश करें। लेकिन कंसिस्टेंसी है उनकी कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को रख रहे हैं, और इससे पहले हमने देखा कि अजहर ने इस तर्ज के बॉल को कट भी किया था जो कि जिस्म से दूर था, विथ अवेलेबल था, लेकिन देखिए ये है उनकी सीनियरिटी या फिर तजर्बा कि वो हर बॉल को उस लेवल पे नहीं खेल रहे जहां पर उन्हें पूरा यकीन है कि अब बॉल हिलेगा नहीं। चूंकि पहला बॉल था जो कि थोड़ा सा विथ पे था या आस्किंग फॉर पनिशमेंट था, उन्होंने इसको जाने दिया। अच्छा टेम्परामेंट।
इस दफा आगे रखा बॉल को, इसका रिप्लाई भी बेहतर किया अजहर अली ने। और अजहर अली अभी 18 रन पर नॉट आउट हैं, और जिस तरह कल एक कैच इनका गिरा दिया था, आज आबिद अली का एक कैच गिरा। ये जो चांसेस हैं जब बॉलर इतनी एफर्ट कर रहा होता है और जहाँ पर बॉलर्स को मदद मिलती है, जब स्लिप में या किसी भी पोजीशन पर कैच ड्रॉप कर दिया जाए, और अच्छे बैटर का जिसका ऑलरेडी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, यकीनी तौर पर प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं बॉलर और फील्डर्स दोनों पे आता है। या इट्स ऑल अबाउट टीम एफर्ट, सबको मिलकर चलना है। और अभी तक जो आगे बढ़े हुए बॉल है उस पे इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा रिप्लाई किया। इवन हमने देखा जो आबिद अली का बल्ला है वो अच्छा फ्लो में आ रहा है, ऑन ड्राइव या फिर स्ट्रेट ड्राइव की जो उनकी एक एबिलिटी है उसको तकरीबन फुल ना सही लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक उन्होंने बावर करवाया। अबरार अहमद का इंतजार है कि ये दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स अबरार अहमद को कैसा खेलेंगे। 28 विकेटें हैं शायद इनकी अब तक इस क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन में, और एंजॉय करता है प्लेयर। काफी ज्यादा बॉल हवा में उठा, इसके साथ ओवर बोल्ड हुआ, 23 ओवर गए। सेंट्रल पंजाब 62 पे 1। इस दफा फिर कुछ साइड स्क्रीन के साथ इशू है या फिर ट्रैफिक। वेल प्रेफरेंस शुड बी देयर कि गेम गेट्स गोइंग। ऑन साइड पे अच्छा, लेकिन गुलाम मुदस्सिर काफी फाइन है, एफर्ट की तारीफ की। यही स्पिरिट जो है वो उमर का बहुत अच्छा है कि फील्डर को प्रॉपर अप्रिशिएट किया, और डाउन द लेग साइड थोड़ा सा वेवर्ड ज़रूर हुए थे, और यहाँ पर फील्डर की बहुत अच्छी एफर्ट, गुलाम मुदस्सिर स्लाइड करके गेंद रोका। गुलाम मुदस्सिर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सिंध के पास। बहुत करीब, और एक ऐसा लगा कि जैसे बॉल निक करके जा रहा हो, इस तरीके से बाहर को निकला, और आबिद अली काफी परेशान, सरप्राइज कि ये कैसे निकला। बहुत ही बेहतरीन गेंद, और यकीन कीजिए कि ये आबिद अली बिल्कुल बीट हो गए, क्लूलेस हो गए। और जो कल रात पाकिस्तान की टीम मैच हारी है, वो जो हम उदासी है इस वक्त उमर की बॉलिंग देखकर मेरी उदासी तो जरूर कम हो रही है। इजाज बेहतर कनेक्शन था। वैसे इस तरह की जो बॉल है ये विकेट टेकिंग डिलीवरीज होती हैं, और अगर आपको इतने अच्छे बॉल पे विकेट ना मिले तो इसका मतलब है कि बैटर की जो दूसरी लाइफ लाइन है उसमें किस्मत अभी भी मेहरबान है। ये देखिए पढ़कर बाहर को निकल रहा है, फ्रंट फुट पे लेकर आए, जिस्म से थोड़ा दूर, और हैंग किया बल्ले को, लकी रहे, बहुत लकी। वेल उमर अपनी तमाम तरह एफर्ट डालते हुए, आसिफ बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा उमर की जानिब से। सॉफ्टी खेला और कनेक्ट करके भाग पड़े, प्रेशर ऑफ किया। उमर की बॉलिंग में अब तक तमाम ही चीज़ें मौजूद हैं, वो तमाम मंदरजात मौजूद हैं जिसको बैटर को आउट करना है, बट कहीं ना कहीं बैटर जो हैं उनकी खुशकिस्मती है
और किस्मत की देवी अब तक आबिद अली के ऊपर मेहरबान भी रही है। एक कैच भी ड्रॉप हुआ साइम अयूब ने, और उसके बाद जो अब तक बॉलिंग की है बहुत ही क्लोज मामला था। सो इस वक्त तक उमर को फुल मार्क्स देने होंगे। बहुत करीब है, और अच्छा बॉल, अनलकी उमर, और उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह के बॉल पे उन्हें विकेट नहीं मिल रहा। पेस भी बेहतर था, इस दफा पढ़कर अंदर को आया आबिद को कि असर अर्ली इसको छोड़ गए थे और बाद में उनका टांग जो है हल्का सा बाहर को निकला। बहुत अनलकी यहां पर उमर, हाइट की वजह से मिस कर गए। वेल ट्रस्ट किया उन्होंने, अजहर ने बाउंस पे इस सरफेस के और बॉल को छोड़ा। अनबिलीवेबल एजाज, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा उमर की जानिब से। पहले आउट स्विंग किया, इस दफा इन स्विंग था। ऑन साइड पे डॉट डिलीवरी के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। एक अच्छा ओवर था लेकिन अनलकी रहे। 64 पे 1। $64 for 1. Central Punjab still trail by 124 runs. Good bowling in the morning session from the Sindh bowlers. Not much reward for it though. An edge flew past the slip cordon. Just persisting with the 2 slips. As we see Ghulam Mudassir now from the pavilion end. In the air, but not off the middle of the bat, but away from the fielder. Abid Ali will collect a couple of runs. A very, very enthralling morning session so far. That was expected. The slightly new ball, fresher bowlers. They're really bowled in good channel. Abid Ali hasn't found his best form this season. Once again was late on that. It was a short pitch delivery from Ghulam Mudassir, and you think that coming up with the short pitch deliveries is good idea right early in the morning? It's always good to keep the batters on the back foot early doors. Just let them know you're about. That was a good delivery. An excellent delivery. The ball jagged back in. It looks like it hit the seam. We saw the wicket in the morning, Asif, and it looked like it was more dry. There's still plenty of grass, so still seam movement might be available. The bowlers might need to just pull their length slightly back from that first day length. But this is Ghulam Mudassir's natural length, and look at the bounce that he got. No ball is the call. But once again, that movement inwards to the right-hander. He has the problem with his extra deliveries, and especially with the no ball, his front foot. He's had trouble with overstepping, even in the last game. He's got good rhythmical run up. Just don't know where the problem is. Is that the final delivery stride that he overstretches, or anything to do with his run up? Run up seems pretty rhythmical. Starts off slowly and then gathers pace. It's just probably when he tries that effort delivery, he overstretches. Once again, Asif Yaqub having a word with him, probably reminding him that he's really pushing that line. That's good umpiring as well.
Good communication between the umpire and the players is key. Two straight on that occasion. Umar prevents the second run. Ghulam Mudassir is in good touch so far. If you talk about the tournament, he's bowling nicely. He got 5 in the last match as well. It's a good asset for the Sindh. He did play earlier in the tournament where he really didn't bowl that well, and then he had a niggle, so he sat out. But then I think he assessed the conditions, must have had a good chat with the coaches, what were the right areas. And that is the reason he really bowled well in the previous game, and he's doing well now. Also quite good thing happening here is that once they pick the playing 11s, I think the rest of the players are allowed to go and play for the second 11, so they're in, and that gives the opportunity to youngsters, probably local youngsters who play under 19 cricket, or Sindh under 19 rather. So they're allowed to come in and feel the environment, how it looks like, how it feels in a first class game, sharing the same field and changing room with the likes of Sarfraz and Quaid-e-Azam. Must be a huge experience for these youngsters. It's a good initiative from the coaches as well to just get those youngsters in. Definitely their natural progression will be to come and join these first class teams in due course. 68 for 1. One for 28, Mir Hamza, but Umar once again has bowled his heart out. He's the most consistent of the Sindh's bowlers, and Abrar's introduction will really change the equation and bring more excitement to the action. But for now, the workhorse, Muhammad Umar. As Shah Faisal, you were talking earlier that this guy, well, it was a very beautiful delivery. Yeah, that last over, he really set up Azhar Ali, first the out swinger and then the in swinger. Neatly clipped. Well done, Abrar Ahmed. As if in the last over we were talking about those youngsters who are sharing the field. Definitely it's a dream and a certain progression when you start playing cricket. First you want to play under 19 and then you want to play first class cricket abroad as well. Well, rightly said. And when we used to sit with the boundary rope as a ball picker, or if you go early on in the club cricket. And in club cricket, I do remember, Shah Faisal, that when I was in junior side, and whenever we get a chance to go for the fielding, even with the senior side, it was happiest moment for us. So the youngsters like from under 19, now they're coming and sharing dressing rooms, changing room. The environment with the senior players, the test cricketers, would be really helpful for them. Yeah, really very, very inspirational. There you go, there's the youngster on the field. And yeah, when in our younger days, we just love to be around with the senior players, and if we have to just do fielding for a few overs, even that experience was just so motivational. Umar, for once trying that short pitch tactic, that's not a bad idea, because he's challenging the batters consistently on that front foot. That is a good ploy to just push them back in the crease and then slip in that fuller one
Too short though, no trouble for Abid Ali on that occasion. He says the key is the consistency, and the good thing is that in swing, out swing, the bounces, perfect start for Umar. Strays on to the pads. Abid Ali will do that to you. He's good at rotation of strike. An opener in the old-fashioned mold where he will just take his time, let the bowlers tire, and he has the appetite of huge runs, Abid Ali. That's why he's key to this Central Punjab innings. Umar, on the other hand, like I said, he's also consistent with his areas. It's just I like the third slip. I don't like that mid-wicket fielder. Well, that's gone back now for the short pitch stuff. See that edge that went through the third slip earlier? It went for a boundary, so they conceded the 4 runs, and they couldn't get the wicket because there wasn't the third slip. That one squirted away. Not entirely in control. Azhar Ali got squared up, but will pick up a couple of runs. 71 for 1. It's again a gorgeous day here in Rawalpindi. The early morning sunshine is bright and slightly warm, but very pleasant. Abdullah Shafiq, a rare failure for him. Shah Faisal, you were talking about the defensive approach of Sindh. I was not talking. You would, as you know that the idea was of the third slip. I think they brought the third slip, or it's still a gully. Yeah. We're just talking about the weather here. We've been blessed with fabulous weather here in Rawalpindi for this first-class season. Look at that. Not a cloud in the sky. You see plenty of greenery. It's the early winter here in this part of the world. The mornings and evenings are very, very fresh. But when the sun comes out, it's extremely pleasant. And Ghulam Ali is there, enjoying this pleasant weather. Shah Faisal, what about you? Are you enjoying this pleasant weather of Islamabad, Rawalpindi, apart from this cricket commentary? Always do. Always do. Look at that. The Margalas and the beautiful city of Islamabad on the foot of the Margalas. Here you can also see that we haven't had a lot of rain lately, so that visibility does improve a lot when it rains. And the environment generally is very, very fresh in this part of the world because of the amount of rain and the greenery. Mudassir has strayed in line occasionally.
Umar does well. You're talking about the weather in this part of the world. Spend a lot of time here, a lot of cricket in this part of the world as well. And probably if you're from South, like we just saw Ghulam Ali, or players from Sindh, they really love the weather here, because in Karachi it only gets cold around December and January. But the weather they're having here, middle of November, middle of October, late October, is really pleasant for them. Even central Punjab, our friends who come from Lahore, they're telling me it's not as fresh in Lahore just yet. It's still quite warm. That's a better channel. $72 for 1. I always loved these mornings of Rawalpindi, Islamabad, especially October, November. November approaching, of course, and will get bit chilly, but definitely if you're a nature lover, you could enjoy Rawalpindi, Islamabad anywhere. You could travel towards Margala. You could travel to Mountain Hills, and that was the Margala Hills, I beg your pardon. There's a lot of vantage points as well. If you go to Shakarpania, you can even go higher. I have offered you many times, but you aren't ready. I'll blame it on Ali Yunus. Abrar, that's the moment we were all waiting for. He really bowled those teasing 2 overs towards the end of yesterday. Abid Ali, he really troubled him. Big leg spinner, then the googly, and then the quicker delivery. He was really asking questions. Today, he's got a bit longer. He can cook a plan. Abrar is good at that. Yesterday, he was trying too many things. Starts off with a loosener. Not entirely off the middle of the bat. Abid will collect a couple of runs. Probably he had the opportunity to find the boundary. Couldn't really time it as well as he would have liked. Yes, it was outside the off stump, and of course that it was a cut shot from Abid Ali. Did you notice that bounce on that, Asif? It was short, but it was bouncing quite high. It's a matter of time when Abrar would find good areas. And I'm sure he will trouble these batters. And that second delivery was right up there. Abid Ali is a good campaigner against spinner. But see, this is the contest between Abrar and Abid Ali. More aggressive. Went for that sweep, taking up the challenge. Slog sweep is one of his go-to strokes, Abid Ali. Azhar on the other end. As we watch this sweep, nice roll of the wrist. Got down on one knee really quickly. But this is also another mouth-watering contest. Azhar Ali lately has had his troubles getting his innings started against quality spinners. But now he's batting on 22 of 63. Half an hour of batting this morning. Well, I say half an hour, almost 50 minutes. And this strike rotation will help these two batters. That wouldn't allow Abrar to settle. Yes, as you said, that would be a good contest because both of the batters, they have plenty of experience there. And good start from Abrar this morning. 28 gone, 76 for 1. Sindh really hoped to dislodge one of them quickly because we know that these two, when they bed in, they really bat long.
Sindh with a modest first innings total. They didn't want to fall too far behind in the game because their batting is also quite brittle with the absence of Saud Shakil. Central Punjab can really home in the advantage if they bat all day today. "28 overs into 29th, and this man Zahid Mahmood, we haven't seen him at the bowling crease. It was a very, very interesting choice from Sindh, and I did ask Ghulam Ali about this inclusion of 2 spinners and they're playing 11. The answer he came up was that Asif had to leave at the last minute, and I got the impression they didn't have any choice but to include Zahid. Not ideal for 2 spinners if the game goes up to the 4th day and Sindh are defending a reasonable total, then Zahid may come into play. A very, very crafty leg spinner. Well, do you think that it's a good idea coming up with 2 spinners as the Abrar is performing well? I think that they went with that approach, isn't it? Mudassir now bowling in channel. Earlier on he was straighter in line and allowed the batters to pick off easy singles. Mir Hamza at mid-off, he's just bowled a spell. He was looking to get loose again. Does he think it's best to just bowl the seamers in rotation in this first spell and get as much out of the pitch as they can? Talking about the youngsters, Asif, there's another one. Yes, reminding me my earlier days of my club cricket and then, of course, school cricket, college cricket. Pitched way outside the leg stump. Ghulam Mudassir. Over exuberant. Asif, you need to go and check with him tomorrow morning if he knows what's the rule for a leg before. Almost 5th stump that it pitched outside the leg stump. Look at him. How intense. Yes. He was quite confident about his shout. Yeah, that's what I said. This is your job tomorrow morning to check with him. See if he knows the rule for the leg befores. This time he didn't appeal. Abrar, is he having some sort of problem? He didn't bend to pick that ball up. Leg by is the call. Yeah, Ghulam Mudassir is very, very nippy. But today his lines haven't been consistently good. Look at that. He's tucking Azhar up, but that line will never get him any leg befores. When he was at his very best, when he saw him in that game where he took the 5 his line was off stump or slightly outside. And when he got that ball to come back, he became deadly dangerous. And his natural angle was always there to keep the batters guessing. That has been missing in this spell so far. Azhar does have a tendency to fall over. Abrar wouldn't mind that because Abrar would like his front foot to go right across before he can slip that googly in. He started with a flight. A good start for Abrar against experienced Azhar Ali.
to wicket straight bowling. We haven't seen that googly yet. At the moment, Abrar is concentrating on that slightly lower trajectory. That was that flighted delivery. Omar's stunning bowling made my morning, honestly. Let's see if the Abrar continues. Nicely picked by Azhar Ali. I think he picked up the googly very nicely. Played with the spin to mid-wicket. We were discussing Azhar's trouble against spin, mostly against left-arm spin. What is Fawad Alam laughing about? Good use of the crease again from Azhar Ali. Went right back. Comfortably negotiated. 78 for 1. I was talking about the beautiful bowling of Mohammad Umar. Bowled 10 overs, 2 men in 23 for none. I enjoyed his bowling. Mir Hamza was the bowler who picked up the wicket, and Zahid Mahmood is not in this list still. See that movement again. That is closer because the line was good and it was slightly fuller. Still Asif Yaqub made the call. I think once again, if we have a closer look, that ball was pitching pretty close to that leg stump or slightly outside. Good call again. See that movement he's still getting? It just needs to get that line slightly over. Yes, off stump or middle stump, if he tries to target there, would be really helpful for him. And that fuller length. Still something happening for the bowlers. That is better. Now, in the morning when we were talking about the pitch and we saw quite a few marks in good length area, and we were praising the bowlers for how consistent they were yesterday, and that's the reason they picked up the rewards. Today, Ghulam Mudassir hasn't been consistent with his lines especially. There's still plenty happening for the bowlers. There's grass. There's some cracks developing as well. You see all those marks of the balls? They're at good length. These are called good areas. So the line is important. There's a big crack developing here. We'll keep an eye on it as the match progresses. See that? If he gets the angle right for the in-swinger, then the one that just went away really becomes even dangerous for the batters. Yeah, just need to hone his skills with a little bit more precision. Ghulam Mudassir has to. Asif Yaqub was showing watch to Mir Hamza, was telling about the over rate. And yesterday they were shorted of 15 overs. So I think Asif Yaqub again telling him, the captain, Mir Hamza. Yeah, over rates are important. I always stress on that because eventually if you're looking for decisions in 4-day games or even 5-day test matches, you don't want to be losing overs on such beautiful tracks that we're having at Pindi. If we have the full quota of overs, that is ideally should be 360 overs for the 4 days, 90 per day. It is more likely that we'll have results in most games. And now with the light fading so quickly, we don't have the luxury of that extra half an hour towards the back end of the day.
Yes, Sindh with the presence of Abrar, I think they'll catch up on the over rate because Sindh generally has been good. Central Punjab with all pace attack really struggled yesterday. Good one to finish the over. 78 for 1. मैच समरी अब तक सिंध वर्सेस सेंट्रल पंजाब 110 रन पीछे है सेंट्रल पंजाब जब आबिद अली और अजहर अली की शराकतदारी जारी है। बिलतरतीब 43 और 24 रन पे बरजमान है और अच्छी बारी कर रहे हैं। उन्हें एक एक मौका भी मिल चुका। लाइफ लाइन और मेरे साथ कॉम बॉक्स में यासिर अमी टेस्ट क्रिकेटर, वेलकम। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम इजाज़, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। अच्छा स्टडी स्टार्ट मैं कह सकता हूँ पंजाब का। आबिद अली जिन पे एक बड़ी इनिंग ड्यू है और अजहर अली टेस्ट सेंचुरीज पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस। जो और आबिद अली का ये लीव करना, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि वो थोड़ा सा ड्राइव करने गए तो एज हुआ,
इस वक्त उन्होंने ये कैलकुलेट करके रखा है कि जो भी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर पड़ेगा मैं मैक्सिमम उसको छोड़ूंगा, और ये बेहतर ऑप्शन है, और ये दोनों अच्छा सेशन लेके चल रहे हैं बैटर। सेंट्रल पंजाब के प्लेयर्स इस वक्त पुलिस एहलकारों के साथ गपशप में मशगूल है। बहुत अच्छा बॉल और बहुत ही अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ मीर हमजा का, एक्सीलेंट बॉलिंग। स्कोर 78 for 1। सेल्फी मोमेंट्स, ये यादगार लम्हात अपने स्टार्स के साथ, जहां पर रेस्क्यू 1122 यकीनी तौर पर ये थ्रू आउट इस इवेंट में यहाँ मौजूद रहते हैं, तो उनके साथ ये खुशगवार लम्हात, और यकीनी तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, तो आप खुद को बताते हुए फख्र फील करते हैं कि मैं इस फलां स्टार के साथ था। अबरार कंटिन्यू करते हुए, और अच्छा इम्पैक्ट अबरार का। एक्सीलेंट लाइन, एक्सीलेंट लेंथ। अबरार का एंड चेंज किया है, बहुत अच्छी सोच, क्योंकि इस एंड से इन्होंने बहुत ही आला बॉलिंग की। पहले 2 मैचेस में हमने देखा 4 मैचेस में 20 आउट अबरार के, और बल्कि इससे भी ज़्यादा है शायद। 28 विकेटें, और एक्सेलेंट बॉलिंग। अजहर अली निकल के कदमों का इस्तेमाल करके शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इब्रार ने फौरी उनको जज करके फौरी जो लेंथ चेंज की अपनी। ये एक और चीज़ T20 से ये इन्होंने अडॉप्ट की होगी, क्योंकि उसमें बैट्समैन जो है वो निकलते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, और क्या एक्सीलेंट बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार गुगली की, यहाँ से गैप भी बन सकता है। डॉट बॉल, अबरार अपना जलवा दिखाते हुए, प्रेशर है इस वक्त अजहर पे। इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, हमने पेसर्स के अगेंस्ट देखा, अजहर अली ने अब तक अच्छी बारी की, लेकिन अबरार का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है इस वक्त। 78 1 के नुकसान पे। सिंध और पंजाब के यंगस्टर आपस में तबादला ख्याल करते हुए। हुनैन शाह गुफ्तो शनीद करते हुए, और दूसरी जानिब जो गुफ्तो शनीद है, यकीनी तौर पर आपने जो सीनियर्स हैं उनको देख रहे हैं सर क्रीज पे, तमाम तर रिकॉर्ड होल्डर हैं, और ये बेहतर है यंग और एक्सपीरियंस का जेल टुगेदर। मीर हमजा यकीनी तौर पर बीइंग अ कैप्टन इस सोच में है कि अर्लियर ऑन डॉट बॉल से ज़्यादा कंटेन करने से ज़्यादा उनको विकेट लेने हैं, क्योंकि जो सुबह का सेशन है जब बॉल थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा हो, हिल रहा हो, तो वहाँ पर पेसर्स का जो अब तक हमने देखा है वो बोल बाला रहता है, लेकिन फिलहाल जो पेसर्स हैं वो उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आबिद अली की स्ट्राइक रोटेट किया, लेकिन ये अबरार के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो दोनों को अगर फंसाएंगे तो विकेट लेने का ज़्यादा चांस है। अभी अजहर अली को उन्होंने बहुत अच्छा ओवर किया लास्ट,
नेक्स्ट ओवर अगर वो आबिद को करते हैं तो उनको भी एक चांस मिलेगा कि डिफरेंट चीज़ें अपनी कर सकते हैं अप्लाई। अजहर अली 88 बॉलें खेल चुके हैं 24 रनों के लिए। बहुत टेम्परामेंट है अजहर का। ये इनकी बैटिंग का खासा है। मीर हमजा इस वक्त बीइंग अ पेसर, बीइंग अ कैप्टन, बॉलिंग करवा रहे हैं और उनके माइंड में यकीनी तौर पर ऑप्शंस चल रहे होंगे इस वक्त कि चूंकि विकेट नहीं आ रहा, पहला सेशन आज के दिन का बेहतर है, तो जो ऑप्शंस हैं इस वक्त मीर हमजा के पास पेस या स्पिन के, जाहिद इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं अर्लियर ऑन। यासिर आपका व्यू? मेरे ख्याल से इब्रार तो एक एंड से लंबे बॉल करेगा। इनके पास ये बड़ा लग्जरी है, लिवरेज है कि वो एक एंड से इब्रार से बॉल करवा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से इनकी जो ये मैचेस जो जीत रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है, जो मेन रीज़न है। बहुत अच्छा बाउंसर, अच्छा छोड़ा अजहर अली ने। सरप्राइज किया था इस बाउंसर के साथ। और अजहर अली बर वक्त बॉल की लाइन से हटे। और एक एंड से फास्ट बॉलर्स, फिर इनके पास एक और ऑप्शन भी है जाहिद की, जो कि पहला मैच खेले और डेफिनेटली ही विल बी लुकिंग फॉर सम परफॉर्मेंस, सम इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि अब उनका मुकाबला सिंध की टीम में अब्रार जैसे बॉलर के साथ है। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 79 for 1। आइडियल कंडीशंस क्रिकेट खेलने के लिए, और उससे आइडियल क्या होगा कि जब आपके पास अबरार अहमद जैसा लीडिंग विकेट टेकर हो इवेंट का। अपील कर रहे हैं सख्त, काफी ज्यादा शाउट, और आसिफ याकूब ने आबिद अली को आउट करार दिया। जी हाँ, पहली बॉल आबिद अली ने फेस की और अब इब्रार ने इनको डिसीव कर दिया लेग बिफोर द विकेट। देखेंगे रिप्ले को और इंटरेस्टिंग होगा। पिच इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन एंड विकेट हिटिंग। बिल्कुल अच्छा डिसीजन आसिफ याकूब का। एक्सीलेंट बॉलिंग इब्रार अहमद की। ब्रिलियंट बॉलिंग। और जिस तरह लास्ट ओवर में स्ट्राइक रोटेट किया था तो उस वक्त ही मैंने बोल दिया था 44 रन की आबिद अली ने। 79 for 2। अच्छी फाइटिंग इनिंग्स आबिद अली की। और यहाँ से ये 50। आइए आइए भाइयों आइए। मोहम्मद साद नए आने वाले बैटर, हालात इतने बुरे नहीं हैं उनके लिए। बीइंग अ कैप्टन, एक कैप्टन इनिंग चाहिए होगी उनसे। जी हाँ, मोहम्मद साद
इब्रार उनका टेस्ट लेने के लिए तैयार, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ हिज लाइफ 4-डे क्रिकेट में, टॉप बॉलिंग कर रहे हैं, टीम भी अच्छी टीम में खेल रहे हैं, सरफराज अहमद इनके साथ है, फवाद आलम, दोनों सीनियर क्रिकेटर्स हैं। और इस तरह बॉलर को बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप कीपर को देखें वो टॉप क्लास हो, स्लिप में देखें टॉप क्लास फील्डर हो, तो और भी ज़्यादा चढ़ के बॉलिंग करते हैं। और इस तरह के जो बॉलर हैं इब्रार, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग, थोड़ी सी लेग स्टंप पे थी, लेकिन आइडिया अच्छा था लेग बिफोर का। ये देखिए आबिद अली जो कि डिसीव हुए पूरी तरह, बॉल पढ़ के सीधा रहा, स्टंप्स के बिल्कुल सामने। एक्सीलेंट बॉलिंग अब्रार। अजहर अली अच्छी टेक्निक से खेल रहे हैं, बल्ले को आगे रख रहे हैं, या स्लिप का या सिली का ज्यादा चांसेस हैं। खूबसूरत शॉट, सिर्फ एक रन। एग्जैक्टली इस वक्त अजहर अली बेहतर बैटिंग कर रहे हैं और साद नए आने वाले बैटर यकीनी तौर पर इब्रार अलियर ऑन अटैक करेंगे। रॉन्ग वन, स्ट्रेट, किस तरीके से आगाज करेंगे साद के खिलाफ। अच्छा दिफा साद का। और फिलहाल अगर हम साद की बात करें तो रावलपिंडी में जो बलूचिस्तान के खिलाफ मैच था उसमें ये यहां पर मौजूद थे, क्योंकि इतने बड़े रन नहीं बना पाए। ऊपर हवा में बॉल, अपील और आउट। एक ओवर में दूसरी कामयाबी। जी हाँ, सिली मिड ऑन को लाए प्ले में, बैकफुट पे खेले, आगे मैनेज करने वाला बॉल था। इब्रार अहमद पांसा पलटते हुए इस मैच का। जी हाँ, हाफ कॉक खेले, इनर एज, इजी कैच यंगस्टर के लिए। मोहम्मद साद कोई रन बनाए बगैर पवेलियन वापस। 81 पे 3। तैयब ताहिर अमंग द रन्स, लेकिन इन ट्रॉफी और इसको कंटिन्यू करना होगा कि जो फॉर्म उनकी है इस वक्त लगी हुई, क्योंकि उनकी टीम मुश्किलात से शिकार है। 2 विकेट ऊपर नीचे। इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इस वक्त तैयब ताहिर का और होगा जो देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त मीर हमजा जो है वो बॉल करें अजहर अली को। खूबसूरत, एलिगेंट और पलक झपकते बॉल लुढ़कती हुई 4 रन्स के लिए एक्स्ट्रा कवर रीजन पार कर गई। यह है ब्यूटी अजहर अली की। जी हाँ, एलिगेंट एंड पर्सोनिफाइड अजहर अली। वेट ट्रांसफर किया, बैलेंस बहुत अच्छा था। अच्छी बात थी, हेड बहुत अच्छी पोजीशन पे था।
ऑफ स्टंप के बाहर। तो और अजहर अली, जैसे हम पहले भी बात कर चुके कि एक एंड संभाले हुए, दूसरी तरफ से विकेटें गिरती जा रही हैं। अबरार अच्छा कंट्रोल कर चुके हैं, एक ओवर में 2 कामयाबियां। जी देखिए, बड़ा ढीला खेले इब्रार को, इस तरह इब्रार को थोड़ा सा टाइट खेलना पड़ेगा जिस तरह अजहर अली खेल रहे हैं। अगर ढीले आएंगे तो ले जाएंगे आपको। 2 ले गए वो, और एक बार फिर शॉर्ट बॉल कनेक्ट नहीं हुआ 1 रन के लिए। जी हाँ, 2 विकेट ऊपर नीचे एक ही ओवर में। यकीनी तौर पर जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट हुई। काफ़ी देर से इंतज़ार में थे यहाँ पर मीर हमजा के किसी न किसी तरीके से उन्हें ब्रेक थ्रू हासिल हो, और उनके कामयाब तरीन बॉलर न सिर्फ इस इवेंट के बल्कि ओवर द सिंध के, जो अगर हम देखें जो पिछले दोनों मैचेस यहाँ पे जीते 10-10 विकेट से, तो बड़ा अमल दखल, बहुत बड़ा किरदार रहा अबरार का दोनों इनिंग्स में। 45 मैचेस में 2500 रन, 4 सेंचुरीज। काफी तेज ये बॉल निकला पड़कर, और जैसे तैयब की हम यासिर बात कर रहे थे कि 152 इनका हाईएस्ट था इस मैच पे, सॉरी इस ग्राउंड पे पिछले मैच में। जिस तरह मीर हमजा बॉलिंग कर रहे हैं, और हमने देखा लास्ट उन्होंने आबिद अली को भी काफ़ी उन पे अपील हुई थी। जो बॉलिंग हो रही है इस वक्त, तो तैयब का यहाँ पे भी टेस्ट होगा, और इस तरफ तो है ही टेस्ट। इब्रार वाली जो साइड है वो तो टेस्ट है, उधर भी टेस्ट है। ये अच्छे प्लेयर है तैयब ताहिर, अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं, टाइम भी लेते हैं, और फ्लिक ऑफ द रिस्ट बहुत अच्छी है इनकी जब ड्राइव्स खेलते हैं या ऑफ द टोज। देखना होगा आज किस तरह बैटिंग करते हैं मीर हमजा और इब्रार के अगेंस्ट। 3 स्लिप और 1 गली है। पॉइंट अपील हुई, लेकिन इम्पैक्ट माइट बी डाउन द लेग साइड। थोड़ा सा पिच से मदद मिल रही है मीर हमजा को। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 86 पे 3। सिंध का पंजाब का बैटिंग कार्ड, आबिद अली अभी अभी आउट हुए 44 पे, अब्दुल्ला शफीक 3 रन बनाए, अजहर अली 30 पे खेल रहे हैं, मोहम्मद साद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 86 पे 3। तैयब तार अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें क्रीज पे। एक्सीलेंट फिगर्स, 6 ओवर 9 रन 2 आउट। ब्रार सॉलिड। वैसे अजहर अली को आउट करने के लिए इब्रार को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। फील्ड को थोड़ा फैला दें अजहर अली के लिए कि ऑफ स्ट्राइक करें इन्हें, ये बेहतर ऑप्शन होगा। भैया निकलना पड़ेगा दोनों को, हाँ, ताकि अजहर अली ऑफ स्ट्राइक हो, दूसरे एंड पे जो नया बैटर आया उसको खिलवा सकें ज्यादा। जो बड़ी ऑब्वियस एक प्लान हो जाएगा, फिर अजहर अली एकदम एक और शेल में जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए, उससे ये है कि अजहर अली की भी विकेट आ सकती है। लेकिन अजहर अली ये है कि बॉल टू बॉल खेलेंगे, और आपका पॉइंट भी ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है वो अगर सेट हो गए तो वो अपने, उनकी एक खासियत है कि अपने साथी को भी कॉन्फिडेंस देते हैं, तो इधर इनकी पार्टनरशिप लग सकती है इस सूरत में कि अजहर अली अब्रार को अच्छा खेले। बहुत अच्छा शॉट ऑफ द टोज, थोड़े से ऑफलाइन हुए और 4 रन हासिल होंगे अजहर अली को। बहुत ही अच्छा शॉट, टॉप क्लास।
ये एक टॉप बैटर की अलामत होती है कि जहाँ पे बैट बॉल मिले वो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करते हैं. अब ज़रूरत से ज़्यादा सर पे चढ़ाने से बॉलर को आप गलत है ये. दिस इज़ द राइट वे. जहाँ पे अच्छा बॉल है उसको रोके. बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल हो जाए तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट बैट्समैन के अपने हाथ में होती है उसकी इनिंग्स. और अजहर अली जब जब अबरार बॉल करवा रहे हैं उसको रीड भी अर्ली कर रहे हैं, बेहतर अंदाज में कोप कर रहे हैं. और अब तक उन्होंने मिडल किया. कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि अजहर अली अबरार के खिलाफ खेलते हुए कहीं ना कहीं डामाडोल हुए. इसके साथ ओवर के अख्ताम पजीर हुआ. 37 ओवर हुए. 90 पे 3 सेंट्रल पंजाब. I've just got a feeling, Shah Faisal, that we've got a game in our hands. Because Sindh has made a comeback. Courtesy couple of good wickets. That's a good run. Tayyib Tahir has joined Azhar Ali. Yes, courtesy Abrar Ahmed, definitely. That was expected the way he's bowled. And since last evening, we knew that Abid Ali was struggling against him. And that showed in the morning. A very good decision given by umpire Asif Yaqub. Do you agree that we've got a game in our hands? An interesting one, Shah Faisal? Definitely. Abrar would have had something to say. But these two are formidable. Azhar Ali is shaped very nicely against him. And Tayyib Tahir is also an excellent player of spin. So, somewhere along the line, the seamers would need to chip in. And if they're able to remove one of these, it will open up the gate for Abrar. See, it's just not about a regular spinner we're talking about. We're talking about a mystery spinner who's in the form of his life, who's got control. Have a look at this, the first one. Abid Ali had no clue. He was struggling since last evening. And the very next man was the captain, Mohammad Saad. Yeah, Abid Ali couldn't pick the googly, and Saad was really pushing at it with hard hands. And the bounce is the key. How that ball ballooned up in the air. Yeah, like I said, seamers will need to contribute. And with Abrar, the kind of form he's in, it makes their job a little easier. Wide of the crease, creating that big angle. Azhar Ali, in his usual way, is really trying to battle hard. That strike rate, 34 of 105. We never really see Azhar Ali pushing out of that kind of strike rate. So that is usual for him. It's about his role also. It's very important for Central that he stays on, because he's handled Abrar very nicely. That's a beautiful one. That is a top-class delivery. No idea, Azhar Ali. Beautiful. That is an absolute peach. Once again, that angle from wide of the crease. Azhar was always feeling for the ball. Didn't do much after pitching. Just straightened just a little bit and enough to beat the bat. Yeah, that point you made, I think that was an excellent one. That seamer will have to contribute. You cannot put too much pressure on one bowler. Although he's doing a very good job for Sindh, but he need assistance from the other end also. And he's such a luxury to his skipper, because Sindh has got 3 seamers, and when Abrar ties one end down, the seamers can keep coming in short bursts, so they remain fresh for longer. And that's why they can also have good impact. And that part of that credit definitely goes to Abrar. And that man also, Neil Johnson, he's changed the luck
for Sindh side. Since he is joined, they've won both of their games. So credit has to be given to him also. Oh, beautiful one again. That's what Azhar Ali is suggesting, that it is swinging, it is seaming after pitching. Excellent bowling. It's 91 for 3. Still padded up. Look at him. Abid Ali is that disappointed. And rightly so, Shah Faisal. He's looking for runs. In this season, he hasn't got many runs. He's been struggling, making a comeback after the illness. It's so disappointing to see that he's back in the camp. Lot was expected. Now he breaks into a smile. Probably the longer he remains there, he will just calm down. Now you see he started to undo his pads. The realization has struck that he's been dismissed. Again, he was shaping nicely, but Abrar was really putting him under pressure last night, and he finally got his man this morning. Yeah, but what about this boy? Abrar, I think he's bowling beautifully. He's got that control. And if you ask me, I think he's all set to make his way to Pakistan's test side. With the type of bowling he is in, the control that he's got, the spin he's getting. We know that Rawalpindi pitches are not conducive for spin bowling, but he's taken most of his wickets here. That shows something, the class of the boy. Yeah, 30 wickets now, including the one this morning. And the good thing that goes in his favor, there's not a lot of competition in spin department. Yasir Shah, who's played inside edge once again onto the pad, away from that fielder at short leg. Tayyab is playing out in front, but that edge took the pad and went away. Yeah, every time he bowls, we're expecting something to happen. Every time he bowls. Now says Azhar Ali. Tayyib Tahir, it will be a challenge for him. We know that he's been scoring runs with white ball and red ball cricket. Very talented batter. He can bat at every number. He's opened the inning, he's played at number 3 and now at number 5. He's got potential. But this challenge, I think this is a bigger one. The biggest of his life probably, facing an in-form mystery bowler. It's 91 for 3. The contest is on. Sindh still leading by 97 runs. Central Punjab bat very, very deep though. That's another thing that goes in their favor. You got Amir Yamin, Fahim Ashraf still to come. Ali Shan, the wicketkeeper, Qasim Akram. But I have a question for you again. I love asking questions to you because of your cricketing knowledge. It's just too good. Nicely clipped. There is a fielder. The question is, these two are the formidable pair, the proper batters, Azhar Ali and Tayyib Tahir. After this pair only, there is Qasim Akram, he's an all-round cricketer. Fahim Ashraf, an all-rounder. Amir Yamin, all-rounder. Ali Shan, all-rounder. Then the bowlers. Against somebody like Abrar, do you think that batting that is so deep down, it's going to be the same effective? Oh, that was so close. Was it off the bat? Was it off the pad? That's the question. No, it's given runs by the umpire. Will this go down as a drop chance or a good effort by Sarfraz? Two noises. Sarfraz was scrambling. This pitch has good bounce, which means it will allow keeper longer to get to the ball. Sarfraz was a bit too upright, and that dive
was just a fraction of a second late. Although the pace was taken off of that ball because it hit the thigh after hitting the inside edge. A touch late. Yeah. Handsomely driven. That's the disappointment from Azhar Ali. You could see that he hit it nicely right from the middle of the bat, but straight to the fielder. Yeah, coming back to the same question that I asked you after this. Look at that full face of the bat. No, this one was the last one. Yeah, there. That's where he was a touch late. Right when he had to dive. The thing that you can give him the benefit of the doubt, he did get blinded for a moment. Because that inside edge and thigh pad, it was all happening inside Azhar Ali's body. And the wicketkeeper does get unsighted for a moment. Nicely punched. One go to the fence. Ghulam Mudassir gives the chase. Couple of runs to Azhar Ali. You're talking about that chance down the leg side. Because Sarfraz was, you'd say, he got into position and then you say he was reluctant to dive because he couldn't see that ball. It was hidden inside the body of Azhar Ali. And that is the fraction of a second he lost there. But being a wicketkeeper yourself, isn't it instinctive? Anything leg side, you have to go as a wicketkeeper? You just cannot decide to just take a blind leap. We've seen this before. Azhar Ali, footwork whilst he plays the stroke, footwork after he finishes the stroke. And that shout also. No, no run. Who does he reminds you of? Manas Labuschagne. He'll be disappointed because he sets high standards for himself as a wicketkeeper, Sarfraz Ahmed. We know it. He's been an excellent wicketkeeper over the years for Pakistan. Fantastic captain also. It's good bowling. Wicket to wicket, steady bowling. If you cannot get wicket, at least you shouldn't be giving away runs. It's 97 for 3. That they will face trouble against Abrar. Depends how long this partnership goes and how much they make Abrar tired. He has the ability to bowl 30 overs in a day, so you can tell. But the thing is, the potency goes down, especially if you're not getting wicket, not just physically but psychologically also. So that's why this partnership is very, very important. And also how comfortably you play. We look at Azhar Ali, he's comfortable against Abrar, but Tayyib Tahir has looked shaky. I know he's just 12 balls old on the pitch. He will get used to it. And if you're shaky as a batter, that gives a lot of confidence to somebody like Abrar, who's always on to you, always looking to get you out. You got to feel, you got to be comfortable there. You don't have to give your weakness to the bowler. So you got to keep an eye on Tayyib Tahir, what sort of approach he goes. We know that he's very attacking against spin. Will he just take his time or will he just counter-attack to just put Abrar off his feet? That's also a key. That's intriguing. I think it has to be sensible. It's not that you're just going to block and then hit one away. It's not going to happen. But you have to keep scoring runs off the bad deliveries. But he's hardly bowled a bad one. That has been the quality. That is why I say that he's ready for Test match cricket. Because of his control. The way he is bowling into the right areas. He's in the form of his life. You got to make use of it. It's a maiden. 97 for 3. Talking about Tayyib Tahir's pedigree against spin.
And that will pose challenge to Abrar. But look at that. He's been bowling the quicker trajectory. And then look at that, that forward press, but then he was able to adjust his shot. His hands and wrists coming into play. But that footwork was key because he didn't just push along with that forward press. That transfer of balance and then good use of hands. He'll have to do it for a longer period of time. That is the question. For how long can he do that? For how long he can keep his concentration against Abrar? Azhar Ali, well, it's a good learning on the other end. As he clipped one down towards fine leg for one. He'll have a lot to learn from the other end, Azhar Ali. He's handled Abrar nicely, comfortably. Yeah, that's a huge credit to Azhar Ali as well. Because Abrar's variations, one would have felt that he would have tested Azhar Ali, but Azhar's balance has been good. And I think the advantage that he has over the others, he's picking him from the hand. That allows him that extra fraction of a second to make those necessary adjustments. Now, with the new man in, 3 slips. I like this field. Ali, you know that. Oh yes, you've been an advocate of this field setting. 3 slips and a gully. Especially to your new man. Good decision. Inside edge. Inside edge. That is superb. Just a double bluff. Because he got the 3rd slip in and then slipped in the in-swinger. Tayyib was clearly playing outside the line of the ball, trying to cover for that in-swing. But that ball jacked back in. He's lucky he got that edge. Well, actually huge edge. But still, good bowling. Excellent bowling, Umar. Both Azhar and Tayyib Tahir, they've played their club cricket in Lahore. Oh, that jack back in also. That is fantastic bowling. Superb by Mohammad Umar. Equally good by Azhar Ali. This is a sensational contest. Umar has been challenging those good areas. Azhar exactly knows where his off stump is. He's trusting the bounce of the pitch. Went over the top of the off stump from a good length, and look at where Sarfraz got it. This is a cracking strip here at the Pindi Stadium. Very, very good pitch as well. Some quality cricket we are witnessing. 2 of the finest in the departments. Another one. And look at where Sarfraz is collecting all those balls. Up above his waist, and the ball is still on the up when he collects it. Have a look at the length first. Azhar's forward press, good leave, and then the bounce. Imagine these bowlers bowling in Sydney. Or Perth? Perth, You mean sorry. Perth? Perth. I am so sorry. I meant Why Perth. are you talking about that? Why are you even talking about I that? still haven't gotten over that. We still need to talk. Just concentrate. We're seeing some fantastic skills here. Another one. Beautiful, beautiful spell by Umar. Just a line touch outside the off stump is the only thing wrong he's doing. Otherwise, he's been spot on. Wonderful fast bowling. You got to give credit to Azhar Ali. He's not getting tempted into those strokes. Critical, yeah, like you said, the line or the length may be a yard fuller from here, but the presentation of the seam, he's hitting that seam. That is, we've seen at Pindi Stadium on days 2 and 3, that swing goes away, but then there is little seam movement if you continue to hit the seam. So you have to pull your length back, but still a yard fuller, I think, will be even better. Comfortably handled. 99 for 3, Central Punjab. Richard Stonier is always working. Such an impressive guy he is. Great work ethics. We've seen, other than Northern, we've almost seen every team here play in front of us.
I think the coaching, if you talk about the coaching camp or the management, I think they've done a wonderful job. They're always working, they're always fielding, even in the lunchtime also, they're always working with the boys. Good running, good call by Azhar Ali. Difficult, is it? After bowling a no, oh, he's given up one more extra run. That is not good. Yeah, Umar just fresh from bowling that over. Just guilty of being just a tiny slow. But look at Tayyip Tahir. He went right back in his crease. He picked a googly. And then also good running, aggressive running, was ready to seize on the opportunity. This man is a busy cricketer, Tayyip Tahir. Nicely played. They'll play spin well, both of them. Tayyip Tahir has played most of his cricket in Lahore for PNT Gymkhana. Azhar Ali has played for Model Town Club, Nawab Saab. Those pitches are excellent to bat on. And some spin also. Oh, you'll have to hurry. Non-striker's end. Made it easy in the end. Good call, Azhar Ali. He picked that Umar is a bit slow to react because he's bowling at the other end, probably thinking about his bowling. And that just fraction of a second late, and Azhar was good to capitalize on that. That one kept low. It will put more confusion in the batter's mind if it starts keeping low. Remember, Sindh, if needed, will have to bowl last, and he will be very handy. That is what Central would be hoping, that to get a 100 or 150 run lead is to be in the comfortable position. Seems like a difficult job at the moment because they trail by 86 runs. And Abrar is into his 10th over, just 16 overs, 2 wickets. That's not a good news for Central Punjab. Whereas, as long as Azhar Ali stays, they're safe. It's a bit tricky for the Sindh skipper. Talk about it in the next over. 103 for 3. I was saying in the last over that it's a bit tricky for the Sindh skipper. These two have negotiated Abrar quite nicely. They have still the option of Zaid Mahmood. But the tricky thing is they don't have a lot of runs to play with. So it'll be would it be worth taking a gamble, giving Zahid instead of Abrar for a short while? I'm not sure about it. I just think it's a bit tricky. What do you think? I think it won't be a bad idea because Azhar and Tayyib both are relatively comfortable against Abrar. They're handling him well. So yes, maybe 4 or 5 over spell from him. Nicely driven. Remember, it's Friday, so we've got extended session. It's going to go till 1. So yes, maybe before lunch you can have a 4 over or 5 over burst from Zaid Mahmood. Or maybe both spinners in tandem. No? What do you think? It's another tricky thing. The leg spinners, they really want to bowl a long spell. Yeah. 3-4 over spells, they really don't get into groove that soon. Yeah. So that's another thing. Plenty to think for Mir Hamza. Yeah. I like the jumper he's wearing. All the Sindh players from the south, they find this weather cold enough to wear the jumper. That will run down for a boundary. Tickled by Azhar Ali. Didn't like it, he's disappointed. 2 full, 2 straight. Such is the margin of error for bowlers on this pitch on day 2, day 3. But the margin of error is so small. Azhar probably took it off of middle and leg stump, so the line wasn't that bad, neither was the length. That's why Umar was frustrated. But Azhar has made him bowl at him because he's not flirted with anything outside the off stump. Even on the 4th channel, Azhar has been leaving so well, and he's really forced Umar to bowl at him.
Handsome through the gap. Couple of runs, if not 3. The captain, the standing captain doing the chase. Mir Hamza. Typical gritty knock by Azhar Ali. Like I was saying, he's left so well that he's asked Umar to bowl a bit fuller at him, a bit straighter, and that's where he can pick him off for runs. And even then, Azhar is not going expensive. That little check drives, the little punches here and there, little reflections. It's good batsmanship. Absolutely. I think with England tour coming up, it's very important for a senior member like Azhar Ali to be in good form, to get some runs behind him. And it's a good opportunity for him. And he has delivered. 1 double hundred, couple of hundreds, and here also is looking really good. There is some good selection problems for Pakistan when it comes to red ball cricket against England. I'll ask you this question. There is one spot available at number 5. Who are you going to pick? Salman Ali Agha, we saw he played there. There's Saud Shakil scoring runs. Kamran Ghulam scoring runs. Fawad Alam hasn't done much though, but he had that spot. Who else? What do you think? Last time Pakistan played Test cricket, Fawad Alam was in the squad, so was Azhar Ali, Salman Ali Agha. Salman hasn't had a good season. Fawad Alam, not by his usual high standards. He hasn't produced as many runs as he normally does. It really will boil down to Azhar Ali and Saud Shakil. They both got 300s each. Huge appeal. He's given it out. Big wicket, huge wicket. He was setting him up nicely outside the off stump. This one jacked back in right from the line and got that fantastic wicket. This is a top-class fast bowling performance by Mohammad Umar. Nothing less than what he deserved for his perseverance, for his persistence, for his discipline and high-class skills. Jagging back in, slightly fuller length. That forced Azhar to play. He was leaving so well. Umar must be a very, very happy man because he's won an excellent battle against a very, very good player. Well deserved. Yeah, he was setting him up outside the off stump. This one was from the middle. Jack back in. 48 runs he scored. Good fighting inning. Ended with a beautiful delivery. It's 109 for 4 now.
और सेंट्रल पंजाब की बैटिंग की अगर बात की जाए तो मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि अजहर अली और आबिद अली इस वक्त डिपार्ट कर चुके हैं। तैयब ताहिर, कासिम अकरम ज़रूर मौजूद हैं, और अभी अली शाह, आमिर यामीन, फ़हीम अशरफ। लेकिन आज जो विकेट्स गिरी हैं सुबह के सेशन में, 3 विकेट्स हासिल की। ये अबरार ने LBW किया था आबिद अली को, और ये आप देखिए, ये जबरदस्त कैच लिया यहाँ पर एक यंगस्टर ने, और ये वो विकेट थी जिसकी तलाश थी उमर को। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा, और इस पर बात करेंगे मेरे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। मीर हमजा 1 विकेट हासिल की, मोहम्मद उमर ने बहुत बड़ी विकेट हासिल की, अजहर अली की, और इब्रार ने 2 विकेट्स हासिल की। 109 पे 4। अबरार बहुत ही ज़बरदस्त टच में हैं थ्रू द टूर्नामेंट। अब तक 30 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला था इस सुबह में। और जिस तरह से साद और आबिद अली की विकेट्स हासिल की, सिंध की टीम इस मैच में दोबारा वापस आते हुए। जब बिग विकेट मिली मोहम्मद उमर की, जो बात कर रहे थे हम, कि बहुत ही आला बॉलिंग की है उन्होंने। पहला स्पेल जो किया है बहुत ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल किया है, उसमें उसको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन दोबारा जब आए दूसरे स्पेल के लिए तो उन्होंने आके विकेट ली, और वो भी बड़ी विकेट अजहर अली की। इब्रार को बहुत अच्छा कह रहे थे अजहर अली, लेकिन फास्ट बॉलर पे जिस लेंथ पे उमर ने बॉल की, वहाँ से डिस्टर्बेंस हो रही है। हम सुबह से देख रहे हैं, मीर हमजा ने भी 2-3 अपील्स की हैं, और वहाँ से बॉल जो है वो थोड़ा सा वेरी हो रहा है। जिस लाइन और लेंथ को काबू में रखा उमर ने आज सुबह, पहले सेशन में भी हमने इस पर बात की। ओ, बहुत अच्छी गेंद इस दफा, ब्यूटीफुली बोल्ड। एक्सीलेंट बॉलिंग, ग्रेट बॉलिंग मैं कहूँगा। पीछे लेके गए और टर्न किया, बैट्समैन को फोर्स किया बैकफुट खेलने के लिए, और बॉल को टर्न किया। यहाँ से सीधा भी करते हैं, इस बार लेफ्ट, इस बार बैकफुट पे मैनेज किया तैयब ताहिर ने 1 रन के लिए। बहुत ही अच्छा ओवर अबरार का, 110 पर 4। पंजाब की टीम इस वक्त 4 विकेट के नुकसान पे 110 रन, थोड़ी सी मुश्किलात की तरफ जाती हुई। सेंट्रल पंजाब मोहम्मद उमर अपनी जादुई बॉलिंग जारी रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया यासिर। जिस तरह मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब हम तस्करा कर रहे थे, सीम पोजीशन इनकी देखिए, इनका रन अप, लाइन और लेंथ, बहुत ही टारगेटेड, काम, कलेक्टेड, और एग्रेशन भी है फास्ट बॉलर्स वाला। तैयब ताहिर उनका सामना करेंगे। 2 स्लिप्स, 1 गली, साइम अयूब आज से वो कैच नहीं थाम पाए थे आबिद अली का, लेकिन उनको अबरार ने फिर पवेलियन वापस भेज दिया, LBW किया। वेल बोल्ड, ओवर पिच डिलीवरी, फुल पिच। या ये विकेट है अजहर अली की। लेंथ बॉल पड़ के अंदर आया विकेट्स की तरफ, विकेट्स को हिट कर रहा था। अच्छा डिसीजन इमरान जावेद का, इम्पैक्ट इन लाइन था, और विकेट्स डेफिनेटली हिटिंग।
बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग की है अब तक। 13.1 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। और एक दफा फिर आउटसाइड एज हुआ। अच्छा खेले सॉफ्ट हैंड से, एक बार फिर अच्छी लेंथ पे बॉल किया मोहम्मद उमर ने, बैट्समैन को आगे खेलने पे मजबूर किया। यहां से बॉल अंदर लेके आए थे अजहर को, थोड़ा सा फुल डिलीवरी थी ये। अजहर की बहुत बड़ी विकेट हासिल की सिंध ने, और इस वक्त गेम में इनकी जो एक और बहुत ही अच्छी गेंद उमर की पड़ने के बाद अंदर आई। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। ये अपनी ग्रिप को मजबूत करते जा रहे हैं सिंध, और उनके पास एक जो बहुत बड़ी लग्जरी है वो इब्रार अहमद की सूरत में सेकंड एंड दूसरे एंड से, तो ये दोनों एंड से प्रेशर डालते हैं। फिर बॉलर्स को बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस मिलता है जो दूसरे एंड वाले बॉलर हैं। पार्टनरशिप अच्छी बनती है। पहले हम देखें इब्रार और आसिफ महमूद की पार्टनरशिप बनी पिछले मैच में, मोहम्मद उमर के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप बनी इनकी। इस मैच में फिर एक पार्टनरशिप बनती जा रही है, नज़र आ रही है। तो अच्छा एक बॉलिंग यूनिट बन गया सिंध। और आज सुबह के सेशन में जो प्लान आउट किया था सिंध की टीम ने, उस प्लान को अच्छा एग्जीक्यूट किया। बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मीर हमजा जो कि कप्तानी कर रहे हैं इस मैच में, और इस दफा ओवर पिच डिलीवरी और इसको दिलकश अंदाज में खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। 4 रन्स। खूबसूरत शॉट तैयब ताहिर की। जो हम बात करते हैं कि शॉट में एक फ्लिक होती है रिस्ट में, तो वो इधर भी नज़र आई। अगर आप देखें रिस्टी तो है लेकिन ये फुल फेस ऑफ द बैट था। ब्यूटीफुल। तैयब ताहिर मैन इन फॉर्म, 150 कर चुके हैं यहाँ पे। वो लास्ट गेम जो खेले थे बहुत अच्छी फॉर्म में, और इनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट है। और कॉट बिहाइंड की अपील, और ये अपनी उंगली फजा में बुलंद की। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। इस दफा गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली। शानदार बॉलिंग, और तैयब ताहिर को अब जाना पड़ेगा। जी हाँ, एक्सीलेंट बॉलिंग मोहम्मद उमर की। जैसे कि बात कर रहे थे, इस बॉल से पहले बाउंड्री हासिल की थी, लेकिन इस बॉल थोड़ी सी लेंथ को पीछे किया, बॉल बाहर की तरफ निकला। तैयब ताहिर हैंग हुए, ही हैड नो क्लू, जाने देते इस बॉल को, लेकिन मजबूर किया इस लेंथ ने उनको खेलने पे। तैयब ताहिर पवेलियन लौट गए 10 रन बना के 114 पे 5 सेंट्रल पंजाब। यह मैच एक सनसनीखेज तरफ जा रहा है। ये हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे एक मेंबर अली यूनिस वो ये कह रहे हैं कि 3 दिन में मैच ख़त्म होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है 4थे दिन पे जाएगा। आपका क्या ख्याल है? फहीम अशरफ बैटिंग के लिए आ चुके हैं, और फहीम अशरफ भी बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। बहुत ही कमाल और लाजवाब बॉलिंग की अब तक उमर ने। फहीम अशरफ का रिकॉर्ड देखिए, 2 सेंचुरी स्कोर किए हैं। 28.8 सिफर की औसत है।
यहाँ काफ़ी सारे सवालात जो हैं उनसे पूछे जाएंगे फ़हीम अशरफ से। इस वक्त जो बॉलिंग हो रही है, एक तरफ से इब्रार, एक तरफ से मोहम्मद उमर। एक बार फिर आपको विकेट दिखाते हैं, ये बैकफुट पे गए और बड़ा टाइनी एज हुआ है लगता है। वेल बोल्ड इब्रार, राइट ऑन मनी। यहां से आप देखिए एक हल्की सी डिफ्लेक्शन नजर आई। खूबसूरत शॉट, बहुत ही अच्छी शॉट कासिम अकरम की। उन्होंने अपने आप को अनाउंस किया क्रीज पे। पहली बाउंड्री थोड़ी सी लूज डिलीवरी थी, आगे घिरी हुई थी, और अच्छे हाथों का इस्तेमाल और कदमों का इस्तेमाल। अपने हैंड्स थ्रो किए शॉट पे और नीचे खिलाया इस बॉल को कासिम अकरम ने। 4 रन। अच्छा शॉट ऑफ द मार्क। अच्छा पुरएतमाद आगाज़ किया है कासिम अकरम ने, स्पेशली अबरार के अगेंस्ट जो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है अबरार ने। आबिद अली और साद की 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल की। एक दफ़ा फिर इसको ड्राइव किया। थोड़ा आगे गिर रहा है बॉल उनका, लेकिन मीर हमजा वाकई मुतमईन कैप्टन है इस वक्त। काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि विकेट दोबारा आएगी। एक दफ़ा फिर ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 118 पे 5। सेंट्रल पंजाब की बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा, और आमिर यमीन भी पैडअप हैं। टीम इस वक्त डेफिनेटली स्ट्रगल कर रही है क्योंकि 5 विकेट्स गिर चुकी हैं, और मोहम्मद उमर जो हैं वो इस वक्त लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। बैटर्स को, चाहे वो अजहर अली हों, आबिद अली हों, किसी भी बैटर को जमकर नहीं खेलने दिया। और जिस तरह से विकेट हासिल की अजहर अली की और उसके बाद तैयब ताहिर की, लाजवाब। और 3 स्लिप्स के साथ फ़हीम अशरफ, 3 स्लिप गली, और ऑलमोस्ट ये कैच हो जाता। आई थिंक थोड़ा सा आगे गिरा ये गेंद। फवाद आलम वहां पर मौजूद थे। जी पीछे का बॉल था, बैकफुट पे जाके उसे कवर की जानिब खेलना चाहते थे। लकी रहे कि एज जो है वो हाथ में नहीं गया, थिक एज, और कैरी नहीं हुआ। फवाद आलम आगे गिर गया फवाद से। अच्छे फील्डर है फवाद, आउटफील्डर बहुत अच्छे हैं, बॉल जाने नहीं देते, पूरा एफर्ट करते हैं। और कासिम अकरम और सामना करेंगे उमर का। और एक और ही बहुत अच्छी गेंद, और इसको बहुत अच्छा जज किया कासिम ने, इसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। ये वो लाइन और लेंथ है जहां से तैयब को भी डिस्टर्ब किया था और तैयब की विकेट भी हासिल की थी उमर ने। यासिर जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, उमर दोनों ही जानिब स्विंग कर रहे हैं। जिस तरह मेन बैटर्स स्ट्रगल किए, आपका क्या ख्याल है कि जो बाकी आने वाले बैटर्स हैं उनके लिए भी मुश्किलात होंगी अगेंस्ट उमर स्पेशली?
या उमर की मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, उमर की सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी ये है कि जिस जहाँ पे रन्स हो रहे हों ये फ़ौरन इकोनॉमी की तरफ आ जाते हैं, एकदम इकोनॉमिकल हो जाते हैं। और जहाँ पे विकेट्स का मतलब ये ऐसे बॉलर नहीं है कि लालच करें विकेट लेने के लिए, बड़े सब्र और तहम्मुल से अपनी लाइन लेंथ पे परसिस्टेंटली बॉल करते हैं। मतलब इनका जो मैंने देखा है जो माइंड सेट है वो बिल्कुल जिस तरह साउथ अफ्रीकन बॉलर्स एक टाइम में हम खेलते थे तो वो एक ही जगह पे बॉल करते रहते थे और रन्स भी रोकते हैं। और जहाँ पे थोड़ा सा अब दिन को देखें, अब इनको समझ आ रही है कि पिच थोड़ी हेल्प कर रही है तो अपनी लेंथ को आगे पीछे कर रहे हैं, क्वेश्चंस आस्क कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इस तरह के बॉलर्स कम देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारे पास सारे ऐसे बॉलर्स आते हैं जो विकेट टेकर्स होते हैं, जो आते हैं अटैक करते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं कि जो लेकिन ये प्लान करते हैं, पूरा प्लान करके और उसके बाद जो है ये विकेट्स लेते हैं। सब्र बहुत है इनमें, मतलब एज ए बॉलर मैंने देखा है इनमें बहुत ज़्यादा सब्र है, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा। देखें अभी भी इनके अगर आप देखें 15वां ओवर कर रहे हैं, 42 रन दिए सिर्फ और 2 विकेट्स भी हासिल की हैं। एक दफ़ा फिर कासिम अकरम का अच्छा फैसला, इसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। और सेंट्रल पंजाब को अभी भी 69 रन दरकार हैं कि वो खसारे को कम कर सकें, मुकम्मल कर सकें। बहुत अच्छा छोड़ा, इससे पहले वाला बॉल जो है वो अंदर आया और ये भी बाहर निकला। देखिए सीम कर रहे हैं बॉल को, ये पिच से हेल्प ले रहे हैं अब, क्योंकि हवा में तो स्विंग एक डिफरेंट चीज़ है लेकिन पिच से हेल्प लेना एक डिफरेंट चीज़ है। मीर हमज़ा को भी मदद मिल रही थी इस एंड से, काफ़ी कुछ है फास्ट बॉलर्स के लिए। और ये इस वक्त आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सॉरी पोस्ट लंच सेशन चल, मतलब अगर आप नॉर्मल डेज को देखें तो लंच का टाइम है। अभी ये आधे पौने घंटे बाद भी अगर पिच इस तरह करती हो तो इट मीन्स कि ये थ्रू आउट इस तरह खेलेगी पिच। 119 पे 5। जी हाँ, कोई ज़्यादा खातिर खा कारकर्दगी अब तक सेंट्रल पंजाब के बैटर्स नहीं दिखा सके। आबिद अली और अज़हर अली ने ज़रूर इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश की, नाकाम रहे। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं, अली शान, आमिर यामीन, अहमद दानियाल, मोहम्मद अली, 119 पर 5। और बहुत अच्छा आगाज़ एक दफ़ा फिर अबरार का, अपना 13वां ओवर का आगाज़ किया है, सिर्फ 22 रन दिए। फ़हीम अशरफ के ऊपर अब एक इनिंग ड्यू है यहाँ पर और इस वक्त सेंट्रल पंजाब लुक फॉरवर्ड करेगी कि ये बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। फ़हीम अशरफ बिल्कुल टेस्ट मैचेस में एक्सीलेंट इनकी परफॉर्मेंस रही और सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये T20 के प्रोडक्ट हैं लेकिन इसकी वजह ये है कि नेशनल बैंक से बहुत अरसा क्रिकेट खेले हैं, बड़ी लंबी क्रिकेट है। हमारे अगेंस्ट भी, मेरे अगेंस्ट काफ़ी मैचेस खेले हैं शुरू में जब आए थे नए नए। तो फ़हीम अशरफ के हाथ में नया बॉल होता है तो मैं समझता है फास्ट बॉलर है, तो बाद में पता चले मीडियम पेसर लेकिन नहीं, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉलर और वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, मैं इसे कहूँगा ऑल राउंड। और थोड़ा सा ये है कि कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज़ जो इनकी इनिंग्स मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने न्यूजीलैंड में खेली है इनिंग्स वो रिमार्केबल हैं, जहाँ पे पाकिस्तान को ज़रूरत थी और पाकिस्तान के 5 आउट थे, काफ़ी कम रनों पे 4 आउट थे, तो इन्होंने वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली। और उस वक्त ये लग रहा था कि ये एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में ये अपनी जगह बनाएंगे और एक हमें एक ऑलराउंडर की जो कमी नज़र आ रही है अज़हर महमूद, अज़हर भाई और रज़ाक के बाद, वो उसको फिल करते नज़र आएंगे। तो अभी भी फ़हीम अशरफ ने इसको एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया।
जिस तरह आप बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड में अच्छा खेले, इस तरह साउथ अफ्रीका की जो होम सीरीज थी उसमें बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग, और इस दफ़ा फील्डर ने, उमर वहाँ पर थे, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा उमर की जानिब से, गुड ऑलराउंड क्रिकेट। कासिम अकरम अच्छा खेले इस बार, 2 रन। अच्छी बैटिंग कासिम अकरम की, जब से आए हैं अच्छा पॉजिटिव खेल रहे हैं। 123 पे 5। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की परफेक्ट कंडीशंस, परफेक्ट सेटिंग्स और मौसम बहुत शानदार, ख़ासतौर पर इस लंबी तर्ज की क्रिकेट के लिए बेहतरीन मौसम है। और यहाँ पर सेंट्रल पंजाब की टीम स्ट्रगल कर रही है। 123 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हैं। आबिद अली इस वक्त ज़रूर सोच रहे होंगे, उनके साथ साथ साद हैं जो कैप्टन हैं। और बॉलिंग में तब्दीली, एक दफ़ा फिर गुलाम मुदस्सिर को मीडिया एंड से लाने का फैसला किया है। ये फिगर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, 7 ओवर 12 रन, लेकिन विकेट्स का जो कॉलम है वो मिसिंग है। अच्छा बॉल किया इन्होंने भी, नया बॉल। लेट्स सी, इट्स हिज टर्न नाउ। बॉल हो रहा है लेंथ से, तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं। नो बॉल इज द कॉल, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओवर स्टेपिंग गुलाम मुदस्सिर के साथ। आज सुबह इनके पहले स्पेल में भी हमने देखा था। इसके ऊपर काम करना होगा गुलाम मुदस्सिर को। पहला बॉल ही आके नो बॉल, और काफ़ी बड़ा नो बॉल, और थोड़ा सा अपना रनअप ठीक करना होगा। कासिम अकरम बहुत पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। पिछले ओवर में भी हमने देखा बहुत अच्छी बैटिंग की अगेंस्ट अब्रार। कासिम अकरम की अगर बात करें तो कासिम अकरम बड़े अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर हैं। ठीक है, ऐसे प्लेयर हैं कि जो आके अपने शॉट्स भी खेलते हैं और एकदम अपना इम्पैक्ट शो करते हैं कि ही इज़ अ गुड प्लेयर। और पाथवे प्रोग्राम जो है पीसीबी का, ये उस पाथवे जो प्लान है उसके क्रिकेटर हैं। लाइक पहले ये अंडर 19, फिर अंडर 19 रीजन, फिर पाकिस्तान अंडर 19, फिर कैप्टन पाकिस्तान अंडर 19, फिर सेंट्रल पंजाब ने इन्हें T20 में कप्तानी भी सौंपी। इवन शुएब मलिक इनकी कप्तानी में खेले, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो इनका बहुत अच्छा है। अब जो इनकी एग्जीक्यूशन है वो ये है कि अब इन्होंने अपने आप को अप्लाई करना है और अपने आप को इन्होंने प्रूव करना है कि ये 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलेगा इनको। ओ बहुत ही शानदार राइजिंग डिलीवरी। इस दफा मुदस्सिर ने बहुत बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंद की। कासिम अकरम के लिए सरप्राइजिंग था, ये लकी रहे। ये वो लेंथ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ से मीर हमजा और मोहम्मद उमर आज पूरा सुबह से बॉल कर रहे हैं, और जहाँ से इनका बॉल राइज हुआ है क्योंकि इनके पास पेस है, जो एक्स्ट्रा माइल्स हैं इनके पास, उसकी वजह से ये बॉल राइज हुआ। एक्सीलेंट।
कासिम अकरम पूरी तरह बीट हुए। कासिम अकरम ने अब तक 450 स्कोर किए हैं और अपने फर्स्ट क्लास करियर में सेंचुरी अब तक नहीं बनाई। एक दफा फिर बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, एंगल यूज कर रहे हैं गुलाम मुदस्सिर, दोनों दफा बीट किया, इसको रिकॉग्नाइज भी किया कासिम अकरम ने। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा। ये देखिए वो बिल्कुल इसको बैकफुट पर गए और बीट हो गए। शानदार बॉलिंग इस दफा, प्रॉपर एंगल यूज किया। तो गुलाम मुदस्सिर इज ऑन फायर। कैप्टन मीर हमजा उनके साथ और उनको हौसला भी दे रहे हैं और साथ साथ सजेशंस भी दे रहे हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है कि जब कैप्टन आपको अप्रिशिएट करे। इस दफा चूक गए डाउन द लेग साइड, फाइन लेग पर इसको खेला कासिम अकरम ने, 1 रन बना। जी हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। कंडीशंस इस वक्त फास्ट बॉलर के लिए इससे अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं जहाँ से बॉल थोड़ा सा सीम होता है और ज़्यादा स्विंग सीम नहीं होता है, सिर्फ जगह पे बॉल फेंकना है लाके। इस दफ़ा देखें ऑफ लाइन हुए और इजीली उन्होंने मैनेज किया 1 रन। बैट्समैन का टेस्ट है, रियली टेस्ट है। हमने अजहर अली को देखा, बड़े बैट्समैन है, 95 टेस्ट मैचेस भी खेले, लेकिन यहाँ पे वो भी डिसीव हुए इस लेंथ पे। तो इट्स नॉट इजी लैंड टू प्ले। फहीम अशरफ को 2 स्लिप्स और 1 गली के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंद इस दफा फिर, और गुलाम मुदस्सिर खुद भी यकीन नहीं पा रहे कि ये कैसे बच गए फहीम अशरफ। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा यासिर। या सीम बॉलिंग एट इट्स बेस्ट। जो हम पिच की बात करते हैं, घास वाला पिच, ये है घास वाला पिच। 125 पे 5, 50 ओवर्स। शाबाश शाबाश शाबाश। कासिम अकरम ने स्पिनर्स और स्पेशली अबरार के अगेंस्ट बहुत अच्छा ऑपरेट किया, अब तक बहुत अच्छा खेले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक हमने जाहिद महमूद को बॉलिंग करते नहीं देखा। 51वां ओवर है, 50 ओवर्स हो गए हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि सिंध की टीम इस वक्त बॉलिंग यूनिट उनका कितना अच्छा काम कर रहा है। जो एक अच्छे पाए के बॉलर हैं, बट अभी तक उनकी बारी नहीं आई। वजह यही है कि इब्रार, जिन्होंने 30 विकेटें ले ली हैं क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी में, लीडिंग विकेट टेकर, बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं वो बैट्समैनों से। अच्छा कॉन्टेस्ट है। एक जानिब सेंट्रल पंजाब की एक मजबूत बैटिंग लाइनअप, दूसरी जानिब बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है सिंध की। और क्योंकि इस मैच में सऊद शकील नहीं है, जाहिद महमूद इस वक्त लगता है कि रेस्ट कर रहे हैं और इसको मिड विकेट की जानिब खेला पुरएतमाद तरीके से कासिम अकरम ने। सो जी हाँ, जाहिद महमूद को अब तक नहीं आजमाया मीर हमजा ने और रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगले सेशन में, और इस दफ़ा इसको स्वीप किया और फील्डर इस बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। ये 4 रन्स मिलेंगे कासिम अकरम को यहाँ पर। मिस फील्डिंग हुई, देखना होगा फील्डर को। यार 5 नंबर थे, 129 पे 5।
Magnificent. That's the only thing I can think of at the moment after looking Ghulam-e-Mudassir's spell. Just been magnificent, simple as that. He's hit the right areas, he's hit the right line and length. Just been unlucky that he hasn't found that outside edge of Fahim Ashraf. More than one occasion. It's just been brilliant. And who would have had thought, Shah Faisal, that Central Punjab would be struggling? 129 for 5. Yeah, they're really struggling with the top half gone. But the bowling has been sensational. There's been significant sieve movement as well on this day too, on that first session. Yeah, it seems like everybody was prepared for Abrar. They nearly forgot that there are 3 seamers also in Sindh side, and they're bowling beautifully. Especially this man, Ghulam-e-Mudassir, Mohammad Umar, Mir Hamza, all of them. They've done a good job. Yeah, and Abrar has made their job easier because they only need to worry about one end. And Abrar has tied up the other end with threat as well. But this media center end, I mean, the bowler's been getting significant seam movement. This is what we haven't seen in this season, especially on day 2. Nicely driven. Absolutely. And imagine we've forgotten about there's a test cricketer, leg spinner in the side, who has not been used. That has been the quality of this bowling lineup. That Mir Hamza hasn't, yeah, international cricket, I'm sorry to say, but he hasn't used him. Yeah, and didn't feel the need for it. At one stage when Tayyab and Azhar Ali was playing, and they were playing Abrar quite nicely, I thought probably they could have given a few overs to Zahid. But once those two were dismissed, Sindh has got a stranglehold. Fantastic use of the wrist. Beautifully done. Through the gap. 1, 2, 4. Good result for Fahim Ashraf. The line wasn't that bad. Probably he took it off of middle and off. Fahim Ashraf, look at that. The angle was working in his favor. Took a risk basically, but his balance was so good, and then that wrist work really came into play. This outfield is very quick. Fahim is an attractive player. A wicket like this where he can play his back foot strokes as well, which is his strength. He could really be a handy customer here for Central Punjab. You said he's a good back foot player, then it still reminds me of Perth. Nice, that is fantastic. Beautifully done by Fahim Ashraf. This time through offside. Wonderful. That is a spanking cut shot. He really got on top of it and give it a fair whack. Look at that, the footwork, and that bat came down, and the sound that it came out of his bat, absolutely stunning. Talking about a cut shot, as good as it gets. Take him to Perth. That's all we can think of. Somebody who has this ability to play that beautifully on the back foot. Somebody who can play good at in square area, both sides, on and off. He missed out. So did Pakistan. Searching for the ball. Yeah, that ball has gone through all this netting. It was fearsomely struck. With all the power that he can use, and he really smashed it. But ball has been retrieved. Look at that. I actually watched. There is some netting there. It just went right through that into the stands. Steady this time. It's 137 for 5. Oh, it's getting interesting.
188 plays, 137 at the moment for the loss of 5 wickets. Central Punjab trailing by 51 runs. They're up against some fiery bowling of Sindh. We've got a game in our hands. A good one. Good test also for Qasim Akram, the youngster. He's very, very promising. And that situation will really challenge him, his technique and his temperament. Absolutely. I think this is a good battle. Two youngsters looking for a place in Pakistan side against each other. In fact, 3 of them. Fahima is also looking for a comeback. Good contest. Faraz Ali moving very swiftly. You're talking about Qasim Akram. His progression has been really good last couple of seasons. And these are the type of opportunities. And if he contributes here, he will make the headlines. Fame's potencies against pace, and especially off the back foot. Abrar's skill will also challenge him as well. There's a slight question mark about his ability to play spin. Pitching outside. They've kept this ball in very good shape. That googly outside the leg stump, really for him, wasn't sure. It looks like he wants to persist with that line of outside the leg stump. Just challenge for him to go against the spin. Good run. Very good cricket from Fahim Ashraf. Still trailing by 49 runs. After this single, just pushed it towards onside, which is not in the usual place. It's just in the middle. It's 139 for 5. This combination of Abrar and Umar has really worked well, but all these bowlers have bowled beautifully. Setting up very nicely this game, Shah Faisal. Where do you think it's heading? Central Punjab trailing by 49 runs with 5 wickets in hand. This is just the second day. 2 days after to go. Although this is an extended session, it's going to go till 1, and then the last session will go from 2 to 5. Interesting battle. Central Punjab, what do you think? Very, very interesting battle. Because this game, day 2 and day 3 normally are the best days for batting here. And if Central Punjab gets bowled out today, just a single sweepers back there. Central Punjab gets bowled out today. Probably Sindh would have some of the best conditions to bat on this pitch. And even if they fall behind on the first innings, they can make a really challenging total. And that will challenge Central Punjab on day 4 if we look that far ahead. You really think conditions are good to bat? It's been seaming since morning. It's been spinning. Do you really think so? Central Punjab doesn't have a spinner. Yeah, but the seamers, I think, I mean, the way Ghulam Mudassar and Mohammad Umar has bowled, I think that would have given Central Punjab bowlers much hope that even on the second day or the third day it will seam, provided, yeah, that's with the angle, beautifully bowled, provided you bowl in the right areas. You do. That's loose from Qasim Akram though. But you know, we've noticed, Ali, we've seen 5 rounds here. What we've noticed is that the pace and bounce lasts for generally
the first day as we watch a loose stroke angling away, and then a bit of the second day. But since we're heading into winter, the cooler weather, so that freshness in the grass may last a little longer, probably till the end of day 2. But then day 3 we're sure to lose some pace from the pitch, and some of that help. That means that batting may just get easier, and it may not just be a tall scoring game. 180 plays 180 is really tight at the moment. Yeah, you're the local guy, I trust you. And you're so good with those pitch reports, you understand it well. So yes, I'll go with whatever you say. And talking about the pitch, when we had a closer look in the morning, there are a few cracks opening up, which is unusual there, because this wicket doesn't break a lot. And I'm just intriguing to see if what happened today, because that seam movement could be the reason of some of those cracks opening up. Yeah, we usually don't see that when there's so much grass on the pitch. We hardly see those cracks. Nicely clipped. That is fantastic. That is superb by Qasim Akram. Leg side-ish line. It's dealt with some authority. 4 runs. No ball as well. Central Punjab's got to do that. They've got to put the bad balls away. Runs have been at a premium since bowling has been so consistent. But this young man, Qasim Akram, good enough to put the bad ball away. Big no ball at the same time. But look at the wrist work there. Qasim Akram is a very elegant player to watch, and a very proactive one. In a low scoring match like this, a little contribution can be vitally important. And talking about Ghulam Mudassir's problem with the no balls, I've just realized that whenever he bowls a no ball, it's a big one. It's not that he's close to the line, he's always way far. Needs a bit of work there. We noticed this in the morning as well with his run-up. There's nothing wrong with his run-up. Probably when he goes for that effort delivery, he overstretches. 3 no balls already. Something that we've seen generally. I haven't seen him closely enough to say conclusively about him. There's plenty of bowlers who don't really care for bowling no balls in practice. And probably they carry on that habit into the games as well. Something that the coaches would need to just keep an eye on. There's something again bothering them at long on position. There's some camera. There's something shiny maybe there. Just in the eye line of the batter. The chair behind the, right next to the cameraman. Zahid Mahmood went and pushed that chair away, so it's not in the eye line of the batter, or the glare that's coming off of it. Sun is exactly at the opposite angle. It's nicely guided away towards onside. And runaways for a boundary. Second one of the over for Qasim Akram. Once again, erring in line. This time the length was back, but Qasim Akram equally good off the back foot, just that flick of the hip. Once again, good use of the crease, good roll of the wrist. These are valuable runs. 149 for 5. Yet there's a long debate between Mir Hamza and Sarfraz Ahmed, the current captain and the former captain, maybe discussing a few ideas, what's going to happen, what we should do, maybe bring in Zahid Mahmood from this end, because at the moment Abrar is doing a good job, but runs are leaking. I just have a feeling couple of boundaries in the last over. Fahim Ashraf stroke 1, couple of 1 in the previous over also, because they don't have many runs to play around. Central Punjab, they look confident at the moment. They're smiling, they're happy. But they must remember they have to bat last. And the situation they are in, the still trail by 39, is not that comfortable. They got to bring their A game.
Brought 2 for 32. Just a little bit of invariable bounce, but generally he's been more potent against the right-handers. Changing the angle now. Oh, that was in the air for a little bit. Fahim Ashraf looks determined. Yeah, they've got that fielder at cover. It's not regulation cover, just a few yards in. Good run. Rana Fahim Ashraf is looking good. If you look at the situation, 150 now for 5. They're just away 38 runs. So it means that Central Punjab, you'd think, are in a better position. But because of that constant threat from this man, with the ability to really wipe out the tail quite quickly, that is, these two will be thinking about it. And extra pressure on them not to give away the start that they've already had if they want their team to progress. Oh, that was close. Just one run. Good work by Ghulam Mudassir. He's living dangerously against Abrar, Qasim Akram. That's that quicker googly with a shorter trajectory. Inside edge, pushing hard hands. Not really ideal against spin. $151 for 5. Looks like it's not going to be a tall scoring game. 37 runs. Seems a long way away at the moment, the way the bowling is happening at the moment. Those two boundaries meant that Ghulam Mudassir will be replaced at the bowling crease. Is it for us? I bet it is. Surprise, surprise. He's going to do the same job as the captain of Central Punjab, Mohammad Saad, did. So they're persisting with seam. They're not using Zahid Mahmood. 21 wickets to him. He can bowl. 4 for 27 is best. Very strong breeze as well. The westerly probably will help him with his out swingers. Gentle away swingers. Something straight away. Not from that length, no. Pretty much similar to what Saim Ayub had from Saad. Saim hit it straight back to the bowler. And Qasim was also surprised. Could easily have gone back to Faraz. Yeah, it hurts the egos also. Gentle medium pacer. Bowling at 110, 15 miles per hour. They have this abilities of picking up wickets. We saw that. Mohammad Saad did it almost every time he does that. This is Faraz's time now. If he can get a wicket here, that will be very handy for Sindh side. It's already a good session for Sindh. They took 4 wickets. Yeah, that the mind relaxes a little bit when you see these irregular bowlers because you've been concentrating so hard against quality bowling. That's the indecision already. Qasim Akram, who was looking so good, and this over, he's just not his usual self. I never liked those in my playing days also. These gentle medium bowlers and who can swing, just seam in. Never liked them. They don't have much pace, but they've got that length and the line. This one is punished. Not the best of the ways, but he will get those 4 runs, definitely. Short and wide at this space, asking for trouble. One thing you can do on this Pindi pitch is play the horizontal bat strokes. And like Ali said, not the perfect execution, probably the bottom edge of the bat, but because of the weight on offer, he was able to throw his hands at it. Handy 4 runs. Yeah, Sindh must realize that even a 50-run lead for Central Punjab, it would be very difficult. We have seen that in the first inning. They've missed Shaul Shakil. They don't have much stability in the middle orders.
Quaid-e-Azam is struggling for runs. Sarfaraz Ahmed is struggling for runs. That puts a lot of pressure on Saim Ayub and Umair bin Yusuf, the three, and Saad Khan, the three youngsters. Also Faraz, the four youngsters. So they must realize it. 155 for 5. Yeah, no Zahid Mahmood. They've bowled Faraz Ali even. Couple of wickets for Abrar, couple of for Mohammad Umar, one for Mir Hamza. As Abrar will continue. As a bowler, as a leg spinner, what Zahid Mahmood must be feeling? Dejected? Sad? Oh, that's edged. Gone past the slip fielder. Might not have the legs to go down, or it does, it does, it does. 4 runs for Fahim Ashraf. Runs have started to flow for Central Punjab. This partnership is growing. 45 of just 61. These two are attacking players. And although Abrar clearly deceived Fahim Ashraf on that googly, he's not able to pick him. But Abrar's pace was enough to take that ball over the fence. Quaid-e-Azam. Is he standing too tight? Have a close look. Just noticed, not before that edge went, but now he's just on the left foot or left shoulder of the wicketkeeper. Not much. Look at that. Yeah, because Abrar is bowling those quick deliveries. Every time the edge is gonna go towards that area. Squarer, rather. Yeah, but that googly will just take it away from Fawad. Probably can step away a little bit. Bowl him! Wonderful! That is excellent. That is fantastic from Abrar. He's been setting him up outside the off stump. This one just beaten by a pace, and Fahim Ashraf's defense also. Yeah, he was bowling those quick sliders and quick googlies. This one, it is a loopy one. Look at that. Delicious flight on that. Fahim played inside the line. It just straightened just a tiny bit, just enough to clip the off stump. This is magnificent bowling from Abrar. And Fahim Ashraf walks back for 17. Central Punjab 159 for 6. Amir Yamin walks in. He's got a job to do now. As he did with the ball, he has to deliver with the bat. But he's up against a superb bowler, Abrar Ahmed. I just love him, the way he's bowling. What do you think? The first delivery, googly to start off things? Leg spinner. Ah, he's not giving up any time. He's just smashed it towards onside. That is some way to start off your inning. Amir Yamin with the boundary. He's came out with intent. He's come out with a mission. He's not going to hang around. He's seen his other players do that. Just a big stride down the wicket. And that slog sweep out in front. Immediate change of field as well. That mid-wicket has dropped back. Lunch or no lunch? Amir Yamin is going to play his strokes. He's got 400s to his name. He can bat. He can bat. The best of 225? That is excellent. Really excellent. Look at that. Look, we'll have to see this approach. Is he going to go after him? That's the question. Yep, it looks positive. The intent is there.
What about the wicket? Rana Fahim Ashraf plays so well, but undone by this beautiful setup. Beautiful. Look at that. Just clipped the off bail. This is sensational delivery. And like Ali said, he was well set and he was coping very nicely to produce a delivery and dislodge a player like Rana Fahim Ashraf. This is superb. What we did miss out on is there's a little bit of argy-bargy between Abrar and Amir Yamin. I like it. I like this aggression. I like this contest. Had a bit of spice, no harm. Amir Yamin is a very underrated cricketer at this level. Definitely. Because he's an absolute superstar. He gets runs, he gets wickets. Definitely. That 5 on the first day where conditions were good for all the bowlers, but he was the one who stood out. And we've seen him score handy runs here before. So don't count him out just yet. And also, whatever scores he scores at a quick rate, regardless of the format. He plays one way, that is positive. Edged! Oh! I nearly thought that it's an edge. Look at the bounce and carry. I'm sure you're not thinking about Perth here. No way. Don't make me think that. Makes me sad. How encouraging is the bounce? It really excites me to see that kind of bounce. Good cricket. Good cricket. Yeah, you were talking about some heated moments between Amir Yamin and Abrar. That's where it started. Maybe a few words from Abrar, or we can't say. Look at that. It's good. Harry Potter is angry. Well, don't go by his innocent looks. He's the one who just charged into Amir Yamin, got into his space. And then he started all the mouthing or whatever he had to say about Amir Yamin. I thought initially Amir Yamin had pushed him away, but Amir was very quiet. He just walked away from him. He's got a fiery character. That's what I'm saying, not go by his looks. It's good. He's an aggressor. He's a wicket taker. The aggression is natural because he knows he can get Amir Yamin out. Oh, again, some movement for Faraz. Nice, nice. This is some contest. This is some session. I just loved the cricket since morning. What a contest. This is mouth-watering. You cannot keep your eyes off of it. Even Faraz is making it difficult for the batters. 2 is the call. They're not going to get it. Forget about it. Just 1 to end the over. I just can't wait to see that battle between Amir and Abrar. Just give them one more over, please. It's 166 for 6. But Qasim Akram will be on strike. Right. It's Qasim Akram to face Abrar for the last over before lunch. What do we have? Give him a single. Your wish is his command. He's done that. Now you watch this battle. He's got a smile on Abrar's face because now Amir Yamin, with lunch only 5 deliveries away, will he still go after him? Oh yes, he's gonna go after it. No way he's blocking those. After those heated moments, he's gonna go after him. There's a fielder at deep mid wicket now, placed for that slog sweep. I mean, he does that. He attempts one, not in the best of the positions though. But the intention, it was there. Looks like it was premeditated. It was a flatter delivery, shorter. Watch out. 2 is the call. 2, he gets it. Good running.
Yeah, Abrar won't mind the 2. He wants Amir Yamin on strike. It looks like he picked that googly if we have a close look. The way he turned the face of the bat. Good work, Zahid Mahmood. Huge appeal. No, says Asif Yaqub. On the first instinct, it looked like it was sliding down. It didn't straighten enough for umpire Asif Yaqub to make a judgment for Abrar. There you go. Just pitched on, probably middle and leg, and just sliding down. That big stride. Is it off the hand? Is it off the glove? No. It's that sort of cricket at the moment. It's got us all excited here in the commentary box. Sit down. Every ball is an event. Yeah, it was way away from the bat, but the excitement nonetheless. Last ball before lunch. Nicely negotiated. That is some fantastic session. It's been beautiful. Some quality cricket from both sides we have witnessed. Especially the man on your screen, Abrar Ahmed, has bowled beautifully. Some resistance shown by Central Punjab batters, but it's not enough. They've lost 6 wickets, 5 in this session. They just trailed by 19 runs though, but the pressure this man has built has been immense. It's just been incredible to see some quality spin from Abrar Ahmed. Wow, what a session of cricket. Red ball cricket at its very best today. Credit to the pitch as well, the curators. They produced a wonderful surface, a longer session, 42 overs, 121 runs and 5 wickets. The over rate, very, very good at 14. Run scoring was difficult, 2.88. But Sindh had really made a stunning comeback in this game after getting dismissed for a cheap first innings total. And now this game is beautifully poised. I just can't wait to be back after this break because it's some contest. The weather is good, the cricket is excellent, and the scoreboard board is not quite healthy for Central Punjab. 48 runs scored by Azhar Ali, the veteran. 44 runs for Abid Ali, he was struggling. 28 by Qasim Akram is still there, and rest of them have struggled against Abrar and Mohammad Umar. 169 for 6. 1 wicket for Mir Hamza. Ghulam Mudassir, no wickets, but he bowled beautifully. Probably the least of the consistent of Sindh's pacers. That's why he's wicketless, but he did play his part. 2 wickets for Muhammad Umar, consistent as ever. He's bowled a magnificent spell in this morning session, but Abrar really once again will take the headlines. 3 for 46, 18 overs of some fabulous spin bowling. Utilize the conditions. It's been a wonderful session. Some quality cricket we have witnessed from both sides. Azhar Ali and Abid starting off things with a chance in the third slip. Azhar Ali looked so good for his 48 runs. Played all sort of shots, so stickled down the leg side also. He handled the Abrar well, but Abid Ali had no idea. He could not read him from yesterday. Got this big wicket, Abrar Ahmed. And another one straight away. Got that man Saad. Never looked comfortable. Azhar Ali was, well, on the other hand, was on the other page. He looked so good playing on the both sides, onside and offside. Some luck also favouring him. A couple of times ball going towards that leg side, easy pickings. And then this happened. Kept low also, jacked back in. A wonderful spell of bowling by Mohammad Umar, consistently bowling. Tayyib Tahir showed some aggression, but was not for long before Umar undone him outside the off stump, fetching another one. Qasim Akram joined Fahim Ashraf. It looked good for his couple of shots, sweep shots. The runner Fahim Ashraf also was looking so solid and good. He played that square cut. That was an excellent shot. Another one down the leg side was dealt with authority. Ghulam Mudassir has been guilty of bowling towards onside. Faraz was brought in for a couple of overs. And then this over, I think this changed the momentum of the game. It's just the wicket of Rana Fahim Ashraf. Beautiful setup that was outside the off stump. Amir Yamin straight away attacking Abrar. That's the way he's gonna play. It's been a wonderful session of some quality cricket from both sides. We just enjoyed it. I hope you have. And that's how the match stands at the moment. 188 Sindh scored in their first inning.
Amir Yamin with the fifer. In reply, Central Punjab, I would say, are struggling just a little bit. 169, they've lost 6 wickets, 48 the highest scorer, Azhar Ali, and they trail by 19 runs. They've got 4 wickets in hand. It's time for Juma prayer and lunch here in Rawalpindi. We will see you back at 2 o'clock. Till then, take care.
Welcome back once again to this beautiful Rawalpindi Cricket Stadium. This is day 2, Sindh versus Central Punjab. That's how the Central Punjab's first inning stands at the moment. Abid Ali scoring 44 runs. Azhar Ali looked good for his 48 runs. Rest, it's history. Qasim Akram still there on 28 alongside Ali Shan now who's on 8. 169 for 6. 3 wickets for Abrar Ahmed for 46 runs, 2 for Umar, 1 for Mir Hamza. Ghulam Mudassir has bowled well without a wicket though. Just 2 overs for Faraz without a wicket. It was such a wonderful session, the first one, the morning session. Plenty of wickets falling. First one, Abid Ali. It was a good decision, very good decision by Asif Yaqub. It's been Abrar Ahmed all over Central Punjab, taking a couple of wickets. This one a big one, Mohammad Saad. And then Mohammad Umar with this in-swinger to Azhar Ali. Tayyib Tahir has been the man in form, losing his wicket to Mohammad Umar. And this one, probably the best delivery that Abrar has bowled in this season. Fahim Ashraf undone by this wonderful straighter one. Central Punjab trailing by just 19 runs. This is how these 2 innings look like. 188 in the first inning by Sindh. In reply, Central Punjab are a bit struggling. 169 for 6. Qasim Akram, a lot will depend how he plays from here on, because he's the senior member alongside Amir Yamin. He's not out on 28. Amir Yamin has got a job to do. A, he has to score runs. B, he has to stay there with Qasim Akram. It's a little battle going on between Amir Yamin and Abrar. It's really worth watching. It's going to get very interesting. Just don't go anywhere, because this session, it's going to be a very interesting one, because we have seen the ball seam. We've seen the ball spin. 14 overs for him, 35 runs, 1 wicket. Mir Hamza has bowled better than these numbers suggest. A few deliveries really rocked on this surface. It's an amazing, look at the weather, it's just beautiful. Lovely afternoon session, some quality cricket we expect. Just don't miss it. Mir Hamza will start off with 2 slips. Agali, a sweeper, deep point in place. Fielder at mid-wicket. And the remaining are the regular fielders. Like Sahidesh. Loser to start off the session. Mir Hamza, they don't have much time though. Both of teams, in fact. Central Punjab just 19 runs and Sindh needs to get those 4 wickets. We haven't seen this man in action yet. Zahid Mahmood, pretty surprising in my opinion. Even Faraz was bowled, and he was not used even for... This is the 60th over of the inning and we haven't seen him bowl. Pretty surprising, but this session, we might see him in action. Beautifully driven. First round after lunch session. There is a sweeper. Will he cut it off? Yes, he does. It's Faraz doing a bit of work. Couple of runs. In fact, 3 runs taken by this pair. K. Asif, fresh after lunch. And this shot, a dessert for you. Good afternoon, ladies and gentlemen. And the way he started this session, he's been so confident, played so nicely, and well done by the Faraz. Amir Yamin, he has this ability to score quick runs. He's shown us that. And that battle between him and Abrar, it's really worth watching. We saw that just before lunch. They had a few heated words, heated arguments. It's going to make things interesting.
What are they doing there? I thought they were here commentating. Yasir Hamid, Shah Faisal alongside Ghulam Ali, the coach. Pushed at it. 2 is the call. I heard the voice 3. Zaid Mahmood doing the chase. They'll have to settle now. They're coming back for the third. That is good running. Second, third of the over. Well, this time Amir Yamin, it was an over-pitch delivery. And they've taken 3 runs. Now Central Punjab just 13 runs behind. It was didn't time properly, but even then they got some runs, and long chase by Zahid. Change of angles for Mir Hamza. He's going to bowl round the wicket to Qasim Akram. That's a good ploy. We saw that ball is seaming a little bit. With this angle, it might create some issues. Beautifully driven. On the up, straight to the man though. In previous session before the lunch, I was talking about this youngster, Qasim Akram. Got plenty of talent there, technically good. The only thing is that he wants some execution, a proper execution, build in innings. Two is the call again, through the gap. 2 he should get. It's a good start for Central Punjab, looking for runs. Again, Qasim Akram played towards cover. There's a huge gap. And 2 runs taken. Good over for Central Punjab. 177 for 6. What are they talking about? Yasir Hamid? Maybe it's a very intense discussion. He fancies a career in coaching. Maybe it's that, or it's the lunch. It's the food. What are they talking about? Shah Faisal is not speaking, so maybe it's not about the food. Yeah, this is what I was about to say, that Shah Faisal is silent. Might be he's thinking about food. Abrar back into the attack. Bowler Tino was phenomenal. 3 for 46. 3 wickets for him. Big one. Banged in towards that cow corner. We will have to wait for umpire's decision. Is it long enough? No, it is not. 4 runs. That's the battle we were hoping for. The intentions are clear. He's going to go after him. Yeah, we were expecting this contest between Azhar Ali and Abrar, but this time Amir Yamin joins the party. Look at the shot. Oh, pretty much close. 1 bounce over the rope. Azhar Ali and his battle was different. This is going to be a different challenge for Abrar. For the first time, he's been put under pressure because Amir Yamin is looking to go big. He fancies those areas, that cow corner, mid-wicket area. There's a fielder at deep square leg also. What is he going to do? Ow! Sweeps it. 2 is the call again. They will get 2 easily. So leg by is the signal. Yes, the intentions are pretty much clear that they're now for attack. And Amir Yamin got the ability to hit some big and maximums. He's a very good all-rounder, especially in white ball cricket, if you talk about. Shot of 1. That's a bad delivery. It's just hammered through offside. Rocketed onto the back foot. Wonderful shot by Amir Yamin. That is some cricket. That is some positive cricket. Wonderful to see. Yes, it was a loosener from Abrar, and Amir Yamin was quite ready for that shot. So, if you talk about from last couple of overs, the way they have started this attack, it's working and putting pressure back on these bowlers, especially on Abrar.
Nice. He's playing him well. Fetching it from outside the off stump. There's a fielder, just one. So 1 run now behind Central Punjab. He was playing very long way away from the off stump, and he was just chasing that delivery. The scores are level. Anything above now, any score scored now will be a pressure on Sindh. It's 188 for 6. They've looked really positive. Qasim and Amir Yamin, after this launch, all the 2 overs, they've just done that. 18 runs. Done and dusted. They're equal. Yep, the smiles are back. Why not? Because now the pressure is definitely on Sindh. And just that, when the session ended, just 3 or 4 overs before that, they were quite... Pressure on Central Punjab was there. Shorter one. Good energy shown by Mir Hamza. Surprised Amir Yamin. The same intent was from Sindh in last couple of matches. We have observed that they came up, went for the lead, 80, 90, 100 runs, and then put pressure on the opposition, and they got victories as well. Yeah, change of field again from Mir Hamza. There's a deep square leg now going just in the half, not even at the boundary line. He's just there in the half. Interesting change. Yeah, the point you made, it's for the first time that we're seeing Sindh under pressure. They batted for the first time and they struggled, and now they're catching up for Central Punjab, and definitely they're just getting the taste of their own medicine. They've been doing this to other teams. Just get that first inning lead, put the pressure on them. It's happening to them now. Good one, just pitching outside. Well, it was a good delivery, but yes. Amir Yamin went to the back foot. It will be a test of his nerves also. Neil Johnson on your right. Oh, nice. Nicely done. Although there's a fielder placed, but have a look at that. For a flick shot, he fetched it from outside, and those strong wrists coming into play. Like that, like that. Yes, it's a flick shot and use of his wrist. Nicely timed by Amir Yamin. Looks in a very good touch. Played some confident strokes. Pulled handsomely through the gap. There were 2 fielders placed, but no chance for them to get to that. They're dealing in boundaries. That's counter-attack. That is quality cricket from Central Punjab. Yes, it was, the line wasn't good and picked up so nicely. Placement's perfect, execution was okay, and got the boundary. It's just the way Sindh started off this inning.
I mean, the first delivery, if you look at Mir Hamza bowling a loosener, again, nicely driven, but there is sweeper. This is what happens when you're defending a low total. You got to find that balance between attack and defense. That's the problem for Sindh at the moment. We'll continue talking about it. It's 194 for 6. Yeah, I was talking about the way Sindh started off this inning. It was just opposite, both sides. Central were looking to attack, but Sindh, the way Mir Hamza started off, it was a loosener way towards leg side, and that really set up the tone for the coming 3 overs. And they've taken 24 runs of the first 3 overs off in this session. They put the pressure, and that's a good move. And definitely now the pressure is on Sindh. Yes, you're right. The way both of these batters started aggressively, and some loose deliveries from the Brar and Mir Hamza as well, and they've taken full advantage, got some boundaries, playing positively now. Up in the air, away from the fielders. Another boundary. That is some quality cricket. No, that's not a boundary. No, that's not a boundary. For once, I thought it was gone. My God, what is happening to me even? Just lost. Look at that. It was pitched up. I thought it just cleared everyone, but there was sweeper available. My bad. Yes, actually, there wasn't a sweeper, and went again for a big one. Tried. Amir Yamin is on fire. He's in an aggressive mood. This time on the other side. That is beautifully picked up. This one surely will go to the boundary. And just nearly took our partner, took our colleague. Yasir Hamid. He's smiling. That was funny. Just the way he ducked there. The shot was perfect. Again, it was not a proper line from Abrar, and nicely swept by Amir Yamin. Just look at that. Look at Yasir Hamid. What are you doing there, mate? That is what happened when you have extra lunch. You need to walk. Ali, he might have heard you, and now he's coming back to the com box. Cuts well, cuts through the men. Another boundary for Amir Yamin. Pressure on Abrar and Sindh as Amir Yamin continues to dominate. Yes, good batting, good intent, and once again it was away and cuts nicely with right out the middle of the bat and went for the boundary. So 205 for 6. This is where the learning is for Abrar. What happens? What is the plan B when the batter counter-attacks you? That is the learning. That is where it is important that you learn here in first-class cricket, because you will get a lot of situations like these in international cricket where batters will go after you. How you cope up with it, how you take this pressure, how you set up the batter, that's where the learning is for Abrar. Amir Yamin is a very handy batter. He can hit long. Look at that. These are the shots. He played all around. You ball on the leg side, he sweeps you. You ball short, he cuts you. You ball up to him, he plays you over mid-wicket. He's got plenty of shots. So definitely it's a learning for this youngster. What do you think? Is it time to bring in Zahid Mahmood? Are they being too predictable at the moment, Kunwal? Yes, that's right. And from one end, if they're bringing Zahid, and from the other end, I would love to watch Umar. The way he was bowling so nicely,
I like his swing, in swing, out swing, liner length. Perfect. And if you could get wicket like a batter like Azhar Ali, I think they won't be difficult for him. Yeah, you make a good point. Bringing in Umar might not be a bad idea because we've seen him bowl well, especially he disturbed Azhar Ali. He seemed well. This man also on your screen, Ghulam Mudassir, he's bowled really well. He hasn't taken a wicket yet, but he's bowled really well. He's bowled those wicket-taking deliveries without much luck. They got plenty of options, but I think they do need to change the other end. Abrar, because he's been predictable, and Amir Yamin is really, really going after him. He's winning the battle, that is for sure. The lead is now 17 runs. It's been entertaining. Ah, what a shot! What a shot by this youngster. Amazing cricket, fantastic. Can see it all day long. Wow. Qasim Akram playing his 15th first-class game. Look at that shot, right off the middle of the bat. It was over-pitch delivery and timed nicely by Qasim Akram towards extra cover boundary. Elegant. What was the relevance of 15th test match? Look at that extension of the arms, fetching it right outside the off stump. Placed it beautifully. The standing captain, Mir Hamza. Saud Shakil didn't play this game. He was not 100% fit, and they've definitely missed him. His leadership qualities, his role as a batter at number 3, definitely missed them. Yes, this is his 15th game, and I was talking about his confident and the way he played that shot looks so super. It was right out of the middle of the bat. And I was talking about this guy, Umar, that he's been phenomenal since this morning. Yeah, he's just been unlucky. He's not gotten a fifer yet, but he's bowled those spells, wonderful spells, where he's taken key wickets, important times. He's been that sort of a bowler. 209 for 6, Central Punjab. Happy and relaxed, and why not? They're leading by 21 runs. They've got 4 wickets in hand. They look comfortable at the moment. Yeah, that's what we were talking about. That's what we were thinking. Because Abrar was predictable and Amir Yamin was handling him with some ease. This will be a new challenge. 159 wickets for him. 6 times he's taken 5 for best of 6 for 57. This is going to be interesting. We'll have to see how Amir Yamin plays him. Well, he knows just one way, just to go after him, after the bowling. Will it be the same, Kunamal? What do you think? I think he'll go with the same aggressive approach. This is what they have shown the intent. Oh, was in the air for a little while. Oh, there's a mix-up. There is a mix-up. Big one. Oh, he's just made it easy in the end. What was Qasim Akram thinking? Amir Yamin was never coming for that run. Yeah, that's what he said. Sorry to him. He deserved. Like he was not even looking. Uh-oh. What happened? Confusion. There should be only one call, yes or no. There's no mixture.
isn't it? Absolutely, and as they say, never run on a misfield. And when the fielder is right in the circle and he misfields it, it's always asking for trouble. But this is a different challenge. Zahid Mahmood to Amir Amin. Yes, Zahid started well, giving flight and offering Amir Amin to go for the big one, because there's a fielder. 2 is the call. Ghulam Mudassir does well. Just restricting them to 1. It was a forceful hit and almost a sweep shot. Look at this. It was a sweep shot, rather. Yes. There are no almosts in cricket. This one, proper sweep shot. Kunwal, everything is certain in cricket. Both of the batters are telling me that it was a proper sweep shot. So don't say it again that it was almost a sweep shot, isn't it? You talk to them. You got some superpower. You can hear them. Nice, solid. For 1. That's been the quality. He's picking up that length. It's 212 for 6. The last line, Central Punjab leading by 24 runs. Just about 20 minutes ago, they were trailing by 18 runs. So things have changed quickly in the last 20 minutes as Central Punjab is looking to dominate, courtesy Qasim Akram and Amir Amin. And giving a sigh of relief to the dressing room of Central Punjab, Azhar Ali, Abdullah Shafiq, and they're just now smiling and enjoying. They're in good position now. High on confidence. Amir Yamin after that fifer. It's just the way he bats. I mean, he's such a handy cricketer, such a utility cricketer that I just could not believe it when the season earlier started that Southern Punjab was not playing him. And that was really hurting him. And the change of teams, he was transferred to Central Punjab right in the mid of National T20. And since then, he's never looked back. He's performed with the bat, with the ball. He's fielded well also. He's a complete cricketer. A captain is lucky to have him by his side. I think it wasn't a good idea that he went for the cut shot. The length wasn't offered. It was a good length, good line from Hamza. Well, with the angle, it was there to be hit, but too close to him. Maybe, and kept low a little as per his expectations. 33 of 33. If Central Punjab goes on to win this match, it will be this inning. Up and over, quite over. Oh yes, over, just over. Faraz Ali. The ball was right into the sun. That is what he's suggesting while he was right under that ball. That is a lucky, lucky escape for Amir Amin. It wasn't a confident stroke. Played away from the body, single-handed shot and high in the air. But in the end, Faraz was not able to catch that. It stayed in the air for a little while. But then that sun was definitely there. Maybe a quicker fielder, a younger man. Well, he is a youngster, but a quicker one. Younger like me, Ali, are you talking about me? No. I'm not.
good inning by Amir Amin. Just got lucky. Just that one-handed drive. It was in the air for a little while. Faraz didn't get to it. Look at this. Just could not quite time it. Wanted to play that over that mid-off fielder. Look at that. He was there in the position, but then the ball lost in sun. Just guided it towards point for one. Yes, they played really nicely, both Amir and Qasim. And Qasim not out on 44, faced 59 deliveries. Amir Yamin is playing with the 100% strike rate. Good stuff from both of the batters. Youngster like you. That's the line of this session. Firmly driven. Misfield by Abrar. One more run added to the total. It's 216 for 6. The lead by 28. अच्छी पार्टनरशिप 7वीं विकेट के लिए। 57 रन सिर्फ 26 गेंदों पर, और खाने के वक्फे के बाद तो बहुत ही जारहाना बैटिंग की है इन दोनों ने। जाहिद महमूद को फाइनली बॉल दी गई, अब अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। अच्छा काउंटर अटैक किया, आमिर यामीन को क्रेडिट जाता है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और कासिम ने फिर उनका साथ दिया। खुश आमदीद कहेंगे कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन यासिर हमीद। शुक्रिया फैसल भाई। कासिम अकरम बड़े पॉजिटिवली आमिर यामीन के साथ खेल रहे हैं। सही बात की आपने, काउंटर अटैक, और ये पार्टनरशिप जो है 58 रन्स की हो गई है, 57 रन्स की। और एक पैनिक हल्का सा बटन दबा है सिंध का, बट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस तरह कम ही देखने को मिलता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। नॉर्मली यही होता है, जब एक टीम ऊपर से इस तरह आउट होना शुरू होती है तो नीचे वाले जाके सरवाइव करते हैं, लेकिन इन्होंने डिफरेंट आइडिया के साथ आए। जाहिद महमूद दूसरा ओवर कर रहे हैं। जाहिद की जब सिलेक्शन हुई थी तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि इस विकेट कंडीशंस के हिसाब से 2 स्पिनर्स के साथ जाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अब जाहिद के तजर्बे की ज़रूरत है सिंध को, क्योंकि जब काउंटर अटैक हुआ तो ऐसा लगा कि सिंध की टीम जो है न सिर्फ पैनिक हुई बल्कि प्लान्स जो थे वो सारे प्लान्स जो लंच से पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एकदम से वो इनइफेक्टिव लगने शुरू हुए। यही नतीजा होता है जब आप दूसरी टीम पर अटैक करते हैं आमिर यामीन। या और ये साइन होता है एक अच्छी टीम की। अच्छी टीम का जो यही साइन होता है कि वो जब घिर जाएं तो वो फिर इस तरह काउंटर अटैक करते हैं। तो सेंट्रल पंजाब यहाँ पे साबित कर रही है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम। स्पिनर को एडवांटेज रहता है किसी भी विकेट पर, बॉल टर्न कराने में कामयाब होते हैं। जाहिद का गेंद भी हल्का सा लेग ब्रेक हुआ। इस सीज़न में जब हमने T20 क्रिकेट में देखा था जाहिद को तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो जो उनकी गुगली थी वो भी काफ़ी इफेक्टिव रही थी। अच्छा रन। जी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जाहिद, लेकिन बहुत अच्छा खेले। कासिम 219 पे 6।
सेंट्रल पंजाब ने अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ लंच के बाद जो है वो वापस आए हैं और इससे ड्रेसिंग रूम में एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो जाता है, जो डिफेंसिव मोड से एकदम निकले और जब आप अबरार को बॉलिंग क्रीज से हटाने में कामयाब हुए तो ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है सेंट्रल पंजाब की। शायद थोड़ा सा गौर करेंगे इस चीज़ पर कि इब्तिदा में उन्होंने बिल्कुल भी प्रोएक्टिव बैटिंग नहीं की, नॉर्मल मेरिट पर खेलते रहे और एक पेस जो थी इनिंग्स की उस पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया जो टॉप ऑर्डर बैटर्स थे, जिसकी वजह से अबरार और उमर ने एक अच्छा स्ट्रैंगल होल्ड बनाया हुआ था, लेकिन काउंटर अटैक की जो है अपनी अफादियत है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम जो है वो सिचुएशन चेंज हुई है। सेंट्रल पंजाब जो है वो लीड की तरफ गया। एक बार अच्छा बॉल, मीर हमजा का अच्छा कमबैक, लेंथ बॉल था, उसे चेस करने गए कासिम अकरम, लकी रह के एज नहीं हुआ। बॉल ये 67 ओवर पुराना बॉल है, लेकिन अभी भी विकेट से कुछ ना कुछ मदद मिल रही है बॉलर्स को। ये बहुत ही आला क्रिकेटिंग पिच देखने में आई है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। लंच से पहले जो उमर ने जिस तरह का स्पेल किया था सीम बॉलिंग का, बहुत ही शानदार मुजाहरा था पुरानी बॉल के साथ। अभी भी अच्छा कैरी है विकेट में। सरफराज ने बॉल को काफी हाइट पे कलेक्ट किया। अच्छा एरिया है ये, थोड़ा सा बाहर से कर रहे हैं अब, क्योंकि इस वक्त कासिम और आमिर यामीन जो है वो काफ़ी खुली बैटिंग की है, तो वो शॉट्स की तरफ जा रहे हैं, तो मे भी इनको बाहर करके थोड़ा सा शॉट्स की तरफ ही लेके जाए, तो ये एक अच्छा प्लान है। एक स्लिप और होनी चाहिए यहाँ पे। फिर बीट हुए। इतनी तेजी से रन बने यासिर खाने के वक्फे के बाद कि लगता है मीर हमजा ने ऑफसाइड पैक करके और एक ही प्लान के साथ आप बॉल कर रहे हैं, बॉल बैट्समैन से दूर ले जा रहे हैं। और आप देखें कि ऑफसाइड पर 4 फील्डर जो हैं वो 1 रन बचाने की पोजीशन में हैं, स्लिप और गली के अलावा। और इसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट जो कि बहुत बड़ा स्कोरिंग एरिया है इस ग्राउंड में, आपकी स्क्रीन के बाएं जाने पर आप देख रहे हैं, वो भी बाउंड्री पर है। अब उन्होंने बैट्समैन को कहा कि आपके सब्र का इम्तिहान है और उसी लाइन और लेंथ पर परसिस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी ज़्यादा फील्ड ली हुई है ऑफ स्टंप पे, एक स्लिप और होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवर का जो फील्डर है ये मेरे हिसाब से ये यूजलेस है। जो कवर का फील्डर है उसको शॉर्ट कवर पे कैचिंग पे ले गए, डीप पॉइंट है, आपका पॉइंट है, तो ये कोई मतलब 4 डे क्रिकेट हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मीर हमजा को चाहिए कि एक स्लिप और रखें, क्योंकि जिस तरह फ्लैश कर रहे हैं कासिम अकरम। 7-2 की फील्ड है, ऑन साइड पर सिर्फ 2 ही फील्डर हैं। स्क्वेलेग आपको नजर आ रहा है और उनके बाएं जानिब जो है वो मिड विकेट के फील्डर हैं, वाइड ऑफ मिड ऑन रादर। प्लान काफी वाज़ेह है सिंध का। अब 68 ओवर गए, 219 पर 6 आउट। नेक्स्ट मैन जो है वो अली शान है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, कीपिंग भी बहुत अच्छी की। थोड़ी सी बातचीत हो रही है कप्तान मीर हमजा और सरफराज के दरमियान। फवाद आलम थे रादर। बहुत ही दिफाई फील्ड है जायद के लिए, सिर्फ एक ही स्लिप है कैचिंग पोजीशन में।
नया बॉल भी यासिर 12 ओवर दूर है सिर्फ। स्लॉग स्वीप, आमिर यामीन का जोरदार शॉट, लाजवाब चौका। जहाँ जबरदस्त शॉट, और द गुड थिंग इज कि वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे सिचुएशन क्या है, जो उनको बैटिंग आती है जिसमें इनको महारत है वही बैटिंग कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू प्ले योर क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। मिड विकेट का फील्डर को कोई चांस नहीं बॉल रोकने के लिए। 4 रन। यासिर जब अबरार को ये स्लॉग स्वीप कर रहे थे तो बॉल स्ट्रेट मिड विकेट की तरफ जा रहा था जहां पे फील्डर अभी था मिड विकेट का, लेकिन इस मरतबा उनके दाएं जानिब से बॉल निकला। इस फील्डर को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है सिंध को, क्योंकि जैसा आपने कहा आमिर यामीन की ये स्पेशलिटी है, इस शॉट में महारत रखते हैं, तो बिल्कुल वो फील्डर को सेटल होने नहीं दे रहे। अगर वो स्क्वायर हो तो वो स्ट्रेट मिड विकेट की तरफ मार देते हैं, और अगर स्ट्रेटर मिड विकेट था तो स्क्वायर कर दिया, और अब एंगल भी चेंज कर लिया है जाहिद ने। या बिल्कुल, और अच्छा पॉइंट है, और इस शॉट पे इनको काफ़ी जो कमांड है। अब देखिए शॉट फाइन लेग ले लिया है टॉप एज के लिए, और राउंड द स्टंप कर रहे हैं। अच्छा आइडिया है, टॉप एज हो तो शॉट फाइन लेग के हाथ में जा सकता है। ठीक है, वो बैटिंग करे, एक्स्ट्रॉर्डनरी खेल रहे हैं इस वक्त। उल्टा स्वीप खेलने गए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अब ये जिस तरह ये रिवर्स स्वीप खेलने गए, अगर इनको लेग बिफोर की अपील होती है और ये रिवर्स स्वीप खेलने गए, तो वो अपील बनेगी इन पे? वो पिचिंग आउटसाइड लेग ही कंसिडर होगा, क्योंकि उनका गार्ड राइट हैंडर का है। ओके, तो उस हिसाब से ही जो ऑफ और लेग स्टंप डिटरमिन होगी। इस मरतबा गेंद को फाइन खेल दिया। जाहिद परेशान, सिंध की टीम परेशान है, क्योंकि इस काउंटर अटैक ने बिल्कुल उन्हें पैरों से उखाड़ दिया है। वेल प्लेड आमिर यामीन। एक दफा फिर आला बैटिंग आमिर यामीन की, अंदर के लिए शॉट। फील्डर वहां पे मौजूद था शॉट फाइन लेग का, और वही बात कि महारत है इनको इस शॉट पे, स्वीप शॉट। अगर वो शॉट्स खेल रहे हैं तो इट्स ओके, आप अपनी ओवर द स्टंप बॉल कर सकते हैं, लेकिन ये आप बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं उनके रन्स करने के जब आप राउंड द स्टंप आते हैं। और 1 2 3 4, अब 6 फील्डर्स ऑन साइड पर आ गए हैं। दूसरी मर्तबा कोशिश की रिवर्स स्वीप की। जाहिद का जो एंगल है राउंड द विकेट, ये नॉट नेसेसरीली डिफेंसिव लाइन नहीं है, क्योंकि आमिर यामीन ने इतना अटैक किया उन पर कि वो यहां से लग रहा है कि वो उन्हें क्रैम्प करके आउट करने की कोशिश करेंगे। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा टाइम नहीं कर सके, इसलिए 1 ही रन मिलेगा। यहाँ देखिए मिड ऑन पे गया, और ये बॉल जहाँ पे पिच हुआ वो वही पिच हुआ जहाँ पे फील्डर सर्कल में होता है, तो हर शॉट नहीं लग सकती। कदमों का अच्छा इस्तेमाल था, लेकिन अगर फील्डर सर्कल के अंदर होता तो मिड ऑन पे कैच था रेगुलर जो। हाँ, तो थोड़ा सा अगर अटैक उन्होंने कर भी लिया है तो क्या ज़रूरत है इतनी फील्ड खोलने की। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 228 पे 6।
यासिर हमीद, जरा बताइए कि क्या हुआ यहाँ पर। ये बड़ा जो है ना अचानक किस्म का बाउंस हुआ है मुझे भी। अच्छा डक अच्छे टाइम पे किया मैंने। अभी भी बॉल आपको अच्छा नजर आ रहा है, इसका मतलब है। एज एन ओपनर यहाँ पे हमारी बात हुई थी शान से, अली शान जो है विकेट कीपर उनके, तो मैंने उनको कुछ बात की उनसे, तो शायद ये उसके रिएक्शन में ये चीज़ होगी। मोहम्मद उमर आ रहे हैं बॉलिंग के काफ़ी लिए। फराख दिल हैं यासिर हमीद। पिछले मैच में यहाँ अजीम घुमन को काफ़ी हिदायत देते हुए पाए गए थे। इस मैच में अली शान को जो है उन्होंने अपने तजर्बे की रूह से कुछ ना कुछ हिदायत दी। प्लेयर्स इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जब यासिर जैसे तजर्बेकार खिलाड़ी उनसे बात करते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, कदमों का इस्तेमाल, और जो बल्ले की आवाज़ आई वो बहुत ही शानदार। और इसके साथ ही आमिर यामीन की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। लाजवाब काउंटर अटैकिंग फाइट बैक आमिर यामीन की। ब्रेवो आमिर यामीन, एक गट्सी इनिंग के लिए उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स 43 बॉलों पे 50 रन, 116 का स्ट्राइक रेट, 4 डे क्रिकेट, ग्रीन पिच, बहुत कुछ बता रहे हैं इनके टैलेंट के बारे में। और ये जिस तरह 50 रन इस शॉट के साथ मुकम्मल किए, निकल के इन्होंने मिड ऑन के ऊपर से खेला ये शॉट, 1 बाउंस 4। आमिर यामीन सेलिब्रेशन जो है ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की है। ये आप उनसे पूछिएगा ज़रूर यासिर, साउथ पंजाब स्टाइल लग रहा है कहीं। लेकिन कितना अजीब इत्तेफाकात का खेल है क्रिकेट। ये खाने के वक्फे से पहले टॉप ऑर्डर के बैटर्स खेल रहे थे और बिल्कुल वो प्रेशर में थे, विकेट से बॉल सीम भी हो रहा था, बाउंस भी बहुत ज़्यादा था। वही बॉलर अब बेअसर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा कट शॉट है, यहाँ पे 2 रन की कोशिश करेंगे, चांस है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन थ्रो अच्छी नहीं थी। एक पॉजिटिव इंटेंट, एक काउंटर अटैकिंग इंटेंट आमिर यामीन की, और मैच का नक्शा पलट दिया उन्होंने। या एक टाइम में तो ये लग रहा था कि सिंध की टीम इतनी लीड ले लेगी 50 रन की, 60 रन की, लेकिन अब जो है बिल्कुल कहानी जो है चेंज हो गई है। ये होती है इम्पैक्ट इनिंग, इस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करती है इस तरह की इनिंग। शॉर्ट पिच बॉल, उमर की स्ट्रेंथ नहीं है और आमिर यामीन ने आड़े हाथों लिया एक मरतबा फिर उनको। सेंट्रल पंजाब इस वक्त मुसलसल बाउंड्रीज हासिल कर रही है और लीड बढ़ते हुए 50 रन। 4 रन, खूबसूरत शॉट, प्रॉपर पुल शॉट। अच्छा हुक शॉट, 3 गेंदें गुजर गई। एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट दिस पार्टनरशिप। बहुत अच्छा सिंगल लिया इस बार आमिर यामीन ने, पूरा प्रेशर डाला हुआ है, 9 रन आ चुके इस ओवर में। या सिर्फ और से देखें तो ये हमने आमिर यामीन को पहले भी करते हुए देखा है। जिस तरह ये कलाई का इस्तेमाल करते हैं, बैकफुट पर खेलते हैं, वो कन्वेंशनल जो कट या डैब शॉट नहीं है, काफ़ी यूनिक इनका स्टाइल है। जब ये खेलने आए थे तो मैंने यही कहा था कि
इस लेवल पे ये बहुत ही अंडररेटेड क्रिकेटर माने जाते हैं। 5 विकेटें हासिल की पहली इनिंग में। देखा ये बिल्कुल आखिरी लम्हे पर कलाई की मदद से झटका दिया बल्ले को। आवाज आई बल्ले से लगने की भी। अच्छा पिक किया इमरान जावेद ने फौरन ही। ओवर का इख्तिताम 239 पर 6। लकी रहे कासिम अकरम। बीच का बॉल था, नहीं, बल्ले पे लग के वो लेग स्टंप पे गया है। अगर बल्ले पे ना लगता तो बीच में लग रहा था ये बॉल। और अभी तक कहना चाहिए इनिंग्स ऑफ द मैच खेली है आमिर यामीन ने। आते ही उन्होंने अटैक किया। खाने के वक्फे से पहले उन्होंने आगाज किया था इन शॉटों का, लेकिन खाने के वक्फे के बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही आड़े हाथों लिया सिंध के बॉलर्स को। खासतौर पर ट्रम्प कार्ड अबरार को उन्होंने जिस तरह उन्होंने पनिश किया। स्लॉग स्वीप की काफी वैरायटी देखने में आई और उमर को भी। पार्टनरशिप 80 रन की 80 गेंदों पर। इस मर्तबा हवा में फील्डर जा रहे हैं लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। उमर बिन यूसुफ की एक और कोशिश। दूसरी बार भी उन्होंने कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथों में आके निकल गया। शायद ये 6 रन होंगे। साइम अयूब है मुझे लगता है। जी हाँ, साइम अयूब का बहुत जबरदस्त एफर्ट। और एक बार तो ये लगा कि ये कैच इन्होंने ले लिया है लेकिन इसको फिनिश नहीं कर पाए ठीक से। काफी मायूस हैं अपने आप से। पहले उन्होंने कैच करके बॉल को वापस फेंक दिया था अंदर, लेकिन जब दोबारा उसको कैच करने आए तो उस वक्त उनका पैर फिसल गया और रस्से को जा लगा और गेंद भी उनके हाथ से निकल गई। यहाँ ये देखें, इस टाइम पे इनको बैलेंस नहीं कर सके अपने आप को और बोल्ड कर दिया। बोल्ड कर दिया राउंड द लेग। जाहिद महमूद ने पहली विकेट हासिल की अपनी और एक ब्रेक थ्रू, ऐसी ब्रेक थ्रू जिसकी बहुत अशद ज़रूरत थी सिंध की टीम को, और वो दिलवा दी है जाहिद महमूद ने यहाँ पे। जो राउंड द विकेट बॉल करने का उनका हरबा कामयाब साबित हुआ बिलाखिर। वही हुआ, ज्यादा करीब थी, स्लॉग स्वीप खेल नहीं सकते थे इसलिए लैप स्वीप खेलने गए। बल्ले का किनारा लगती हुई गेंद स्टंप्स में जा लगी, लेकिन आमिर यामीन को दाद देनी होगी क्योंकि उन्होंने 63 रन की एक लाजवाब पारी खेली सिर्फ 49 गेंदों पर और उनकी टीम की लीड को बढ़ा दिया 57 पर। सेंट्रल पंजाब 245 पर 7। अली शान आगे हैं बैटिंग क्रीज पर। जी अली शान विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा मौका इनके पास क्योंकि एक जो प्रेशर था विकेट्स जाने का वो अब नहीं है। अब रन मोड में आ गया है सेंट्रल पंजाब और ये भी जो उनकी नेचुरल गेम है वो खेलें। यासिर कह रहे थे कि सिंध को बहुत ही शदीद ज़रूरत थी इस ब्रेक थ्रू की और जाहिद महमूद ने वो ब्रेक थ्रू दिया। अभी भी काफ़ी डिफेंसिव फील्ड है नए बैटर अली शान के लिए। ये अच्छी बैटिंग करते हैं। पिछले साल भी इन्होंने एक शानदार सेंचुरी बनाई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। सेंट्रल पंजाब की टीम वो मैच बहुत ही छोटे मार्जिन से शायद 4 या 5 रन से हार गई थी। स्लिप और शॉर्ट कवर कैचिंग ओवर द विकेट जाहिद महमूद।
देखिए आमिर यामीन की इंटेंट में तो कोई शक व शुबा नहीं था उनके जहन में, और इसी क्लैरिटी की वजह से इन्होंने इतना शानदार काउंटर अटैक किया। इस मर्तबा वन शॉट टू मैनी। अच्छा ड्रिफ्ट हुआ बॉल हवा में। जो हवा चल रही है वो बिल्कुल, अगर जाहिद महमूद की जो बॉल ड्रिफ्ट हो रही है उनके बाएं से दाएं जाने इस वक्त चल रही होगी। अच्छा हवा में बॉल ड्रिफ्ट हुआ। इस मर्तबा लेंथ पीछे थी, काफी तेज हवा चल रही है इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और इसका रुख जो है जाहिद की जो बॉल अंदर की तरफ ड्रिफ्ट होगी उस तरफ है इस हवा का रुख। कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल उनके फ्रंट पैड को स्ट्राइक किया जाए। ज्यादा ब्रेक तो विकेट में है नहीं अभी। जी हाँ, और बल्ला आगे था जिसकी वजह से बचत होगी इनकी। 245 पे 7। कासिम अकरम 47 पे। अली शान के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे रन करने का, क्योंकि जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया इनकी टीम से, और इनकी टीम इस वक्त लीड में चली गई है। और दूसरी जानिब मोहम्मद उमर बॉलिंग के लिए आए हैं। छियासी रन की पार्टनरशिप हुई 7वीं विकेट के लिए कासिम अकरम और आमिर यामीन की। कासिम की कंट्रीब्यूशन से भी जो है आपको नजर नहीं चुरानी होगी, ज्यादा हेडलाइंस थी वो तो आमिर यामीन की इनिंग्स ने ली, लेकिन कासिम एक नौजवान बैटर हैं, नौजवान ऑलराउंडर हैं, और मैच्योर होते जा रहे हैं दिन ब दिन यासिर, जो कि एक अच्छी चीज है। अब आमिर के बाद उन पे जिम्मेदारी आ गई है ज्यादा। अच्छी बैटिंग की है कासिम अकरम ने। 73 बॉलों पे 47 रन, और रिस्पॉन्सिबल इनिंग के लिए शॉट सिलेक्शन भी अच्छी रही इनकी, और इसको अच्छा चांस है इनको ये कन्वर्ट करें। अभी 3 विकेट्स हैं इनके साथ खेलने वाली। वो जो काउंटर अटैक था थोड़ी से प्लान्स को डिसरप्ट भी किया है सिंध के, क्योंकि अभी 72वां ओवर है और नई बॉल आने को है 80 ओवर्स के बाद। लेकिन अगर आप उमर से बॉल करवा रहे हैं पुरानी गेंद से, तो इसका मतलब है कि नई गेंद से फिर मीर हमजा और गुलाम मुदस्सिर को मौका मिलेगा। बेहतर नहीं होता यहाँ पर अगर आप अबरार से बॉल करवाएं, दोनों स्पिनर्स को इन टैंडम बॉल करवाएं और फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा ब्रेक दे दें, क्योंकि जिन्होंने अपसेट किया था ज्यादा आमिर यामीन वो तो आउट हो चुके हैं। अच्छा यॉर्कर, क्या ये पैड को पहले टकराया? जी हाँ, अंपायर इमरान जावेद को ये फैसला करना था कि क्या गेंद पैड को पहले टकराया या बल्ले को, और उनका फैसला उमर के हक में आ गया। कासिम ज्यादा खुश नहीं लग रहे इस डिसीजन से, लेकिन ये रिप्ले में पता चलेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। काफी नजदीकी मामला था, लगता है गेंद बल्ले के नीचे से निकल के जाके पैड को लगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि बॉल जाके सीधा विकेटों को लग रहा था, लेकिन क्या ये बॉल पैड को पहले टकराया था? यही फैसला करना था इमरान जावेद को। लेकिन अच्छी इनिंग्स कासिम अकरम की, 47 पर आउट हुए, 245 पर आउट। मुझे पता क्या लगा, बॉल गुजर के पैड को लग के वापस बल्ले को आगे लगाया। ये चेक कीजिए, मुझे लगा कि लग के तो फिर वापस आके बल्ले को लगा। ओ, हमारी कमेंट्री खत्म हो गई।
और and this is the scorecard. It's 245 for 8. The last wicket, the biggest one. Trying to be too cheeky. And this one, umpire had no hesitation in giving that out. Good bowling by Mohammad Umar. Three each for Mohammad Umar and Abrar. They've been the pick of the bowlers since the start of the season. Wonderful, that's a good Yorker. It's gonna be a test now. I think the way we were talking about earlier, and we were of this opinion that Amir Yamin's inning will be a vital one, and it has provided that much needed lead of 57 runs. He played a wonderful knock, that cameo. 2 wickets have fallen. Amir and Qasim Akram, the 2 men set. Now what Sindh can do is just wrap it up quickly. Just don't let that lead extend. The last one, Qasim Akram was not happy. Let's have a look why. Well, that was hitting middle and leg. Unless he's got that inside edge, which we can't tell. Probably umpire couldn't also. Only he knew it. That's what he's suggesting. I cannot blame the umpire, not ourselves, for not checking it, for not getting it, because we couldn't tell. The lead is now 58 runs. Okay, Asif, Kunumal Asif, what do you think? Is it time to bring back Abrar Ahmed? Yes, that's right. And in previous session, we have discussed that the Umar could be a good idea. And they brought Umar and they got out Qasim Akram. 246 for 8. Happy mood. Not so happy mood. 2 different states at the moment. But the credit of all these smiles has to go to Amir Yamin. 63 of just 49 deliveries. Well, now if they're trying to get more 20, 30 runs, would be fine because they already got 58 runs lead. And let's suppose if they're getting closer to 100, would definitely put pressure on Sindh. That was close. That was real close. Did it come off the bat? That's the question. Big inside edge, yes. Just close to that short leg fielder also. Ah, beautiful. That is a peach of a delivery. Beautifully bowled. Well, look at this flight and then bounce. Even this bounce was surprising for Sarfraz as well and picked nicely. It was a beautiful delivery. Well done in the end by Mohammad Ali also. He did really well to get that bat away from the ball. Again, batting like a pro. Probably it won't be a bad idea to bring in Abrar, because we know that he just eats these tail-enders for fun. Although Zahid Mahmood is their premier leg spinner, the frontline spinner. They didn't bowl him for 60 overs. Now he's taken a wicket. Runs.
1. Wrong line. It's 246 for 8. The lead is 59 runs at the moment. It's a handy lead, looking at the situation and the conditions here in Rawalpindi. Sindh have won it with the 100 lead against KP. Then again, Balochistan, they did the same to them. It's happening to them for the first time. Let's see how they cope up with it. He's the one who's looked like taking the wicket as far as the seam is concerned. Mohammad Umar. Yes, this is his 18th over. The only thing is that his line and length is perfect. And I like his temperament, the way he's bowling. You know, that each and every aspect coming from this fast bowler is really, it's been excitement, to be very honest. Just one slip now. There's a fielder at short mid wicket. There's a deep square leg in place. Fine leg also in place. Regular field positioning. What is the plan? Well, they're going to go short. They do. Sharp one. Good one. Showing some muscles. Don't do that to him. We know what he's capable of. When it's your turn, remember he's a fast bowler and a pretty good one. A quick one. He's got pace. And when you bowl short ones to the fast bowlers, they remember it. And when it's your turn, payback time then. Look at that. Yeah, it was high and nicely taken by Sarfraz. When you talk about the memories of fast bowlers, do you remember two legends, Brett Lee and Shoaib Akhtar? What happened with them? Brett Lee was batting there and he went and Shoaib Akhtar called him, Binga, get ready for a bouncer. And then he went for the Yorker and there was a shout and Brett Lee was expecting that it should be out, but when the umpire gave a not out, he wasn't happy on that. And he wasn't happy there. And it was match at Adelaide. And Brett Lee said that I was expecting to get out, but umpire was not favoring me, and I wasn't ready to face Shoaib Akhtar there. So it happens definitely with fast bowlers. Yeah, they were good friends. They still are, I think. Brett Lee, two of the most lethal fast bowlers that the world has seen. Shoaib bhai definitely is right up there with his flair, with his personality. Not quite the right line. This is not going to work. They probably should be looking to ball at him, make him play. Yeah, that's what we were talking about. The fantastic man, the rock star, the Shoaib Akhtar, the Rawalpindi Express. Wonderful character. It's just amazing to see him bowl. His run up, his flair, his hair, everything about him was charismatic. Superb character. You see anyone nowadays, Kunumal? Any fast bowler that resembles to him, the personality? Can you think of a name? We'll come back to it. 247 for 8. Central Punjab leading by 59 runs. 247 for 8. That little cameo from Amir Yame in 63 or 49 have definitely put them in a commanding position in this game. That might be the game-changing inning.
So yes, I asked you a question. Do you recall anyone these days? I'm talking about Pakistan cricket only. That you might remember, reminds you of Shoaib Akhtar? Not really. Yes, Haris Rauf is a bit pacey, but not like Shoaib Akhtar. So I'm missing a fast bowler like Shoaib Akhtar. I've got one name. Well, I think if you talk about the aggression, I think there's a new lad from KP side, Ehsanullah. I think he's got that thing in him, that flair. He's got the pace also. He likes those shorter ones also. He likes to bang in short. Every time I see Ehsanullah ball, it just reminds me, it's not actually like him, but that aggression in him reminds me of Shoaib Akhtar. Easily done for one. Ali Shan, he can bat. We've seen that. Now the lead is 60 runs, and Ali Sindh, if anything around 90, 100, Sindh will be more on defensive position if they are getting Central Punjab getting lead up 90, 100. They still are. They still are in defensive position. The lead is of 60 runs. And to get to that 100 mark, these two will have to bat really well. And, oh, that's a quicker one. Quicker one. Good bowling. He's mixing it up. It was a very good delivery. Yes, quick and straight. Played well in the end by Ali. Well left. 248 for 48. Central Punjab. What happened there? I got excited that he's making up his mark, he's taking his mark. Just moved away. Change of plans right in the end by the captain. But I think happiness is still for me there, because Umar is ready to bowl another over. You and your happiness. Maybe he likes bowling from the far end. This is the media center end where Umar is bowling from. And he's bowling good. He's bowling in those right areas. So maybe Mir Hamza deciding that let's get to the basics. Let's get where the most success has come for Abrar, and that is from the far end. Bring him from that end. Well, if talk about Abid Ali, see smiling, but he wasn't happy with the decision, and because he got out on 44. So when you know that a player after illness trying to get chance back in the national side, it's really important to go for the big scores, for the centuries. But I think that still this part is missing from Abid Ali. Yeah, it's never easy when you're ill and looking to make a comeback. Well, he's a committed person. He's a very good man. He's a very talented player also. It's just a matter of time when he gets that mojo back. When he starts hitting boundaries, when he starts getting big runs. He's getting those 30s and 40s this season. But yes, as you said, he's not really got that big 100, 200 that we used to seeing him. It will come. It will come. Ah, take that. Wonderful. That is a fantastic hit.
showing that he can bat. Yes, Shan is showing some aggression. It was a very good shot right out of the middle of the bat. A proper pull shot from a pull shot on the front foot. Yeah, Ricky Ponting would be so proud of this shot. On the front foot towards that area. Yesterday, reminds me, Abrar played few shots like this. Reminded us of all these big players. Ali Shan, nice pickup shot. This time towards offside. That is through. Faraz doing the chase. Just in the end, just letting it go. What happened there? Didn't try enough. Didn't try long enough. He's the wicket keeper. He's a very popular man in the camp. He's scoring runs. You can see, you can hear the cheer. Again, it was very good shot on the up, play towards extra cover, and the placement was really nice. Timing was okay, and he got the boundary. So I'm telling you that there was a long chase, and in the end, he gave up. Gave up a little too early. That's, you can say. But it's runs that matters for Central Punjab. They've got 8 runs so far. Shorter one. A typical fast bowler's reply. The aggression. A few words. A few stares. You still want to go with Mohammad Umar? Kunamal? Yes, I could. I would love to watch him bowling entire day. The way he's bowling, especially in this match. He went for a pull shot again. I was disappointed that he didn't get it from the middle of the bat. It was a little higher for his liking. Oh, he's running. Direct throw was needed. What was that? Umar was not happy. Actually, it was straight to the fielder in the point position. And Zahid Mahmood was there. It was a direct hit was required there. It was nowhere close to that direct hit. Come on, 257 for 8. Still no Abrar Ahmed. Still persisting with Zahid Mahmood. Swept comfortably. Mohammad Umar is there. So now there's a test of Ali that facing Zahid. Zahid is bowling so nicely. Coming up with nice flights, flippers and wrong ones. I think he knows his role. Yeah, that was what we were talking about. Just look at the throw. Gathers it. And, uh-oh. He was not in the frame. Good leave. Yes, we were looking forward to get a direct hit from him, but it was away. So Ali Shan Ali Shan is a good batter, but he's on the other end. If you talk about Ali, faced 21 deliveries, he's okay, fine. That if it's a dot delivery, doesn't matter. I'm here to support my partner, and the partner is an exciting guy. Who? is Who? Shan. I'm talking about Shan. Shan. Your partner?
I'm talking about Ali's partner. Ali's partner. I think talking about me. Excitement. I was excited. For a minute, I thought you were talking good about me. Never happens. Never says good about me. It's end of the over. 258 for 8. Yeah, change of plans maybe. Fawad Alam had to go all the way to speak to Mir Hamza and Zahid Mahmood. What should be done? That is why the senior members, the experience is so important inside. For situations like these, when you're stuck. Down the track. Not quite timing it. Mir Hamza did well. Couple of runs for Ali. Yes, he went for the big one, but didn't time well. And Mir Hamza, actually, he tried well, but wasn't able to collect that. 2 more runs added into the total. The lead is 75 runs. Zahid Mahmood trying to get the second wicket. But they too have been very comfortable in dealing with both spinners, not just one, but both. In the last over, the way they handled Abrar, I think that is amazing. That is a good sign for Central Punjab. As you said, they would like to get to that 100-mark lead just to put the pressure on. Muhammad Ali. अच्छा शॉट था मोहम्मद अली का, लेकिन सीधा विकेट्स को जाके हिट किया. आगे गिरा हुआ बॉल मुंह में. अच्छा शॉट था, मिडल हुआ लेकिन स्टंप्स को जाके लगा. यकीनी तौर पे ये 2 या 3 रन हो सकता है, 4 रन भी हो सकते थे. आराम से खेले. एक बार फिर बहुत आगे गिरा हुआ बॉल जिसे आराम से खेले मोहम्मद अली और इख्तिताम पजीर हुआ 269 पे 8. समझ गया ना भाई ना, बोल मैं समझ गया, बोल मैं समझ गया. जल्दी भाई लेट नहीं, जल्दी बोल समझ गया. आना आना अंदर आना प्लीज, पैड ले जाना पैड. मैच समरी. सिंध की टीम पहली इनिंग में 188 रन किए उन्होंने. सेंट्रल पंजाब 267 पे 8. आमिर यामीन ने 63 रन किया, अजहर अली 48. पॉइंट पीछे सिंध की तरफ से हाईएस्ट स्कोर जो था वो साद खान ने किया 29. उमर पॉइंट पीछे. 79 रन की लीड है इस वक्त सेंट्रल पंजाब की. अभी पुराना एक बॉल हमेशा कॉम बॉक्स में इजाज. थैंक यू वेरी मच यासिर भाई. और गो के अगर ओवरऑल देखा जाए 267 बुरा नहीं है, लेकिन लीड के एतबार से सिंध की जो बैटिंग लाइन है गो के पहली इनिंग में बेहतर नहीं थी, लेकिन उनका कैलिबर ऐसा है कि वो किसी वक्त विप अप करें. सेंचुरी मेकर्स हैं, तो 79 रन्स गो के इतना बड़ा फैक्टर नहीं है इस वक्त. मीर हमजा ने अच्छी कप्तानी की, अपने बॉलर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया. गो के सिर्फ 1 विकेट ले पाए. चार्ज किया, खड़े खड़े बेसबॉल और बॉल गिरा फेंस से बाहर. अच्छा कनेक्शन. या खूबसूरत शॉट शान की.
जो इस वक्त 24 रन पे पहुंच गए हैं, जगह बनाई, बेस को स्ट्रांग किया और आगे गिरा हुआ बॉल जो जानते थे पहला बॉल है लूजनर होगा, तो उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया उसका और 4 रन हासिल किए। अली वकास 150, इनफैक्ट जो हाईएस्ट इनका इंडिविजुअल है 55 रन, वो इसी क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन में इन्होंने बनाया। जी और नया बॉल जो है वो ले लिया गया है इस वक्त, न्यू कोकोबुरा, दूसरा नया बॉल 83वें ओवर में सिंध ने नया बॉल लिया। मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है क्योंकि पुराना बॉल बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं बैट्समैन और रन्सों का फ्लो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से शायद इनको विकेट मिले या नया बॉल है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। लेफ्ट साइड पे इम्पैक्ट हुआ और गो की अपील जरूर की, नॉट आउट की कॉल। गुड अंपायरिंग, लेग बाय आसिफ याकूब का इशारा। वेल नए बॉल को लेकर जो इसका यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए यहाँ से। जी हाँ, लेग स्टंप पे पिच हुई और लेग स्टंप के बाहर जा रहा था बॉल, थोड़ा सा अंदर से लेके आए मोहम्मद अली जो कि टेल एंडर है, 35 बॉलें खेल चुके हैं, सिर्फ 1 रन स्कोर किया है। 27 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में। नॉर्दर्न के खिलाफ जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, अली अपना हाईएस्ट इंडिविजुअल सीजन का भी और कैरियर का भी स्कोर कर चुके हैं फैसलाबाद के वेन्यू पे पहुंच चुके थे, लेकिन बैलेंस अपना बरकरार नहीं रख पाए और स्लिप हो गए। जी हाँ, इंटरेस्टिंग होगा ये। हमारे लिए बहुत करीबी मामला। बैलेंस को बिल्कुल बरकरार नहीं रख सके मोहम्मद अली, बिग टॉल गाय। ये बेहतर लाइन है क्योंकि पहले दोनों लेग स्टंप पे बॉल गए, यूजलेस थे, लेकिन इस तरह का जो टारगेट है वो अपनाना होगा यहां पर मीर हमजा को। जी हाँ, बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर, ये लाइन और ये लेंथ है नए बॉल से। लेफ्ट आर्मर की का बॉल अंदर आता है। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात में बल्ला सामने रखा, लेकिन अच्छा यॉर्क, बहुत दिलफरेब मनाजर बीइंग अ पेसर। यहाँ यॉर्क करने की कोशिश की और अच्छा नेगोशिएट किया मोहम्मद अली ने आखिर में। तरासी ओवर के 272 पे 8। गुलाम मुदस्सिर ने अब तक 10 ओवर करवाए, 2 विकेट 32 रन के एवज, 2 मीडियंस विकेट लेस है। इनका बॉल भी नया जो है वो हिलता भी है और काफी सपोर्टिव होता है, तो स्लिप के जो फील्डर्स हैं अगर ऑफ स्टंप पे लाइन रखते हैं, क्या ख्याल है एक आध और फील्डर बढ़ाना चाहिए या सिर स्लिप में? यहाँ पेस भी बेहतर है इनकी, लेकिन थोड़ी लाइन बनानी पड़ेगी इन्हें पहले। अली शान जो कि इस वक्त सेट खेल रहे हैं, 24 रन पे खेल रहे हैं, 36 बॉलों का सामना किया इन्होंने, कुछ अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन नए बॉल पे
डेफिनेटली टेस्ट है इनका। ये डेली का विजिटर है और यही इसका स्पॉट है जहाँ से बैठकर नज़ारे लेता है इस रावलपिंडी की फिजाओं के, यकीनी तौर पर अपने शिकार की तलाश में। लेकिन यहाँ पर ऑन साइड पे अच्छा बल्ला घुमाया। इस वक्त नए बॉल से गुलाम मुदस्सिर भी अपने शिकार की तलाश में है और इस बार अली शान बड़ा शॉट खेलना चाहते थे उठा के, बैट घूम गया था हाथ में। स्पेस अच्छा था लेकिन बॉल की जगह, जैसे यासिर बात कर रहे थे कि बल्ला उनके हाथ में घूम गया, टाइमिंग बेहतर नहीं थी, इसलिए फील्डर बॉल पे लपक पड़े। और हल्का सा हिंट ऑफ स्विंग, लेकिन आसानी नेगोशिएट करते हुए यहाँ पर मेरे ख्याल से जो मुदस्सिर हैं कोशिश करें कि बॉल को थोड़ा सा आगे रखें। माइट बी ये बेहतर ऑप्शन है या बैक ऑफ लेंथ बेहतर रहेगा इस वक्त? जी हाँ बिल्कुल, आगे रखें और एक आध बाउंसर भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो शॉट्स खेलने जा रहे हैं और बहुत चांस है मिस टाइम होने के। शॉट मिड विकेट भी होना चाहिए। बॉल अंदर आ रहा है उनका। नो बॉल। वेल, गुलाम मुदस्सिर की एक तरह की हैबिट है कि जब भी अपने स्पेल का आगाज करते हैं ओवर स्टेपिंग करते हैं, और इससे पहले भी हमने देखा ना सिर्फ इस मैच में बल्कि केपी, बलूचिस्तान, जब जब उन्होंने बॉलिंग का आगाज किया इन्हें ये प्रॉब्लम रही। काफ़ी बड़ा नो बॉल। थोड़ा सा जब ये ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो उनका स्टेप जो है वो आगे निकल जाता है। लेकिन वेस्ट होता है कि अगर आपको इस तर्ज की बॉल पे अगर विकेट मिलता है तो वो आपकी तमाम तर एनर्जी ज़ाया हो जाती है। बल अच्छा, इस वक्त बल्ले का आवाज़ नॉइस जो है मिडल कर रहे हैं। बल काफ़ी सोच में इस वक्त मीर हमजा के नया बॉल, और फिलहाल कोई उस तरह से कोई मूवमेंट नहीं मिल रही, और यकीनी तौर पर जो बैटिंग है इस वक्त सिर्फ 2 विकेट चाहिए, 2 अच्छे बॉल, और सिंध की टीम को आज फिर बैटिंग करना होगी। वेल, प्रेडिक्टेबल। इससे पहला पिछला बॉल भी, ये भी, तो अली बिल्कुल आसानी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। दोनों बॉलें बेहतर खेली, ठीक खेली। अली ने कोई ड्राइव मारने की कोशिश नहीं कर रहे, विकेट पे स्टे कर रहे हैं, अली शान का साथ दे रहे हैं पूरा पूरा। मोहम्मद अली इनके एफर्ट से मुतमईन नज़र आ रहे हैं मुझे अजहर अली और बिलाल शफात। लेकिन इसी जाने नील जॉनसन जो हैं वो डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि नए बॉल से विकेट लेनी चाहिए, आनी चाहिए। सरप्राइज नहीं कर रहे, बाउंसर से सरप्राइज करना चाहिए। एक बार फिर वहीं पे बॉल स्विंग हुआ, बहुत आराम से मैनेज किया मोहम्मद अली ने इसे, और ओवर भी इसके साथ ख़त्म हुआ 276 पे 8। वेल, मौसम बेहतर है, आइडियल कंडीशंस हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ना सिर्फ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बल्कि गिरदो जवार में भी जो है वो क्रिकेट चल रही है, और फ्यूचर स्टार्स ये बेहतर है
कि वो अकेले ही शायद प्रैक्टिस करें। नहीं लेग साइड पे आसानी के साथ इसको भी खेला, और इस नए बॉल से इतनी ज्यादा परेशान कौन सूरत हाल नहीं है बैटर्स के लिए। इवन हमने फुलर बॉल्स भी देखे, थोड़ा जो बॉल पीछे पड़ा वो भी आसानी के साथ इस वक्त दोनों बैटर्स जो है वो खेल रहे हैं। जी पूरा दिन इन्होंने बॉलिंग की है, 276 रन्स भी हुए आज, और कल मेरे ख्याल 40 रन हुए थे। 230 रन में इन्होंने तकरीबन काफ़ी ओवर्स किए आज, और 2 सेशंस थे सिर्फ। थोड़ा सा अभी थोड़ी एनर्जी नीचे लग रही है। 20वां ओवर कर रहे हैं हमजा, और देखें अगर 1-2 ओवर्स और नहीं होता नए बॉल से, तो इब्रार का ऑप्शन इनके पास हमेशा मौजूद है, जो कि नए बॉल से भी अच्छा कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा सरप्राइजिंग एक एलिमेंट होगा इन बैट्समैन के लिए। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग। लॉन्ग ऑन का फील्डर गो के दायरे के अंदर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल कर रहा है शॉट के लिए, और मुसलसल बॉल अंदर की तरफ करे अमीर हमजा, और इसको बआसानी हमने पहले भी देखा कि ऑन साइड पे जो डीप स्क्वायर लेग का फील्डर है वहां पर बॉल मुसलसल जाता जा रहा है। ये थोड़ा तेज जरूर था, लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं रहा। अच्छी जगह से किया बॉल, तो शार्पली अंदर आया। बहुत आगे ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम मिल रहा है, और इस वक्त बॉल भी लग गया है अली शान को, उनकी फिंगर्स पे लगा है। बॉल जो कि सरप्राइजिंग डिलीवरी थी, सीधी ग्लव पे जाकर लगी, जिसकी वजह से का जो सीधा हाथ है उसकी उंगली पे जाकर ये बॉल लगा, और बल्ला भी एक हाथ से इनका स्लिप हुआ। देखिए यहाँ पर उन्हें एहसास हुआ कि बॉल जो है वो हाथ पे लगा, और उसके साथ उन्होंने छटकना शुरू किया। अबरार अहमद, खूब इज्जत कमाई इस सीजन में अबरार ने, अपनी स्किल से, अपनी बॉलिंग से। यकीनी तौर पर सिंध, इनके फैन, इनकी जो टीम, इनकी कोचिंग स्टाफ इनकी एफर्ट से खुश होंगे, और ये बेहतर है कि आपको किसी भी सीजन में एक अच्छा बैटर, एक अच्छा बॉलर मिल जाए, और उससे बढ़कर कि जब एक बड़ी सीरीज इनकी हो वर्सेस इंग्लैंड। अब तक 63 रन का हिस्सा है जो कि आमिर यामी ने क्विक फायर खेला, उसके अलावा 48, 44, 47 कासिम, अजहर अली और आबिद अली आगाज जरूर रहे, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए। मैजिक स्प्रे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट पानी का, और उसके बाद अली तैयार है। और हम पहले भी बात कर चुके कि इस सीज़न में उन्होंने अच्छा वक्त स्पेंड किया। गो के इनकी हाईएस्ट इनिंग 55 रन की फैसलाबाद के वेन्यू पे थी, लेकिन इस फॉर्म को कैरी करना होगा क्योंकि इस वक्त ज़रूरत भी है। 88 रन की लीड है, इसको मज़ीद कैपिटलाइज करें। और यही वो जगह है जहां पर मुसलसल बॉल जो है, ये नया बॉल अगर हम बात करें प्रिसाइज, तो वो जाता जा रहा है, पढ़ के अंदर आता है, और दोनों अली जो है इसको ऑन साइड पे खेल, और अब भी कुछ ना कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं। जब फिर बॉटम हैंड ऊपर लगा बल्ले के, उसी हाथ पे प्रेशर आया इनके।
ये एक अच्छा चांस है मीर हमज़ा के पास कि वो यहाँ पे विकेट हासिल करें. बहुत सॉलिड डिफेंस. इस नए बॉल का, इससे पहले भी बात कर रहे थे हम लोग के जो यूटिलाइजेशन है नए बॉल का वो प्रॉपर होना चाहिए. गो के ओवरऑल अगर हम देखें कल पूरे दिन में जो सिंध की टीम थी उनके अगेंस्ट जो बॉलर्स थे सेंट्रल पंजाब के, उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ को बरकरार रखा. वेदर सपोर्टिव था. यहाँ पर गो के अभी शाम है, इतनी ज़्यादा खुनकी नहीं है हवा में, लेकिन फिर भी हवा बेहतर चल रही है. फुलर डिलीवरीज. बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त अली. एक बार फिर अच्छा खेले, मेरे ख्याल सिंगल लेने में कोई हर्ज नहीं है. वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 277 पे 8. बोलिए यासिर, अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक जो कि टॉप रन गेटर है 534 रन, वो सेंट्रल पंजाब में. अजहर अली 517 रन के साथ इस मैच से पहले. तैयब ताहिर. तो ऐसी टीम को देखते हुए 277 रन 85 ओवर्स में, क्या समझते हैं बेहतर गोइंग रही? जो बहुत ही अच्छी लीड हो गई है इस वक्त सेंट्रल पंजाब की, और ये इनको बड़ा हेल्प करेगी इस मैच में. अच्छी बैटिंग. थोड़ी सी इंजरी है इनके हाथ में, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं अलीशान. जी वक्त गुजारना है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ऑल अबाउट टेम्परामेंट, स्टेमिना, पिच पे वक्त गुजारना. और उससे बढ़कर जब बॉल भी आपके लिए आसानी बल्ले पे आ रही है या बॉलर जो है वो प्रेडिक्टेबल हो चुके हों. इस दफा आगे पड़ा हुआ बॉल, दोनों बाजों को घुमाया, बॉल बहुत देर तक फिजा में रहा, उसके बाद फेंस से बाहर गिरा 6 रन के लिए. जबरदस्त शॉट, बिल्कुल टेनिस बॉल वाली शॉट मारी है इन्होंने. जब हम देखते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में जो शॉट खेलते हैं टांग रख के और बल्ले में लाए, और जबरदस्त शॉट. आगे का बॉल था, बड़ा छक्का हासिल किया अलीशान ने, स्टैंड्स में जाके गिरा. वेल अली अपनी बैटिंग की फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए, बाज़-औक़ात कहते हैं जख्मी शेर, क्योंकि अभी भी अपना हाथ झटक रहे हैं. स्ट्राइक रेट उनका बहुत बेहतर हो गया. दूसरी जानिब 43 बॉलों पे 1 रन, अच्छा साथ दे रहे हैं अली उनके. जाने दिया. अंपायर ने इसको वाइड बॉल करार दिया. पहुंच से दूर था, ऊंचा भी था. फवाद आलम स्ट्रेचिंग करते हुए. टेस्ट किया जा सकता है यहां पर इस वक्त, या सिर्फ एक जेंटल एक्सरसाइज है शाम की? अगेन ऑन साइड. लेकिन आपको दूसरी तरफ मोहम्मद अली को भी दाद देनी होगी, जिस अंदाज से वो
खड़े हैं 43 बॉलों पे। क्योंकि इस वक्त दर्द में है अली, क्योंकि बॉल जो है वो 2-3 दफ़ा उनके क्लब पे लगा और अभी भी शायद वो सिग्नल कर रहे हैं अपने फिजियो की तरफ ही, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं क्योंकि दर्द उनका शायद कम नहीं हो रहा। मोहम्मद अली इस वक्त एक रॉक बने हुए हैं, इस वक्त वॉल बने हुए हैं। 44 बॉलों पे सिर्फ 1 रन और इनका फॉरवर्ड डिफेंस बहुत अच्छा है, ये देखें, एक्सीलेंट। जी हाँ, और काफ़ी वक्त स्पेंड कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम अली का जो कारकर्दगी इस ट्रॉफी की देखें तो सबसे हाईएस्ट उनका 4 रन है, लेकिन जो इस वक्त वो खेल रहे हैं इनिंग टॉप क्लास, गो के रन नहीं आ रहे लेकिन वो साथ जरूर दे रहे हैं इस वक्त अपने पार्टनर अली का। ऑन मैरिट, हर बॉल जो मिडल होता है, जो बैटर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। और कमाल की बात, कोई परेशानी नहीं हो रही इनको बैटिंग में, कोई अपील नहीं हुई इनके अगेंस्ट। स्पिनर्स पे भी, फास्ट बॉलर पे भी, और नया बॉल अभी लिया है। ये फिजियो जो है बर्फ लेके जा रहे हैं, आइस है, थोड़ी सी आइसिंग करेंगे तो उनकी उंगलियों में जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा इससे। बॉल नीचे रहा लेकिन बल्ले को हटा दिया। इसके साथ डॉट बॉल, ओवर का हुआ इख्तिताम। 86 ओवर्स, सेंट्रल पंजाब 285 पे 8। इसके साथ साथ यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक।
That lead is now looking very, very handsome. 97 runs. Central Punjab, this partnership is, what, 40 runs already. Following that 87 runs for the 7th wicket. Amir Yamin 63, Azhar Ali 48. Important contributions from Abid Ali and Qasim Akram as well. Threefer for Umar and Abrar. Sindh would ideally look to wrap this up very, very quickly into the last hour of play. Now Abrar is back from his favorite pavilion end with the slightly newer ball. It is actually quite new. 6 overs old. Look to wrap up the tail. Nice blow. Good use of the feet. This is terrific there from Ali Shan. Oh, that's superb. That is some batting from this pair. Ali Shan is the main man. Look at that. Pitched up. Nice use of the feet. Just gave himself enough room to create that extension of the arm. Good boundary. Yeah, Amir Yamin probably showed his teammates how to tackle with Abrar, how to attack him and put him on that back foot. Valuable 35 runs, 39 rather for Ali Shan. Just 48 deliveries as well. That run rate, Ali, that at one stage was 2.6, is now 3.34 for the innings. And that's all happened after lunch. Yep, Amir Yamin is the man. 63 or 49. I said it earlier, I think if Central Punjab goes on to win this match, it will be his inning to make all the difference. What a valuable all-round contribution from him. 5 wickets in the first innings, and then that 63. Aggressive 63. Abrar with the new ball just has a slip and a short leg for the number 10. He had 2 deliveries to work him over, but not many catching options. Just targeting bold and leg befores, I guess. Not to be. I just love how Ali has handled Abrar. Just playing for that in-dipper, right way of doing it. It's 290 of 8. Well, this is our like 4th game here that we're witnessing. In fact, 5th for Sindh. And this is the first time that I've seen Abrar under pressure. That was because of that brutal hitting by Amir Yamin. He gave away nothing. Just went after him from the ball 1. And since then, we have seen Abrar under pressure. It's not the usual Abrar anymore. These are the guys who produced wonderful pitches at this venue, and we've seen some exciting cricket. Picking up from what Ali said, since first game and Abrar, 5th game rather, and we've seen Abrar in the 4th game. This is his 4th game. Seldom we've seen him under pressure. Seldom we've seen him being attacked the way lower order of Central Punjab has done. And also, Ali, if you look at it, this game has a canny similarities to the last 2 rounds. It's just that Sindh were batting second, and in the last one, Balochistan was batting first, and the game previous to that, KP was batting first. And the team that batted second almost got away with a lead of 100, 110, and then bowled the opposition out very cheaply. Yeah, it will be a test for Sindh in their second inning, how they approach this 102 run lead at the moment. It's not going to be an easy task without Saud Shakil, without Khurram Manzoor. They've got inexperience in their batting lineup. So yes, we can say that they're definitely under pressure. And also, I just don't know what happened at that lunch break. We had an hour break. Before that, we saw the ball was seaming and jagging back. That was like a 50 overall ball. Nothing has happened after
after that lunch break. Yeah, the credit has to be given to Amir Yamin and Ali Shan, both of them. At first, it was Amir Yamin who just came after lunch, came in with an intent of scoring runs, positive runs. He really attacked Abrar. And we know that once your premier bowler is attacked, it's never easy for the remaining bowlers also, because they rely heavily on Abrar, especially against the tail. The man in the middle is one of the most important men here. The man in the middle, you mean these two men? And in particular Ali Shan? Yeah, Ali. I don't mean Chishti or Shan or Muhammad Ali. Look, Ali in the com box too. Ali Shan, Muhammad Ali at the batting crease. And then Ali Yunus in the com box. You can't handle so many Alis, don't you? You just can't. I just showed you when we were playing cricket. You just couldn't get me out. Oh well, don't take me there, Ali. I've got to tell the story to our viewers. You just batted it out a dull draw. And you got bowled quite a few times. The runner, the boy got you. I thought you wouldn't even make a mention of that, but once you did, you allowed me to open the can of worms. Yeah, you bowled me and then you woke up. It was morning. That block from Muhammad Ali reminded me of your knock. Dead bad. But look at that. 49 deliveries for Muhammad Ali. Incredible. How frustrating that would be for the Sindh team. Yeah, the plan has worked. That's what he's been given the assigned role. Just be there with Ali Shan. Increase that lead to maximum. Not much venom, even with that new ball. It's been a long day for the Sindh bowlers now into the final session, the final hour. In fact, a toil of 88 overs, 291 for 8. Six bowlers used, 3 wickets each for Mohammad Umar and Abrar Ahmed. Mir Hamza getting 1, Zahid Mahmood also getting 1. Ghulam Mudassir, we haven't seen him much, just 12 overs for him. He bowled really well though, without a wicket. It's 291 for 8. Sindh looking at Abrar, the savior. What's this going on at the far end? Not this. Flying high. Pakistan Air Force plane. It's beautiful. Just love this. You ever sat in it? No? No. Commercial planes? Yes. How about you? Yeah, I've had an experience of these Cessnas. My brother, my middle brother Faisal, he's a pilot. So, yeah, I've had that experience. "71 overs bowled today. Once again, despite plenty of overs of spin, we might not have the full quota of 90 overs for the day. 24 overs for Abrar, 9 for Zahid. And this dugout, now pretty relaxed. At lunch, they must have felt under pressure because Sindh was still leading. There was a collapse just before lunch.
They've truly dominated this post-lunch session. Yeah, they're definitely in commanding position. But Sindh, on the other hand, they're not totally out of the game. It's just 103 runs. There's plenty of time left, two full days. And if they come tomorrow with an intent, well, Sindh is batting. If they can bat well, post some total around, get a lead of 200 for the final day, anything can happen. With Abrar and Zahid Mahmood, they'll still be in the game. Yeah, they would have to bat really well to do that, Ali. It means that they would have to score in excess of 300 to set a target of 200 for Central Punjab on that final day. Yeah, but first things first. Let's get them out. That's the first challenge for them because the lead is increasing with every delivery. 103 at the moment. So yes, first things first, get them out, get these couple of wickets, and then look to bat, and bat good, bat well. That big ripping leg break. Seen very few of them in the last hour or so. That zip there. Then two full again. Overbowled. 292 for 8. Frustrated Abrar. (42 of 58). How vital, how important is that inning from the wicketkeeper batter, Ali Shan? Shah Faisal, you remember that inning at State Bank ground when he single-handedly almost won the game? Couldn't quite get that over line, but he played a beautiful inning. Was it against Southern Punjab, was it? Sindh. We'll double check, but that incredible 100, when he came out to bat, his side was down and out. Batting at number 7 that day, he scored his own 100, and I think Muhammad Ali gave him company in that game for quite a long time as well. Yeah, he's doing the same here again. Good job, Muhammad Ali. What is happening here? What is happening? Guess what happened? Yasir Hamid broke his phone. That's the biggest news of the day. That is a terrible, terrible news coming from Yasir Hamid that he broke his phone while batting. We love Yasir Hamid. He's very, very good on the mic, even better off air, good company. We all know how good a player he was, but he still doesn't stop sharing his best moments with all of us, reminding us of how good he was. It's just amazing, this truck art, they call it. Full of colors, full of flowers, just beautiful every time you look at it. And it's good that they're using this art on these trolleys, who usually were very black and white, very boring sort of trolleys. They just colored it up, just looks beautiful. I have shoes of the same truck art, they look good. I remember Aruj Mumtaz also wears the same, the truck art shoes. I was going to say if they were like female version only, because I saw her shoes. Yeah. Incredibly beautiful looking. We did have the combox, the outdoor combox as well,
the pod with the truck heart. Just similar to that on your screens. I think this seems to be the plan now for me, Hamza. He's keeping those batters on the back foot. Just watch out for that in-dipper, the fuller one, the Yorker length. He's probably setting him up for that. But we know Ali Shan, he's more than capable as a batter. We all now know why they've been sticking with him. Because he's been struggling as a wicketkeeper, but the runs he gets always, it's crucial. Another one. Yeah, that's what he's dealing with. Fourth one in a row. Just watch out for that in-swinging Yorker now. This second session has really sucked the life out of this Sindh unit. They were really on top, just like that kite before lunch. But it looks like Central Punjab have taken the reins in that afternoon session, and now they're flying high. That short pitch stuff didn't yield much result, at least for now. 292 for 8. They're smiling. Why not? They lead by 104 runs. Not smiling. That's the difference between the two camps. You can tell who's in a commanding position just by the looking at their dugouts. As Abrar Ahmed will continue searching for his wicket. The magician needs to conjure up some magic. Ali in his sights, Muhammad Ali that is. He's just lost that perfect lines and lengths. Too full. Ali's a tall lad with some ability of batting. I mean, 53 deliveries. He stood firm. Watched it very nicely. Did he pick that? He did. Nicely covered the line. Look at that. Kept his eyes right till the end on the ball. Defended it nicely. What can Abrar do? He's got 3 fielders around him, Muhammad Ali. Is he a number 10? Gets his foot across, his bat out in front of his pads. No way through. Solid defending. .47 the partnership. It will hurt Sindh. It will definitely hurt Sindh. Look at that forward defense, the perfect one again. 159 for 6 Central Punjab were, and they were still behind by 30 runs, and now they lead by 104, only 8 down. It's time to bring Ghulam Mudassir. 292 for 8. That last over by Abrar to Muhammad Ali. Muhammad Ali shaped as if he was a top order batter. His footwork, he seemed like he was picking Abrar, and that forward defensive stroke would have
made some of the top order batters proud, the way he was coping with it. Sindh desperately needs some inspiration. Hamza, he needs to lead from the front. He needs to wrap this innings up. Another short pitch delivery. This is very frustrating times also for the openers of Sindh. Yeah, that's the 7th consecutive short one that Mir Hamza has bowled to Ali Shan, and he's dealt with some confidence. Good It's technique. good work. Yeah, good technique as well. Ali Shan, he just drops his hands. His bat is not being left hanging over the top of his head. There you go. Once again, you see that bat is way down. Oh my God, he broke his mobile, Yasir Hamid. He's so sad about it. Somebody get him a new iPhone. That's what he's looking for. Very sorry, Yasir Hamid. We'll all get the money from the stadium, everyone in the stadium, and get you a new phone. You gonna chip in with the pool money for him? Definitely, definitely. Play and a miss. The setup was there. Quite a few short pitch deliveries to just push him back in the crease. And that fuller length and angle away. Almost got Ali Shan. Yeah, touch far. Mir Hamza would like to bowl a little into the wickets with the angle. Again, beautiful view. चल आजा Hamza is trying everything. Nothing seems to be working. And Ali, your friends are back. It's that time of the day. That's not on the outfield today. No, that's not my friend. I'm scared of this one. There's the other one, those innocent ones. There are a couple of them. I miss them. There are a couple of days I haven't seen them. Have they moved? Have they migrated? Because it's getting cooler here. Probably they've migrated to warmer areas. Mornings and evenings are pretty cold here at Rawalpindi. You know it. When you go out for your ice cream in the evening, you stop wearing your shorts. Frustration building for Sindh. They just cannot seem to knock over these tail-enders. Ali Shan would consider him as a proper bat, yes. But number 10 and 11, 59 deliveries. Muhammad Ali has frustrated these Sindh bowlers. Short cover catching in place. Play and a miss. Muhammad Ali pretended that he left the ball, but he did have a poke at it. 293 for 8. Yeah, just a floater outside the off stump. It was a good idea from Mir Hamza. It's just the way Ali is playing. Luck is on his side. 293 for 8.
ज़्यादा नहीं करो, वो छोड़ देगा। सामने तो मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आया, क्या बोल Has it gone all the way? Yes, it has. That sounded really sweet from Ali Shan's bat. Took Abrar downtown and out of the park. That is superb. That is clean hitting. Now, Ali Shan showing that he can use the long handle. Look at that. Pitched up, down the track. Launched it all the way. Superb shot. And that is 50 for Ali Shan. Outstanding knock from the little wicket-keeper. He's had his troubles behind the stumps, but this knock is really well appreciated by his teammates because it is a very, very crucial knock. Just 72 deliveries. Well played. .300 has been brought up as well. Valuable points being collected along the way. But that is the edge. That is the end of a very, very frustrating partnership for Sindh. And look at that muted celebrations from Abrar. He's not even celebrating. Ali is gone. Oh yes, he didn't like it. He didn't like how he was treated for the last couple of hours. But this one, give it some air. Good setup and a good catch. Nobody celebrated. What did you do, Muhammad Ali? Scored 1 of 62. That's the reason. It's 300 for 9. बिलाखिर इब्रार अहमद ने कामयाबी हासिल की. चार विकेट्स हासिल कर चुके हैं इब्रार अहमद. अहमद दानियाल है नए बैट्समैन. लास्ट मैन सेंट्रल पंजाब के लिए. अली शान मैन ऑफ द मोमेंट. पचास कर लिया इन्होंने 72 बॉलों पे. काफ़ी देर से हम देख रहे हैं मीर हमजा जो है बाउंसर्स पे बाउंसर्स किए जा रहे हैं और अली शान
मुसलसल डक कर रहे हैं उसको। फाइनली अच्छी बैटिंग शुरू कर ली है अली शान ने। 55 इनका हाईएस्ट स्कोर है और ये इस इनिंग्स में इसको क्रॉस कर सकते हैं। कंटिन्यूटी 300 का हिंसा इस वक्त टच कर चुकी है। बहुत खूबसूरत अंदाज में अली ने जो बैटिंग की, अपने 50 रन मुकम्मल किए। वक्त उनके पास ऐसा था कि उन्हें एक तरफ एंड भी संभालना था, रन्स भी करने थे, तो दोनों सूरतों में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बैट किया। तमाम अतराफ में स्ट्रोक्स लगाए, जिसमें अटैकिंग क्रिकेट भी खेली, दिफाई अंदाज भी अपनाया। वेल प्लेड। और उनको बॉलें भी काफ़ी लगी। जी अपना पॉइंट जो है प्रूव करते हुए, और इस बार स्लिप के ऊपर से होता हुआ बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। लॉट ऑफ कॉमेडी एरर्स हो रहे हैं इस वक्त पिंडी स्टेडियम में। आउटसाइड एज और चेस किया उसे, टेरिबरेटली स्लिप के ऊपर से खेले 4 रन। वेल ये एक्सरसाइज अच्छी है जिम में कि आप रस्से के साथ एक्सरसाइज करें, लेकिन यहाँ पर लेट हो गए रिएक्ट करने में, बैंड प्रॉपर्ली नहीं कर पाए, 4 रन मिले। वेल इसका कोशिश यही है अली की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें, चार्ज करें। इस दफ़ा फिर ऑन साइड पे खेलने गए। सरफराज ने भी इसी तरफ देखा कि डीप में कोई फील्डर मौजूद है या नहीं। जी हाँ, बड़ा ट्रिकी टाइम होता है ये ओपनर्स के लिए, जो कि दूसरे भारी करनी होती है जिन्होंने। और यासिर उस वक्त की जिस वक्त आप पहली इनिंग में कुछ बड़ा ना कर पाए हो। हाँ जी, लेकिन इस तरह के टाइम में ज़रूर जाना चाहिए और बड़े उससे जाना चाहिए, दिलेरी से जाना चाहिए, हौसले से जाना चाहिए अंदर, क्योंकि ये जो आपकी इनिंग है अगली इनिंग को रिफ़ाइन कर रही होती है। यहाँ पे जो प्लेयर छुपते हैं या डरते हैं तो वो आउट भी हो जाते हैं, और जो ठीक है बैटिंग आएगी अपना खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, सी ऑफ करेंगे नए बॉल को, इस एटीट्यूड के साथ अंदर जाते हैं वो प्लेयर, फिर आगे आगे अगले दिन बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। जी हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे थे साइम अयूब, उमर बिन यूसुफ की, कि जो कोच हैं गुलाम अली, उनका भी मैंने देखा कि क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी में एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। इस दफ़ा एक अजीब सा स्ट्रोक लगाया, शायद खेलने कुछ और गए यासिर और एंड रिजल्ट कुछ और हुआ। उन्होंने मैनेज किया आखिर में और इसे 1 रन के लिए खेला, प्लेसमेंट कह सकते हैं इसे। उमर बिन यूसुफ को भी परेशान कर दिया था उन्होंने पहले, वो कहते हैं ना झाका दिया पुल मारने का। 305 पे 9। वेल आमिर ने अच्छी बॉलिंग करवाई और इस वक्त भी बैटिंग की है इन्होंने की है। भी 63 रन किए थे, और अब बॉलिंग पहले ही मैच पहली इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इजाज, 5 आउट किए फिर 63 रन किए। मेरे ख्याल से इनका वन ऑफ द बेस्ट मैच जा रहा है। 1 रन लेने मुनासिब नहीं समझा अली शान ने। बहुत अच्छी बैटिंग, आगे आके डिफेंस किया।
इस वक्त तो वैसे 4 होंगे, आउट ना ही हो तो अच्छा है इस वक्त क्योंकि हमारे ओपनर्स ने अंदर जाना है, क्योंकि बड़ा ट्रिकी टाइम होता है। 117 रन की लीड हो गई है सेंट्रल पंजाब की। अली शान ने बहुत ही अच्छा सहारा दिया अपनी टीम को, डाउन द ऑर्डर आके 55 रन किए अलॉन्ग विद कासिम अकरम और आमिर यामीन, जिन्होंने टोन सेट की इस बैटिंग लाइनअप में। इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है पंजाब की टीम, सेंट्रल पंजाब। सेंसेबल 5वां बॉल था ये इस ओवर का, और यकीनी तौर पर इस वक्त अली शान इस चक्कर में होंगे कि वो स्ट्राइक को रोटेट करें, लेकिन अच्छा बॉल, डॉट बॉल। 95 ओवर गए, सेंट्रल पंजाब 305 पे 9। आमिर इस वक्त फेंस के बाहर बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए, बहुत बॉल जो है वो इनका स्विंग हुआ, हिला और वार्म अप कर रहे हैं, और ये बेहतर है कि जिस वक्त आपके पास लग्जरी हो टाइम की। और अब देखना होगा कि किस अंदाज से वो टेक ऑफ करेंगे। यहाँ सर ये C-130 एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स। C-130 वो 4 इंजन वाला होता है, ये 2 इंजन नजर आ रहे हैं मुझे, उसमें 4 इंजन होते हैं C-130 में। बॉल बाहर निकलना शुरू हो गया है, लगता है बॉल थोड़ा सा पुराना हो रहा है। मीर हमजा मीरू, निकनेम है इनका मीरू, इनको क्रिकेट फ्रेटर्निटी में मीरू कहते हैं अपनी टीम के वाले सारे टीममेट्स। अहमद दानियाल इस बार सॉलिड लग रहे हैं। मोहम्मद अली और अब्द अहमद दानियाल बड़ा अच्छा साथ दे रहे हैं अली शान का। उमर बिन यूसुफ जो कि नेक्स्ट मैन इन होंगे, लेकिन सिंध की तरफ से इनिंग्स जब चेंज हो गई है। जी हाँ, लंच के बाद हमने देखा है कि इनकी जो स्माइल्स हैं वो वापस आ गई हैं। अच्छा बॉल चेक किया इस बार, बैक फुट पे अच्छा छोड़ा अहमद ने। हार्ड लेंथ पे बॉल, पीछे की बॉल। और साइम अयूब बीट हुए इस बार अहमद दानियाल। अनलकी मीर हमजा, एज नहीं हुआ। एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेल एंडर से ऐसी शॉट, नथिंग शॉट कहते हैं इसे। और ऐसा देखा है कि बाज़ औक़ात मैक्सिमम टाइम्स जो टेल एंडर्स होते हैं वो इस तरह के जो करीबी बॉल होते हैं उससे बच जाते हैं। इस दफा बॉल है हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, इधर से उधर पलटे और अबरार ने अच्छा कैच थामा, बहुत जबरदस्त। और इसके साथ सेंट्रल पंजाब की टीम यहां पर ऑल आउट हुई। शान 55 पे।
एक्सीलेंट, लेकिन ओवरऑल 117 रन की लीड बनाने में कामयाब हुई सेंट्रल पंजाब की टीम। यकीनी तौर पर सिंध के जो फील्डर्स हैं वो काफ़ी खुश होंगे इस एफर्ट से, क्योंकि ये गेम बिल्कुल इस वक्त बैलेंस है। ये आखिरी विकेट ऑन साइड पे खेलने गए, बॉल हवा में खड़ा हो गया, काफ़ी देर तक फिजा में रहा। अबरार ने अच्छा ग्राउंड कवर किया, बॉल के नीचे आए और आसानी के साथ कैच को फिनिश किया। वेल डन। वेल, इसके साथ सेंट्रल पंजाब की इनिंग का भी हुआ खात्मा, जिसमें उन्होंने 305 रन बनाए कुल 95.5 ओवर्स में। जो लीड है वो रही 117 की। मीर हमजा ने अपना दूसरा शिकार यहां पर किया 69 रन के एवज। क्योंकि इस वक्त दिन के आखिरी लम्हात हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त आधे से ज़्यादा ग्राउंड शेड में है। प्लेयर्स ऑफ करते हुए आहिस्ता आहिस्ता, और ये अंदाज इस सेंट्रल पंजाब की टीम का पहली इनिंग शुरुआत आबिद अली की बेहतर रही, लेकिन कैपिटलाइज ना कर पाए। दूसरा बड़ा स्कोर 48, जो कि अजहर अली का था। अच्छी फॉर्म में थे लेकिन लेग बिफोर हुए। उसके बाद 47 रन की इनिंग खेली कासिम अकरम ने। 63 और 55 बिल तरतीब आमिर, यामीन और अली शान ने बनाए। तो कुल मजमुआ हुआ 305, 17 एक्स्ट्रास थे जिसमें बॉलर्स ने अर्लियर ऑन एंजॉय किया। 2 विकेट लिए मीर हमजा ने, 3 विकेट हासिल किए मोहम्मद उमर ने। 19 ओवर्स में 63 रन के एवज, 4 विकेट 82 रन के एवज। अबरार अहमद एक बार फिर उनका जो लंबा स्पेल था 28 ओवर्स का, 1 विकेट हासिल किया 29 रन के एवज जाहिद महमूद ने। या आज की गिरने वाली विकेट अब्दुल्ला सबसे पहले 17 रन था जब वो वापस हुए, लेग बिफोर हुए। आबिद अली थोड़ा सा फ्रंट फुट पे गए लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट करा दिया। 7 ऑन साइड पे खेलने के आते ही वो डिपार्ट हुए। उसके बाद उमर ने अच्छा लेग बिफोर किया अजहर अली को, बॉल नीचे रहा और चलता किया एक इनफॉर्म बैटर को। तैयब ताहिर 5वें आउट होने वाले खिलाड़ी। अबरार ने आउट किया फहीम अशरफ को, और अबरार की उसके बाद आमिर यामीन आउट हुए। उमर आए, उन्होंने अच्छा यॉक किया लेग बिफोर कासिम अकरम। उसके बाद अली आउट होने वाले 9वें खिलाड़ी थे, और ये आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर जो कि ऑन साइड पे दानियाल खेलने गए और बॉल हवा में रहा और अबरार ने कैच थाम कर इनिंग का खात्मा किया। अब तक की ये सूरत हाल है। 188 रन बनाए सिंध ने डगमगाते हुए, जिसमें 5 विकेट थे आमिर यामीन के। और उसके बाद सेंट्रल पंजाब 305, जिसमें 55 रन अली शान और आमिर यामीन 63। 4 विकेट लिए अबरार अहमद ने सिंध की तरफ से, मोहम्मद उमर ने 3, और लीड है इस वक्त सेंट्रल पंजाब की 117 रन। वेल, हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, कुछ ही देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
एक बार फिर खुशामदीद, जहां पर दिन के साए लंबे हो चुके, शेड्स इस वक्त तकरीबन आधे से ज़्यादा ग्राउंड पे है। सिंध वर्सेस सेंट्रल पंजाब, जो कि सिंध की जो टीम थी पहले इनिंग में, उसके बाद फिर सेंट्रल पंजाब ने बारी की। कुछ ये रही सूरत हाल। 305 रन का कुल मजमूआ है। 55 अलीशान टॉप स्कोरर, सेकंड टॉप स्कोरर। 63 आमिर यामीन, 48 रन थे अजहर अली के, 44 थे आबिद अली के। Wickets for Abrar Ahmed. 3 for Mohammad Umar, 2 for Mir Hamza, 1 for Zahid Mahmood. That sums up the bowling effort from Sindh side. They've been expensive just a little. That's why they've given away 305 runs on testing conditions. This was the first one, the biggest of them all, Abdullah. Then it was this morning, Abid Ali, ZBW of Abrar. Then Saad came and gone. Second delivery that he faced. Mohammad Umar bowled beautifully. He really set Azhar Ali up for this in-swinger. Got this wicket. And then Tayyib Tahir, the man in form, lost his wicket. Got behind. Fahim Ashraf looked good. Undone by a beautiful delivery. That was another excellent setup. Amir Yamin was the man of the moment. He played really good inning until it was bowled. And this one, Qasim Akram, an absolute feature for delivery. The Yorker, beaten all ends up. This one, Mohammad Ali, good catch by Fawad Alam. The last one to go. Just wanted to score some runs, Daniel. Just chipped one straight to Abrar Ahmed. That summed up Sindh's inning. Game is set up very, very nicely. 188 plays, 305, 117. A very, very handy lead for Central Punjab, and a very tricky session for Sindh's openers. Probably we'll get 2 or 3 overs. Light is fading quick. Not a lot that these batters can achieve, but they have everything to lose. Saim Ayub, the eye-catching Saim Ayub. That average of 42, not bad for his first stint at the first class cricket. 95 as his best was here. Umar bin Yusuf, another very talented youngster. 2045 runs, that average of 39, this will increase, this will go up more he plays. And they're up against the swinging Amir Yamin. Swing straight away. Testing times, the last this couple of overs maybe. That's the opener's life for you. This is the most difficult part of being an opener. Like I said, probably only 12 deliveries, now 11 to go. You cannot achieve much, but you can lose everything. And that it puts another ton of pressure on these openers. 3 slips waiting for their edge. It's an in-swinger, but the line not quite right, way outside the off stump. What a day Amir Yamin is having. In fact, what a match he is having. Got a fifer in the first inning, scored those handy runs. That record, 168 wickets, and with those wickets, the type of batting he did, I think he's a fantastic all-round cricketer. He is indeed. And he may have something to say before this day is drawn to close. Yeah, that one moved away. This is what he was setting him up for after 2 in-swingers. Yeah, that was coming. Just 2 deliveries, 2 in-swingers, and then he threw the out-swinger. These are the Kookaburra balls. Different lifespan of these balls. Some are pretty new. Still the lacquer on them. And the one on the right, pretty old and scuffed up. Probably that's the one that Sindh used. Another big in-swinger. I mean, he's just fantastic with that new ball.
His ability to swing the ball both ways is just amazing. It's not an easy time to bat, I tell you, as an opener. When you're fielded all day long, your legs are not quite moving swiftly. It's tough. Very tough. He's looking to play it late. Could Amir try slightly fuller length? Not allow him that time to play late and just grope at it. He's got 2 more deliveries to come. Solid. Well watched. Very well watched. Yeah, remember the first inning when he lost his wicket? He just pushed at one. This one. Look at this. Just pushed at where he should have really blocked it with dead bat. And he went after him. That's not a good idea when Amir Yamin is swinging the ball into you. Yeah, that first day pitch, plenty of green grass. You've seen in that replay, the shade of the color of the pitch has already changed. Tempting. It's a maiden to start off the proceedings. None for none. This man is very impressive. Muhammad Ali. Watch out for that big in-swinger, Saim Ayub. He was looking for that full Yorker in the first innings. It's good that he's been given the new ball. He didn't use it in the first inning. I think it's better used as with the new ball rather than the older one. Yeah, that's what we saw when he came here in round 2. He wasn't given the new ball with the first new ball, but he was very impressive with the second new ball, and never a bad idea. He gets that natural shape away from the right-handers and into the left-hander. Now, look at the field. 3 slips, 2 gullies, a short leg in. Central Punjab realizing they can't lose much here on the attack. 3 slips, 2 gullies. Umair was looking for that single. I think Saim thinking in his head, my work is done for the day, mate. It's up to you. 4 deliveries. Length delivery. This length is easily negotiated by the batter. The fuller ones are the one causing problems. There it is. That's your bowling. That is where you should be looking to bowl most of your deliveries. The umpires are coming together. It has got gloomier. The ground is covered in shade. It's pretty much the similar time that we came off yesterday. Remember, with winter approaching, the daylight is decreasing every day by a minute or 2 at either end, at sunrise and sunset, and that is what these two are thinking about right now. Smile on his face, and we are coming off. These are the 2 happiest people on the ground. Absolutely. I think they'll be happy because they don't have to play any more deliveries from Ali. Overall, a very good day for Central Punjab. The lead by 117 runs in total. And definitely this session is going to Ali Shan, Amir Yamin. Azhar Ali also played well. Qasim Akram played well. Fahim Ashraf also did his part. It's just been a fantastic day, and they definitely are in a commanding position in this game. Indeed, a very, very good second session of the day for Central Punjab, and they're in the driver's seat. Sindh would be happy that they didn't suffer any losses for that brief period
we've had a fantastic day of cricket yet again here at the Pindi Cricket Stadium. Just the 1 run, 9 deliveries Sindh were in before the play was stopped for bad light. The umpires are still in the middle, but officially this is the close of play here. Amir Yamin would be expected to do a job with the new ball. The way the wicket was playing, a quicker man like Ali might have to say something about the contest, but the session, like I said, belongs to Central Punjab. They started off in a precarious position, 6 wickets down, and they were still behind by 30 runs, 19 rather at the beginning of the session. And look at that, Amir Yamin took Abrar on, even to the pace of Hamza. Qasim Akram played his part. This was a fantastic partnership. Really frustrated the Sindh side. All the ball was coming onto the bat nicely. Zahid finally got a ball, but Amir Yamin was in no mood to let off. Very impressive. Umar was carted away as well. Amir Yamin's 50 and the celebration cheered up his teammates, and he continued for a while after his 50. And Zahid got his reward. Qasim Akram, unfortunately, couldn't get to his 50. That was a good decision, I thought. Imran Javed. Umar's wicket came, but then that 9th wicket partnership once again really frustrated. Since Ali Shan's knock took a leaf out of Amir Yamin's book. Had good support from Muhammad Ali, who frustrated the Sindh bowlers with resolute defense. Run scoring was down to Ali Shan, who made up his 50. Muhammad Ali finally was dismissed by Abrar. No celebrations by that time because Sindh were frustrated. Streaky boundary here and there, and then Danial was lost his wicket to a good catch from Abrar. He was circling underneath the ball. Sindh needed that. And finally, they came off. Tired bodies, tired legs. Sindh trailed by 116 runs. And we look forward to another exciting day tomorrow. Sindh's backs to the wall. They'll come out fighting. They have to do that because they've got a brittle batting lineup in this game, weakened by the absence of Khurram Manzoor and Saud Shakil. Like I said, we've had a terrific day once again here at the Pindi Cricket Stadium. I hope you enjoyed our broadcast. We look forward to your company tomorrow for day 3. Until then, it's good night from Pindi Stadium.